एंटीबायोटिक से? आपका कौन सा एंटीवायरल डायबिटीज में काम करता है? आपका कौन सा ऐसा डिजीज आप जो आज ठीक कर रहे हो या आप कंट्रोल कर रहे हो, ये दो बोलते हो, लेकिन क्योर क्या कर रहे हो? और घर घर में ये रोग है। प्रॉब्लम इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। एलएसडी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। कोई पानी खराब है और कुछ कभी कभी कॉलेरा हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गया, वो तो कभी कभी होता है। कभी कभी आपका एंटीबायोटिक का रोल जरूर है, ऐसा कुछ नहीं कि हम सबको कुछ आदर करते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज जो आज समस्या है उसको आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हो और ये बढ़ रहे हैं। कौन सा घर बाकी है जिसमें डायबिटीज नहीं है? कौन सी जगह ऐसी है जहां थायराइड नहीं है, पीसीओएस पीसीओडी नहीं है? ये बड़ी विडंबना है और उसको पूरा कंट्रोल कर लिया है एलोपैथ्स ने, वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम ने, जिसको ये लोग मॉडर्न कहते हैं। कभी कभी हमारे बच्चे भी मॉडर्न बोलते हैं उसके लिए। ये मॉडर्न साइंस है। पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवनीतम मध्यम संतम परीक्षित अन्यतरम भजते मूढ़ पर पीड़ भजंती। पुराना है वो साधु है, सही है, अच्छा है, ऐसा नहीं मानना। कौन कहता है? हमारा पुराण कहता है कि पुराना है इसलिए आप मान लीजिए, ऐसा मत मानो। न चापि काव्यम नवनीतम मध्यम, नया है इसलिए वो नया मक्खन है, ऐसा भी मत मानो। अपग्रेडेड है, रिसर्च हुआ है, अमेरिका से आया है इसलिए वो सही है, ऐसा भी मत मानो। तो फिर क्या? संतम परीक्षित, होशियार आदमी, वाइज मैन, डायो मानस पहले टेस्ट करता है, अन्यतर उसके बाद उसको फॉलो करता है। मूड है वो पर पीड़ भजंती। मूर्ख जो आदमी है वो सीधा फॉलो करता है अमेरिका को, वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम को। ये बड़ी समस्या है। इसलिए तो ये है, अगर ये अच्छा होता, सही होता, तो नित्य नूतन चीर सनातन। वी आर द मॉडर्न पीपल। आयुर्वेद इज अ मॉडर्न साइंस। नित्य नूतन और चीर सनातन। सिद्धांत नहीं बदलेंगे। हरितकी विरेचन काराणाम श्रेष्ठम 5 लाख साल पहले भी वही था। ब्रह्मा स्मृत्वाद आयुर्वेद, हजारों लाखों करोड़ों पता भी नहीं उसके इस युग से पहले भी था, 5000 साल पहले भी था, 5007 साल के बाद भी हरितकी विरेचन काराणाम श्रेष्ठम। टेट्रासाइक्लिन ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगा, 10 साल में कहते हैं कि नहीं अब तो वो नहीं काम कर रहा है। फिर 10 साल के बाद कहता है वो रेजिस्ट नहीं, अभी तो उससे एडवर्स इफेक्ट हो रही है। तो दिस इज नॉट साइंस। अब एक बार जो बोलते हो उसमें आपको पता नहीं अब क्या हो रहा है, उसको वो रिसर्च कहते हैं, उसको वो डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट की व्याख्या शायद यहाँ से कुछ मेरे मुंह से जो निकलेगी मेरी नहीं है। नित्य नूतन चीर सनातन, और इसमें ये फिट नहीं बैठता। नेक्स्ट। और जितने भी 100 अगर केस डेथ के हैं तो उसमें डेथ के परसेंटेज आप देख लीजिए, रोड एक्सीडेंट को छोड़ते हुए बाकी सब एलएसडीज है। कोई डायरिया से कोई आदमी मरता है, कोई डिसेंट्री को आपने ठीक कर दिया, आपने कोई बड़ा काम कर दिया। तो आप हार्ट डिजीज को ठीक करो, हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हो, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वी अप्रिशिएट इट, वी रिस्पेक्ट इट। लेकिन आप हार्ट के डिजीज को ठीक कर सकते हो, आप नी रिप्लेसमेंट कर सकते हो, लेकिन नी रिपेयर कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आपके हाथ में वो ताकत नहीं है। और वो बड़ी समस्या जिसको एड्रेस करने के लिए हम शायद आज गैदर हुए, उसमें कैसे गाय माता मदद करेगी, शायद मैं वो एस्टैब्लिश करने की आपके सामने कोशिश करने वाला हूं। नेक्स्ट। देखो समस्या कैसी है, इसमें मां कौन है, बेटी कौन है, बताओ। ये आपका बेंगलोर का सीन नहीं है, थोड़ा बेंगलोर का है, थोड़ा मुंबई का, कलकत्ता का है, पता ही नहीं चलता। आप कोशिश मत करो। एक ही वेयर, एक ही अंडरवेयर, एक्स्ट्रा लार्ज साइज ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, कभी मां पहनेगी कभी बेटी पहनेगी। शॉपिंग करने के लिए भी नहीं जा रहे अभी, पहले शॉपिंग में भी थोड़ी मूवमेंट होती थी, मजा है। ये जन्म से है, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट। तो हमारे बच्चे लोग भी ऐसा कुछ नहीं, सब जगह ये हो रहा है। ये सीन तो अमेरिका का है, लेकिन जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, जिसको हम डेवलपमेंट मान रहे हैं, जिसको हम माइलस्टोन मान रहे हैं, जिसको विकास बोल रहे हैं, वो ये है। नेक्स्ट। तो प्रॉब्लम क्या है?
जापान गवर्नमेंट ने अभी दिसंबर 23 को एक ईयर घोषित किया कि अब के बार यानी कि 24 अभी शुरू हो गया, उन्होंने तय किया है कि पूरे पब्लिक डोमेन जो है, गवर्नमेंट डोमेन है, वहां से माइक्रोवेव हटा लेंगे। 3 जो एम है, माइक्रोवेव, मॉनिटर, मोबाइल, उन्होंने जो पृथ्वी के ऊपर आतंक बचा रखा है, तो जापान गवर्नमेंट ने तय किया कि अब हम माइक्रोवेव एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, बस डोमेन है वहां से हम हटा लेंगे। आप पर्सनल यूज करना तो करो, अच्छा नहीं है माइक्रोवेव, रिसर्च कहता है, लेकिन आप मत करो, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन हम करने के लिए बाध्य या प्रेरित नहीं करेंगे, ऐसा जापान गवर्नमेंट ने तय किया है। तो क्यों किया होगा? कितना पॉल्यूशन है, लाइफस्टाइल की समस्या, ये वेस्टर्न समस्या है, ये पृथ्वी की आधे हिस्से की समस्या पूरी पृथ्वी को घेर रही है। नेक्स्ट, आप अभी 3-4 क्लिक कर दीजिए। ओके, आप देख रहे हैं जिसको वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम या वेस्टर्न बायोटेक्नोलॉजी कहती है कि बीटी फूड, जीएम फूड, आप डरते तो है लेकिन फिर भी होता है आपके घर में, आपके फ्रिज में, आपके किचन के स्टोर में 70% ये आइटम है। आप होटल में जाते हैं, स्टार्टर के लिए, सूप के लिए ऑर्डर करते हैं स्वीट कॉर्न सूप। कॉर्न कभी स्वीट हो ही नहीं सकता, गोल्डन येलो हो ही नहीं सकता, वो जीएम फूड है। कॉर्न है, मक्का है, वो इतना मीठा नहीं होता और इतना गोल्डन येलो पीला नहीं होता। जो आपने बनाया है, जो आपने हमको दिया है, जो आपने हमारे ऊपर दबाव डाल के दे रखा है, हमारा किसान भी उससे त्रस्त है। ये ग्राम विकास के लोगों को मालूम होगा कितनी समस्या है। तो ऐसे आपके घर में ऑरेंज कैप्सिकम होता ही हरा है, लेकिन उसको ऑरेंज कर दिया, रेड कर दिया, आपने उसमें क्या गिमिक्स कर दिया, और लोग उसको ज्यादा पैसा देके महिलाएं लाती है कि मेरे पास तो ये है, मैं मॉडर्न हूं, लेकिन आपके बॉडी में वो क्या करता है जाके? जीएम फूड के बारे में आपके पास कितना हिस्ट्री है कि वो डीएनए में क्या डिस्ट्रक्शन करता है, वो आपको अभी नहीं मालूम है। नेक्स्ट, पूरा बेंगलोर, यहाँ तो मैं आया तो अच्छा, बेंगलोर में आता रहता हूँ, इतना बड़े कॉरपोरेट्स का दबाव नहीं है, लेकिन बेंगलोर में, मुंबई में, बड़े बड़े सिटीज में आज यंगस्टर्स, मैं कल गुजराती समाज के कार्यक्रम में गया था, हमारे गुजराती लोग तो सुपारी आप पकाते हैं लेकिन बिजनेस हमारे गुजराती करते हैं, तो मैं उनके घर गया था, एलिजाबेथ को मालूम है, तो मैं गया था, उसने बोला अब हमारे बच्चे भी सुपारी का बिजनेस, बहुत बड़ा मिलियनर है, लेकिन कहता बच्चा वो पसंद नहीं करता, वो लोग अभी तो बेंगलोर है और एक तो यूएस है, एक बेटी उधर है, तो सबको ये वेस्टर्न जो इंडस्ट्री है, खास करके जो ये आईटी इंडस्ट्रीज, तो मल्टीनेशनल कंपनी में ज्यादा पैकेज मिलता है, ज्यादा काम मिलता है, सामान के सब भाग रहे हैं। लेकिन आपके पास आने वाला जो मरीज है, पेशेंट है, यंग अभी आ रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, हमें मालूम ही नहीं बैठना कैसे, वो सिखाया नहीं जाता है। पैसा मिलता है लेकिन जन्म से या बचपन से या एटलीस्ट यंग एज में जब हम एकदम हेल्दी होने चाहिए, उस समय ये हमारी, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, लेकिन कैसे बैठना, और इतने गैजेट्स में इतना घंटा बैठना, तो ये तो हमारा, हम जानते हैं ये रोगों के कारण है, वात व्याधि के कारण है। माधव निदान ने जो बताया वो वही है, तो आप कितना ये करोगे? पैसा कमाते कमाते आपको बैठना भी ना आए, वो तो कैसे चल सकता है? और ऐसे बैठना जिससे ही आपका ये व्याधि बढ़ेगा। नेक्स्ट, सिर्फ एक मोबाइल देखने का 15 पाउंड वजन आता है, फिर जैसे झुक के व्हाट्सएप देखते हैं 60 पाउंड वजन आता है। C6 C7 के ऊपर कितना प्रेशर आता है आपको भी नहीं मालूम, ये नोटिंग की गई है, ये पता चला गया है। आज के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में ये सब धीरे धीरे आ गया है, और ये यंग डिजीज भी यंग है और यंग को होता है, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है लोगों को, हमको पता होना चाहिए, हम इसको एड्रेस करने वाले हैं। आयुर्वेद और गाय हमको हेल्प करने वाली है। इतनी भीषण समस्या मैंने आपके सामने इस मेरी प्रस्तावना के रूप में रखी, और भी कुछ मन की बातें भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। नेक्स्ट, ये सेलफोन के जो हैजार्ड्स मैंने बताया। नेक्स्ट, कभी कभी हमें मालूम नहीं, हम तो यंग बच्चे आप लोग हो, कि स्ट्रेस का 2 प्रकार होता है,
कुछ तो स्ट्रेस चाहिए भी। डिस्ट्रेस और स्ट्रेस में पता होना चाहिए, वो नहीं है, लोगों को तो पता ही नहीं है। आप तो चलो मेडिकल स्टूडेंट्स है, कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, लेकिन इसके बारे में लोगों को ओरिएंटेशन नहीं है। तो पेन क्या है, टेंशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं और उसके ऊपर बहुत दबाव आ रहा है। मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेस कब होता है कि जब योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, कि अभी बच्चा होगा, फिर उसके लिए पलना चाहिए, फिर डायपर लेना पड़ेगा, फिर वो मिल्क का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो एक स्ट्रेस रहता है। घर में एक बच्चा आता है तो ठीक है कि चलो ये छोटा सा आपको स्ट्रेस है, ये अच्छे मौके में भी स्ट्रेस आता है। नेक्स्ट, लेकिन टेंशन किसको कहते हैं? ये साला इस स्ट्रेस से अलग है, फिर पता ही नहीं है किसको टेंशन कहते हैं, किसको स्ट्रेस कहते हैं, और उससे बड़ी विडम्बना देखिए। नेक्स्ट, जब एक साथ दोनों प्रेग्नेंट हो जाते हैं तब बहुत पैनिक हो जाता है। तो फिर कहां से शुरू करना? खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, बैठना नहीं आता, प्यार करना नहीं आता, तो कहां से शुरू करना? नेक्स्ट, तो हमने बड़े क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश की है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने दी है। जब कृष्ण और अर्जुन संवाद कर रहे थे, अर्जुन वॉज बिग कंफ्यूज्ड। तब कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, स्वाध्याय योग, ऐसे अलग अलग प्रकार के संन्यास योग तक सब बातें सुनाई, लेकिन कृष्ण नहीं समझ रहा था। अर्जुन नहीं समझ रहा। तब श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि अब तुम ये एसओपीज को नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं, तुम लिटिल फॉलो मी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और फिर कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद पूरा होने के बाद फिर युद्ध में वो निकला। तब तक युद्ध नहीं करता था कि मामा है, नाना है, गुरुजी को कैसे मारूं, भीष्म पितामह हमारे सबके दादा है, उसके सामने कैसे हथियार उठाऊं। लेकिन फिर बताया कि नहीं, तो धीरे धीरे समझा कृष्ण की ये जो व्याख्या या संवाद है, वही महर्षि आत्रेय ने अपने एक श्लोक में उठाया कि सर्वधर्मान परित्यज्य शरीरम अनुपालयत, सब छोड़ के पहले शरीर का ध्यान रखो। हमारा शरीर यानी ये अन्नमय कोश सिर्फ नहीं, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पंचकोशीय शरीर की चर्चा है। हम शरीर को सिर्फ शरीर नहीं मानते। तो शरीरम अनुपालयत, ये आयुर्वेद कहता है, ये वर्ड के लिए मैसेज आपको देना है कि सब छोड़ छाड़ के धंधा करो, बिजनेस करो, काम करो, लेकिन शरीर का ध्यान रखो। ये छूट गया है। हम वैद्य लोग, हम कार्यकर्ता लोग भी हम समझते हैं कि दवाखाना का ध्यान रखो। दवाखाना चलाते अभी हमारे डॉक्टर गौरव गांधी, अभी गुजरात में 9 कार्डियक सर्जन को कार्डियक अरेस्ट हुआ गुजरात में, अपनी टेबल पे, अपने चेयर पे बैठे बैठे मर गए। तो ये जिसका काम है सबका हार्ट ठीक करने का, 5-5 हजार ओपन हार्ट सर्जरी की, ऐसा आदमी अपनी चेयर पे खत्म हो जाता है। तो इतना स्ट्रेस कैसे लेना, क्यों लेना? तो शरीर को कैसे ठीक रखना? अगर जो खुद का शरीर हम ठीक नहीं रख सकते तो हम बाकी लोगों को क्या सुझाव देंगे, क्या मदद करेंगे? और इस ऐसी मेडिकल सिस्टम को हमको क्या करना है? तो हमें समझाना पड़ेगा वर्ल्ड को कि शरीर हम अनुपाल है। नेक्स्ट, तो फिर आज आयुर्वेद की जितनी जरूरत है पहले कभी नहीं थी। आत्रेय के जमाने में भी इतने डिजीज थे, महर्षि चरक ने बहुत से रोगों के बारे में चर्चा की। तो आज क्या ऐसा है? आज तो सबसे ज्यादा आयुर्वेद की जरूरत है। ये बाइडेन को समझाना पड़ेगा आपको, ये ऋषि सोनक को इधर बुलाएंगे या उधर जाएंगे बात करने के लिए कि तुम ये समझो, और उससे पहले हमको समझना पड़ेगा। तो मैं जिज्ञासा के कलीग्स को, फ्रेंड्स को बहुत बधाई देता हूं, गौ सेवा गतिविधि के प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने ऐसा सोचा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम कैसे लोगों को मदद करेंगे। फिर से आयुर्वेद को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, आयुर्वेद पढ़ते पढ़ते सही समझेंगे। तो ये कोशिश हमारी एक है। नेक्स्ट, तो ये सब आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स तो जानते होंगे कि आयुर्वेद के जो काम है वो सिर्फ वो नहीं है। आयुर्वेद साइंस ऑफ लाइफ है, ये कोई मेडिकल सिस्टम नहीं है, औषधि का शास्त्र नहीं है। अगर आपने भी औषधि का शास्त्र मान लिया, आपने भी मेडिकल सिस्टम में इसको डाल दिया, तो फिर आपका रोल लिमिटेड हो जाएगा। क्वचित धन, क्वचित यश, क्वचित कीर्ति, क्वचित मैत्री, चिकित्सा नास्ति निष्फला।
आप सिर्फ मरीज को ठीक करने वाले हो ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेके आपको भेजा गया है इस संसार में। आयुर्वेद के ऋषि मुनि ने हमको ये डायरेक्टिव्स दिए हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो जो बड़ा डोमेन है उसको हमने छोड़ दिया है और हम रोगों में, रिसर्च में, दवाइयों में पीछे पड़े हैं। अगर आधा हिस्सा आपने और स्ट्रॉन्ग कर दिया, जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में, लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बारे में हमारे पास व्यवस्था नहीं है। मेडिकल कॉलेज में, हमारी आयुर्वेदिक कॉलेज में इसके बारे में एक डिपार्टमेंट बना दिया स्वास्थ्य को, तो हम इसको आगे बढ़ना चाहते हैं। उसमें मैं ज्यादा तो बात वो नहीं करूंगा स्वास्थ्य की, लेकिन गाय का रोल क्या है, पंचगव्य क्या उसमें हेल्प कर सकता है। आज का सेमिनार का जो मोटिव है वो मैं उसमें कुछ एड्रेस कर पाया, तो मैं अपने आप को गाय की सेवा मानूंगा। गावो विश्व से मात्र, जब अमेरिका का आविष्कार नहीं हुआ था, जब मुसलमान धर्म पैदा नहीं हुआ था, मोहम्मद पैगंबर पैदा नहीं हुआ था, यीशु ख्रिस्त को मालूम नहीं था कि इधर आना है, तब हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया कि गाय विश्व की माता है, मतलब कि बाइडेन की भी माता है। ये सिर्फ हिंदुओं की माता है ऐसा मत मानो, ये भारत में ही समझा जाता है, सोचा जाता है ऐसा मत मानो, क्योंकि ऋषि मुनियों ने जब बोला था उसका वजह था, उसकी विजन था, उसका फोरसाइट थी, जो फोरसाइट हमको समझनी पड़ेगी। और कुछ जो काम करने में मौका मिला वो आपके साथ शेयर करने आया हूं, आप उसमें और एड ऑन कर सकते हो। दूसरा सूत्र जो है वो प्रॉब्लम है, वो नहीं समझ में आता। पंडित साहब बोलते हैं गाय माता की जय, भारत माता की जय, गाय विश्व की माता है, लेकिन दूसरा सूत्र है उसमें उसका एसओपी बताई, उसमें उसका जवाब दिया, उसकी ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताई। गावो रक्षंती रक्षित, गाय हमारी रक्षा करती है। पंडित बोलते हैं कि आप कोई करते हो कि कोई आपको मारने के लिए आएगा एनिमी, तो गाय आपके बीच में खड़ी रह जाएगी, तो गाय को नहीं लगेगी बंदूक गोली। ऐसी फुलिश बातें क्यों हम समझने लगे हैं। कोई अगर 303 लेके या AK-47 करके मारता है और बीच में गाय आ जाएगी, अब ये चाहते हैं गाय आपकी रक्षा इस तरह से करे, वो खुद मर जाए। ये बातें ऐसी सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि इस सूत्र का आज के हिसाब से क्या मीनिंग है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्या उसके पीछे रीजनिंग है। मैं कोशिश करूंगा आपके सामने। नेक्स्ट, आप 4-5 क्लिक कर दीजिए। ओके, तो गाय ऐसे हमको बचाती है। घी, दूध, दही, छाछ, मक्खन, मतलब तूप, बटर मिल्क, ये उससे हेल्थ है। गौमूत्र और गोमय से डिजीज को एड्रेस करने की ताकत है। इवन गौमूत्र के अलावा दूध में भी वो ताकत है। दूध प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की, लेकिन बाय एंड लार्ज हेल्थ के लिए दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, डिजीज के लिए गौमूत्र, गोमय। जमीन की रक्षा करनी है तो भी गौमूत्र, गोबर, उनके भी डिजीज को एड्रेस करना है, ठीक करना है। अच्छी किसानी, अच्छी कृषि करनी है तो भी हमें गाय चाहिए, गौवंश चाहिए। एनर्जी का स्रोत है बैल, बुल पावर। प्रवीण जी देख के गए हम कैसे सीएनजी कंपनी को हम गोबर से सीएनजी प्रोड्यूस करके ग्रिड में देते हैं। सीएनजी से हम कार भरने के लिए उधर पंप में नहीं था, हम पंप में ग्रिड में देते हैं सीएनजी प्रोड्यूस करके गाय के गोबर से। तो एनर्जी क्या है, तो उनके आधारित है। डेवलपमेंट, कृषि, जो भी है, आप कितना भी इंटरनेट पे चले जाओ, कितना भी आप सो कॉल्ड वेस्टर्न या मॉडर्न सो कॉल्ड बनो, लेकिन इंटरनेट से रोटी डाउनलोड नहीं होती। गूगल से, गूगल वो सिखा सकता है कि रोटी कैसे बनाना है, जिसको नहीं आता है तो, लेकिन आपको खुद को बनानी पड़ेगी। कि आपको डाउनलोड नहीं होती, या डाउनलोड होती है तो आप खा नहीं सकते। तो गाय इस तरह से हमारा पूरा ख्याल रखती है, एनवायरमेंट का, जमीन का, पानी का, हेल्थ का, डिजीज का। बीच में से गाय हटा लेंगे तो वो सब हो गया है। इसको समझना पड़ेगा कि उसमें हमारा रोल एज ए वैद्य, हमारा क्या रोल है। वो अगर रोल प्ले करेंगे तो आप देखिए कितना जादू हम तो देख रहे हैं। आनंद आनंद आपको क्या मिलेगा। नेक्स्ट, कुछ बात आपको ना प्लीज प्रीवियस, ये हम कहते हैं धनवान हो गए, पैसे वाले हो गए। धनवान शब्द ही धेनुवान से बना है। धेनु यानी गाय। तो जिसके पास ज्यादा धेनु है, जो आपने देखा, नंद गेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये कोई स्लोगन थोड़ा है, ये कोई स्तुति थोड़ी है। नंद बाबा जिसके पास 1 कोटी गाय थी, इसलिए वो नंद राजा थे।
सामान्यानंद के पास इतनी गाय, राधा जी के पिताजी वृषभानुवर के पास 5 लाख गाय थी। तो वृषभानुवर, नंद, उपनंद, महानंद, नंद राजा, वो डेजिग्नेशन है। जैसे दिनेश जी प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इज ए डेजिग्नेशन। मैंने पूछा कौन सा डिपार्टमेंट? प्रिंसिपल। ठीक है, मैं भी था प्रिंसिपल। तो ये डेजिग्नेशन है। जिसके पास 5 लाख गाय है तो वो वृषभानु, वो नाम नहीं है, प्रिंसिपल नाम नहीं है। तो इतनी गाय थी, तो जितनी गाय ज्यादा इतना वो आदमी पैसे वाला। तो आपको लगता होगा कि भाई ये इतनी गाय का क्या करते होंगे, मैं 1-2 स्लाइड के बाद और बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान नेक्स्ट, उन्होंने बंसी क्यों बजाई? झांझ पखा, तबला, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन क्यों नहीं बजाया? क्या नहीं आता होगा? ललित, विभास, भैरवी और आशावरी, ये 4 राग अगर सुशीर वाद्य में, फ्लूट में बजता है तो उनका जो एक नॉइस वॉइस जो डेवलप होता है, वो उससे लैक्टेटिंग ग्लैंड जो होती है वो स्टिमुलेट होती है, ह्यूमन की, एनिमल की। एलिजाबेथ जानती है, डॉक्टर अर्पण भट्ट, उसका पूरा MD PhD ऐसे विषय में गया है कि कौन से म्यूजिक की, कौन सी ट्यून की, कौन से इंस्ट्रूमेंट की बॉडीली सिस्टम पे क्या क्या इंपैक्ट होती है, किससे बीपी बढ़ता है, किससे बीपी कम होता है। तो एक प्रयोग जब हमने किया तब हमें पता चला, तो श्री कृष्ण भगवान कदम के पेड़ के नीचे, कदम की जो एरोमा है, उस एरोमा के साथ फ्लूट बजाते थे। गाय को बहुत खुशी होती थी, और गाय की लैक्टेटिंग डक्ट है वो स्टिमुलेट होती है, और दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो श्री कृष्ण भगवान साइंटिस्ट थे, भगवान मानो न मानो। हमने इसका प्रयोग करवाया जूनागढ़ में, एक बड़ी हवेली पुष्टि संप्रदाय की है, उसकी 75 गाय, गिर गाय के ऊपर कृषि यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और हमारे ये साइंटिस्ट हमने मिलके डेली सुबह जब गाय का दोहन होता है, मिल्किंग होता है, शाम को भी, उस समय ये ललित राग की CD 45 मिनट्स बजाई। 30 डेज में दूध का कितना इंक्रीज हुआ उसको नोट किया गया है। इसे कपोल कल्पित नहीं, हमारे शास्त्रों को हमको समझना पड़ेगा। कृष्ण को आप भगवान मानो ना मानो, लेकिन साइंटिस्ट तो मानना पड़ेगा। तो ये बात हमारे शास्त्रों में से हमको समझनी पड़ेगी, आगे बढ़ेंगे। तो इतनी गाय थी तो क्या करते होंगे फिर? दूध बेचा नहीं जाता, गाय बेच नहीं सकते, ऐसा सूत्र था। तो दूध, अब 9 लाख गाय है, 5 लाख गाय है, और दूध बेच नहीं सकते, गाय बेच नहीं सकते, क्योंकि दूध की सेल्फ लाइफ है 6 आवर्स, दही की 12 आवर्स, तक्र की 14 आवर्स, घी की 2.5 मंथ। ये सबकी सेल्फ लाइफ फूड में, डायरेक्ट कंजप्शन में। तो दूध 6 घंटे के बाद तो खराब हो जाता है। कोई पूछेंगे मुझे कि सर आपको मालूम नहीं फ्रिज में रखने से ज्यादा रहेगा? तो यूरोप के 34 कंट्री है जो बिलो 0 उसका टेम्परेचर होता है, तो क्या वहाँ दूध खराब नहीं होता? फार्मास्यूटिकल के एक्सपर्ट बैठे हैं, बायोकेमिस्ट्री के भी एक्सपर्ट है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी, हमारी कॉलेजों में भी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो वहाँ शीत कटिबंध में उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे जो वहां पनप के, यहाँ उष्ण कटिबंध में है हम, तो यहाँ ऐसे दूध तो खराब होता ही है। तो इस दूध का क्या करना? तो फिर दूध बेच नहीं सकते, गाय बेच नहीं सकते। दूध आपको, मेरे यहाँ 10 गाय है, लेकिन मेरे घर शादी है, मुझे बहुत सा दूध चाहिए, खीर चाहिए, पेड़ा चाहिए, तो मुझे बाजू के घर से, गांव से मुझे दूध मिलेगा कि सर आपके यहाँ फंक्शन है, पार्टी है, तो आपको दूध, तो हमको दूध बेचना नहीं पड़ता था, लेना नहीं पड़ता था, गिफ्ट होता था। और किसी के यहाँ शादी है, मेरी बेटी की शादी है, तो मैं मेरे हिसाब से तो, लेकिन कोई भी गिफ्ट में, शादी में गिफ्ट में गाय देते थे। कोई बड़ा फंक्शन है तो राजा गाय को, ब्राह्मण को डोनेट करता था। तो दान कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। तो फिर इतना ये धनवान शब्द की व्याख्या क्या हुई? तो सबको आदेश था कि आप दूध जितना पीना है पी लीजिए, फिर दूध का दही बनाओ, तो सेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ गई। फिर छाछ बनाओ, तक्र बनाओ, उसकी सेल्फ लाइफ बन गई। छाछ है, आप पशुओं को पिला दो, पेड़ पौधों में लगा दो, आपको पीनी वो पी लीजिए। बाकी जमीन का संवर्धन करने में छाछ का उपयोग होता है। और आप लोग तो आयुर्वेदाचार्य है, तक्र अरिष्ट, तक्र चूर्ण, ये सब बनता है, बहुत सी चीज बनती है। तो फिर मक्खन बन गया, उसकी सेल्फ लाइफ हो गई 3 दिन, 3 डेज। तो वीक में 2 बार आप मक्खन निकाल के आप मथुरा तक जाते थे सब लोग,
ये सब इतना मक्खन लेके, मैयारी जिसको बोलते हैं, अपने मटके में मक्खन लेके उधर जाते थे। मक्खन बेच सकते हो, मक्खन देना होता है, और मक्खन से वहां घी बनता था। तो मथुरा वॉज बिग डेयरी, ये बड़ी डेयरी थी। डेयरी यानी घी की डेयरी। मेरा एक प्रेजेंटेशन ने कभी बताया कि आप यूट्यूब में भी देखिए, डेयरी ऑफ बायो वर्ल्ड। हमारा दूध का डेयरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, नंदिनी और अमूल, ऐसा नहीं था, जिसमें हम दूध ही नहीं पीते, दूध जैसा कुछ पीते हैं। तो घी बनाते थे, तो घी की सेल्फ लाइफ हो जाती है 2.5 मंथ। फिर पुराण ग्रंथ की तो और चर्चा करेंगे, वो तो मेडिसिन हो जाती है, लेकिन हेल्थ के लिए, फूड के लिए घी की सेल्फ लाइफ है 2.5 मंथ। जिससे मिठाई बनती है, जिसमें खिचड़ी में, रोटी में, भाखरी में हम डाल के खा सकते हैं। तो वो घी फिर हम बेचते थे। और आपको ट्रैक बताओ नेक्स्ट, जिज्ञासा के लोगों को इसके ऊपर और काम करना चाहिए। ये जो पूरा एरिया है, मथुरा और ग्रीस तक हमारा एक ही किंगडम था, इंडो ग्रीक किंगडम था 5000 साल पहले कृष्ण के जमाने में। ग्रीस तक हमारा राज था, और मथुरा से लेके ग्रीस तक हम, मथुरा, भरतपुर, फिर दिल्ली के आउटर दिल्ली से जाके, एनसीआर से जाके खैबर घाट, अफगानिस्तान, फिर हम पहुंचते थे इजिप्ट, और बाद में शुरू होता था यूरोप। तो यूरोप में 14 कंट्री में, 24 कंट्री में हम घी बेचते थे। अमेरिका का तो उस समय आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन वहां से सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, पन्ना, माणिक, मोती सब लेके वहां आते थे घी बेच के। घी हमारा प्राइम बिजनेस था, स्पाइसेस हमारा प्राइम बिजनेस था, चावल, राइस, वर्ल्ड पूरा राइस, भारत तो राइस ही खाता था। आप लोग तो अभी 5 स्टेट साउथ के, नॉर्थ ईस्ट के साथ ऊपर कश्मीर, हमारे बाय एंड लार्ज आज 3 ही प्रांत ऐसे हैं जो चावल नहीं खाते, पंजाब, हरियाणा। हम भी गुजराती थोड़ा मिक्स आपका तरह खाते हैं, लेकिन वो मत बुरवाते, चावल, राइस ही मूल दान है हमारा, वही खाने की चीज है। ये गेहूं तो कैसे आ गया, कब आ गया, उसकी तो अलग कहानी है, ठीक है, लेकिन राइस बेचते थे हम, स्पाइसेस बेचते थे, और घी का बड़ा व्यापार था। आज भारत में जो सोना है, आपके घर में, मेरे घर में, हमारे मंदिरों में, इतना सोना अमेरिका, वो अगर सोना एक बार बाहर निकला तो अमेरिका को 3 मिनट में बेच के खरीद के ला सकते हैं। इतनी ताकत है हमारे में। हमारे यहाँ कभी इतना गोल्ड का माइंस नहीं थी, आपकी कोलार की माइंस भी पूरी हो गई, और जब भी सोना निकलता था तो बहुत कम मात्रा में। भारत में मिनरल में सोना नहीं था। हमारा जो बायो गोल्ड है, की है, वो बेच के दुनिया भर का सोना हम लाते थे। हम इसलिए पैसे वाले थे, सोने की चिड़िया थी, उड़ के हम घी लाते थे, घी बेचते थे और सोना लाते थे, ये सोने की चिड़िया थी, ये विश्व गुरु था। नेक्स्ट, तो ये पूरा जो मैंने बताया आपको, इंडो की ग्रीक किंगडम, मथुरा का राजा वो पूरा 5000 साल पहले वहां तक का राजा था। ये रिसर्च है, जिज्ञासा को, ये जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। और घी में क्या है, दूध में क्या है, वो तो हमारा डायरेक्ट डोमेन है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक्स में भी हम कितने महान थे इस गाय की वजह से, घी की वजह से। और वर्ल्ड का ट्रेड का 25% टोटल जीडीपी वर्ल्ड का हमारे हाथ में था। अभी 1872 तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का डाटा है मेरे पास कि घी से हम कितना बिजनेस लाते थे। कभी मौका मिलेगा सिर्फ इकोनॉमिक्स के लोगों को बिठाओ तब बताएंगे गाय और इकोनॉमिक्स, गाय और अर्थतंत्र, और बात करेंगे। लेकिन ये हमको भी शुरुआती रुझान में आपको मैंने इकोनॉमिक्स की भी बात की। नेक्स्ट, तो आप जानते हैं पंचगव्य, मैंने उसको नाम दिया है हर्ब ऑर्गेनिक मेडिसिन। आप दीजिए, नामकरण करना पड़ता है। जैसे मेरा पंचकर्म है तो मैंने डिपार्टमेंट में ऐसा एक कीमिया लगाया, उसको पूरा पंचकर्म कैसे काम करता है, एक्शन ऑफ पंचकर्म जो बॉडी में है सेलुलर लेवल पे, जिसको हम सेलुलर क्लिनजिंग कहते हैं, तो फिर उसको नाम दिया है पंचकर्मोलॉजी। गूगल बहुत सारा जानता है, लॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोलॉजी, फैकोलॉजी, तो फिर उसमें पंचकर्मोलॉजी डाल दिया। आपको अपनी दुनिया में, मेरा जो स्टूडेंट है अभी जो पंचकर्म सीखने के लिए स्पेशल हासन में पढ़ा था, लेकिन और चाहिए था कि सर आपके पास पंचकर्म सीखने के 1 साल आऊंगा। फिर मैंने जब जाते जाते दीक्षांत समारोह मैंने उसको क्या दिया, पंचकर्मोलॉजिस्ट, उसका विजिटिंग कार्ड छपा के दिया। आज इतना काम करता है, वो पूरा जॉइंट रिप्लेसमेंट की जगह जॉइंट रिपेयर करता है। तो ये ताकत है हमारी। तो ये आपको नामकरण करना पड़ेगा। हर्बल भी है, ऑर्गेनिक भी है। दुनिया में बहुत मिक्स ऐसा नहीं है। जो पंचगव्य है वो हर्ब भी है। गाय 35 प्रकार की हर्ब खाती है, और वो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके जो एंजाइम्स है, वो एक बड़ी
उसके ऊपर सिर्फ गाय की बायोलॉजी के ऊपर, गाय की फिजियोलॉजी के ऊपर काम आप करो कोई, तो आश्चर्य होगा। तब आप फिर दूध में क्या है जीवनीयम मध्यम वो सब ढूंढ पाएंगे। मैं कुछ कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, तो अत्र गव्यम जीवनीयम मध्यम रसायनम शतक्षीण हितम बल्यम स्तन्यकरम परम हितम। हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हम तो रटते हैं। सबको आता है, बहुत जो रैंकर होता है ये सब जानता है। मैं तो रैंकर नहीं था, मैं तो एंकर हूं। मैं तो ऐसे विद्वानों को लेके दुनिया में जाता हूं। आप जैसे रिसर्च स्कॉलर है, आपके लिए मैं एंकरिंग करूंगा। लेकिन ये जीवनीय क्या है अगर आप नहीं समझा पाए, और उन्होंने आपको समझा दिया है फैट क्या है। समस्या ये है आप उसमें कन्विंस हो गए हो कि उसका फैट क्या है। हमने ये कोशिश नहीं की कि जीवनीय क्या है। आगे बढ़ेंगे। तो माता रुद्रा नाम दुहिताम वसु नाम, गाय को रुद्र की माता बोली गई है। रुद्रो देवता वरुणो देवता, हम बोलते तो बहुत है, लेकिन रुद्र हमारी कैसे रक्षा करता है। नवरात्रि में मैं चिंतन करता हूँ, गौशाला में रहता हूँ, मौन रखता हूँ, शास्त्र को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पंचगव्य का ही पान सिर्फ करता हूँ, तब कुछ नए विषय आते हैं। तो रुद्र का वेपन है वज्र। वज्र से वो हमारी रक्षा करता है। और वज्र की जो आकृति है, फिगर है, वो है ये बैक्टीरियोफेज। तो गव्य में सबसे ज्यादा बैक्टीरियोफेज है 65 तक। और इसको आज की कन्वेंशनल लैंग्वेज में अगर समझाना है तो CL है, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, और VF है, वोलेटाइल फैटी एसिड। वोलेटाइल फैटी एसिड क्या करेगा, आप जो बायोलॉजी जानते हैं या PG करते होंगे या PhD वाले होंगे, टीचर होंगे, तो वोलेटाइल फैटी एसिड है वो सेल की सुसाइडल टेंडेंसी को कम करता है, सेल को रीजनरेट रखता है, और ज्यादा रीजनरेट करता है CL है, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। रसायनम, बहुत लोग बोलते हैं ना कि पंचगव्य से कैंसर ठीक हो जाता है। मैं उसमें आधा सहमत हूं। ये कैंसर होने नहीं देता। हम बचपन से घी खाते हैं, हम बचपन से दूध पीते हैं, तो हमारा जो सेल है वो उसको रोकने में समर्थ है, कैंसर सेल को बनने में समर्थ है, बनाने में, रोकने में समर्थ है। ठीक है कुछ। और आपके पास तो केस आता है 4th ग्रेड कैंसर, तो आप नाम बोल दीजिए, 4th ग्रेड है, असाध्य है, और फिर आपके पास आता है 8-8, 10-10 फाइल एक्सपर्ट लोगों को मिलके, साहब अब तो उसने बोल दिया कि सेवा करो, और सेवा में फिर आयुर्वेद। ये कभी हो नहीं सकता, ये ओवर क्लेम है। ओवर क्लेम आयुर्वेद को नुकसान करता है। आप देखिए देश काल स्थिति, रोग की उत्पादकता, रोग कितने समय से है, क्रोनिसिटी देखिए। अब जब वो मेटास्टेसिस हो चुका है, पेट स्कैन आपको मदद करता है, आप देखते हैं, और फिर भी आप कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा। तो ये क्या करता है ये समझना पड़ेगा, इसका पेटेंट लिया हुआ है। तो CLA बढ़ाता है, VFA बढ़ाता है, और वो बैक्टीरियोफेज उसको बोला जाता है जो रोग कारकता को रोके, कोई भी रोग को। रेजिस्टेंस उसको बोलेंगे, इम्यूनिटी कह सकते हैं, क्षमता कहेंगे, वैदिक क्षमता बोल सकते हैं, बहुत से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। करना है जिज्ञासा को और करना है। नेक्स्ट, तो ये जीवनीय, ये मेद्य कैसे मेद्य है। निशा हमारे यूनिवर्सिटी की पहली और पूरे भारत में पहला पंचगव्य का थीसिस हुआ MD में टॉपिक में पंचगव्य लिया गया पहली बार। तो हमने एक ट्रायल लिया कि मेद्य यानी, तो हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी एक वो डिजाइन लिया कि उस पर काम करेंगे। तो 30 वॉलंटियर को गाय का दूध 100 ml, देसी गाय का दूध, और उसमें देसी गाय का घी 10 ml मिला के सुबह और शाम को दिया गया। सेम 40 to 60 जब मेमोरी लॉस होती है, सारंग दल ने बताया ना कि हर विकेट में हमारी कुछ ना कुछ इंद्रिया कम होती है। तो इवन आप जब 40 के बाद जब होते हैं 40, 50, 60, तो हमारे यहाँ कहते हैं 60 बुद्धि नाठी, यानी मेमोरी लॉस होती है। तो वो मेमोरी मैं उस रिसर्च में कैसे गया मैं आपको बताऊं। एक दिन की बात है, मेरा 50 ईयर्स हो चुका था। उस दिन मेरा बर्थडे था, बहुत खुश था। डिपार्टमेंट से आया शाम को और मैंने बेल बजाई घर में, तो राजेश्वरी ने डोर खोला। बेन तुमने क्या जोया से, बेन आपको मैंने कहीं देखा है। तो उसने बोला अवतारे घर में 25 साल से साथ में रहते हैं। मैं भूल गया था ये लेडी को मैंने कहीं देखा है। तो मतलब मुझे पता चल गया कि नाउ लूजिंग माय मेमोरी, तो शास्त्र सही है। तो फिर पता चला कि साला ये तो मेरे शास्त्र बोलता है कि मेद्यम, चलो ट्राई करें। तो ऐसे 30 वॉलंटियर के ऊपर जो 40 से 60 के बीच के थे एज ग्रुप के, उसके ऊपर ट्रायल लिया गया। आप उसका जो PGI मेमोरी स्केल,
ये पबमेड जर्नल में छपा है, ये अमेरिका ना नहीं बोल सकता इसको। अमेरिका आपको झुठला नहीं सकता कि आपकी गाय की बातों में हिंदू है, सेफ्रोन है, आरएसएस है, जो भी बोलना है उसको बोले। लेकिन ये उसके जर्नल में उसने छापा है कि इतना मेमोरी 90 डेज में इंक्रीज हुआ। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात मैं बात करूंगा। तो ये अत्र गव्यम जीवनीयम मेद्यम आपको समझाना पड़ेगा, आपके शास्त्र को उनकी कन्वेंशनल लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, लेकिन हमको भी कुछ कन्विंस होने में दिक्कत हो रही है। इस प्रक्रिया में ऐसी स्थिति चल रही है। बाकी तो शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र आप्तम, हम उसमें क्यों अश्रद्धा रखें? और जिसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है उसको कैसे श्रद्धा होगी? तो कुछ श्रद्धा बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़े, यही तो है जिज्ञासा। हम तो ब्रह्म की जिज्ञासा रखते थे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इस आयुर्वेद तो उस ब्रह्मास्पृत्व, तो उसमें तो हमारी पहली जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, तो सेरेब्रल पाल्सी के लिए या ऐसे जो भी सेरेब्रल डिजीज है उसमें बड़ा समस्या है। कुछ तो कॉन्जेनिटल है, कुछ जेनेटिक्स भी इसमें ऐड हो रहा है जो पूरी लाइफस्टाइल में। लेकिन ऐसे बच्चों में मेरा शुरुआती काम इससे ही हुआ, पहला ही। तो पंचगव्य क्या हेल्पफुल है? हाँ हेल्पफुल है। हमारे यहाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट, नवीन भाई सेठ को आप जानते होंगे, ही वॉज वाइस चांसलर, तो उसके अंडर में यह काम हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, ये परम करके हमारा स्टूडेंट था। काउ सेंटर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट हम चलाते हैं। आयुर्वेद की बात को एलोपैथी के एक्सपर्ट से हम ये इंटरप्रेट करवाते हैं, क्योंकि वही तो उसकी जिम्मेदारी है, हमारा तो शास्त्र है। तो परम को ये काम दिया, वालपारिंग के साथ इसका कंपैरेटिव स्टडी था चूहे के ऊपर। अभी एकदम इतना साइंटिफिक प्रेजेंटेशन में नहीं, तो मेरे पास है, आप उस परम का भी कांटेक्ट कर सकते हो। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। 23% मेमोरी, मतलब उसके वालपारिन से ज्यादा इंप्रूवमेंट है। कोई ठीक कर देंगे, क्योर कर देंगे, ऐसी बात नहीं है ये सेरेब्रल पाल्सी या ऐसे सेरेब्रल डिजीज में। लेकिन आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो। वालपारिन की जो 17 साइड इफेक्ट है वो एक भी साइड इफेक्ट नहीं हुई। तो ये हमको क्या चाहिए फिर? तो ये दूसरा काम जो मैद्य से विपरीत अवैद्य या ऐसे सेरेब्रल डिजीज है उसके ऊपर ये काम डॉक्टर साहब तो और भी समझाएंगे। नेक्स्ट, चक्षुष्य, ऐसे वॉलंटियर्स को लिया गया जिसकी आंख की थोड़ी समस्या थी, जिसको मिडिल एज में जो आंख की, तो हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एंटिटी दोनों को देखा। नेक्स्ट, करतार सिंह हमारे एचओडी थे उस समय। तो गाय की घी में जो विटामिन है, खास करके कैरोटीन है, उसका तो फंक्शनल एंटिटी में भी काम होता है और स्ट्रक्चरल एंटिटी में भी उसको एनहांस होता है आइज को। क्योंकि कुछ तो जो बचपन के जो ग्लासेस आते हैं वो स्ट्रक्चर, आज बड़े बड़े फ्लैट में लोग रहते हैं, उसको जमीन दिखती ही नहीं, मैदान दिखता ही नहीं, ग्रीनरी दिखती ही नहीं बड़े बड़े सिटीज में। वो बच्चे सीधे बस में जाते हैं, स्कूल में बैठते हैं, घर में फ्लैट है 12-12 मंजिल का, तो उसकी आई साइट डेवलप ही नहीं होती, तो उसको जल्दी से ग्लासेस आते हैं। तो ये उसके ऊपर काम हुआ था। नेक्स्ट, तो एक डॉक्टर साहब, ये बायोकेमिस्ट्री के लोग या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम करने वाले लोगों को ज्यादा उसको है ना, जब एक एक गव्य लिया, एक एक गव्य में जो विटामिन ए है, जब पंचगव्य का ब्लेंड किया गया, दूध, दही, ये घी, गौमूत्र, तब उसका विटामिन ए ये 610 हो गया। ये प्लस प्लस एक ही ऐसे जैसे आप कोई गाजर, कैरेट, मौसम्बी, पाइनएप्पल जो येलो वाला जिसमें कैरोटीन है, उसको एक साथ आप सलाद के रूप में खाओगे तो सबका कैलोरी, सबका विटामिन ए नहीं मिलेगा। जो सबसे ज्यादा होगा वो डोमिनेट करेगा, प्लस प्लस नहीं होगा। ये टीएलसी से देखा गया है कि वो ब्लेंड होता है और वो प्लस प्लस होता है। तो ये बड़ा यूनिक कंपोनेंट है पंचगव्य। ये वर्ड को इसके सामने रखने की जरूरत है। मैंने तो आपको कुछ जो ट्रायल में कुछ दिखा था वो आपके सामने रखा, लेकिन और मॉलिक्यूलर स्टडी करके उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम और बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं, जब उसके बारे में ज्यादा जानेंगे। तब जो शास्त्रों ने देखा था, जो हमारे ऋषियों ने समझा था, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा आज के वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम में उसको समझाएं और हम भी समझें। नेक्स्ट, तो चक्षुष्य, हृदय है, ये है तो आदमी बाहर का, लेकिन हमारे लोग भी ऐसे हो रहे हैं। तो आज वो विषय इतना नया नहीं रहा। जब हमने ट्रायल लिया, देवांगी करके लड़की थी, तो आवी पयम अरद्या नाम
गव्यमृद्या नाम, महर्षि चरक ने बताया कि आविपय आराध्य है, सबसे ज्यादा शिव का घी है, दूध है। और बाकी भी घी के बारे में बताया, भैंस का घी भी बताया। अगर आपको अनिद्रा है, कार्सिया है, तो भैंस का घी अच्छा है। आंख की तकलीफ है तो बकरी का दूध अच्छा है। सिरोसिस ऑफ लिवर है, हेपेटाइटिस है, तो कैमल का यूरिन या कैमल का मिल्क अच्छा है आपके लिए। एक एक गव्य का, एक एक मिल्क का, एक एक मूत्र का बताया शास्त्र ने। तब शिष्यों ने पूछा कि भाई आपने बताया कि उष्ट्र क्षीर है वो एसाइटिस में, जलोदर में अच्छा है। फिर आपने बताया कि बकरी का अजा क्षीर है वो आंख के लिए अच्छा है। आपने उपिंग कफ के लिए गधी का मिल्क का प्रयोग किया है। तो ये सब, तो उसमें गाय की बात आती नहीं, तो ये नहीं, वो अष्टक्षीरी में उसका डिटेल चर्चा है कि जब बकरी का दूध कम हो जाता है या बकरी बीमार हो जाती है, जब ऊँटनी बीमार हो जाती है, जब गधी बीमार हो जाती है, जब भैंस जो अनिद्रा और कार्य को एड्रेस करती है, ठीक करती है, वो भैंस खुद बीमार होती है। इवन अपनी माँ, हमारी माँ महिला जो स्तन्य प्रादुर्भाव करती है बच्चे के लिए, हम उससे पी के बड़े हो जाए, इन सबको जब स्तन्य कम हो या बीमारी हो तो उन सबको गाय का दूध पिला दो तो वो सब ठीक हो जाएंगे। तो गाय का दूध दूध नहीं है, वो अमृत की श्रेणी में आता है। ठीक लगा? ठोको ताली। तो सिर्फ ऐसी बातें नहीं है। ये क्यों उसको इंपॉर्टेंट दिया गया? भैंस को क्यों माता नहीं बोला? बकरी को क्यों मौसी नहीं बोली? बकरी मौसी आ रही है, हालांकि वो छोटी मौसी होती है, मतलब तो भी कितनी, तो कुछ वजह है। तो एलडीएल को कम करना, हमने सिर्फ गाय का घी 3 टाइम्स ए डे प्रिस्क्रिप्शन में दिया है। लिपिड प्रोफाइल में जब उसको हार्ट अटैक आया था, ये आप करके देखिए बहुत कॉन्फिडेंस से कि कितना एचडीएल बढ़ाता है, कितना एलडीएल को कम करता है। नेक्स्ट, तो ये जानते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट फैट मॉलिक्यूल है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को सबसे ज्यादा ये क्रॉस करके ड्रग व्हीकल बन के, जो घी है ना हमारा, सब सेरेब्रल डिजीज में सबसे ज्यादा घी का यूज हुआ है। जब स्किन है, बोन तक तो जाता है तेल, लेकिन नेजल रूट के अलावा कहीं से भी फूड से अगर घी को ब्रेन में पहुंचाना है तो फिर आपको घी, कोई भी ड्रग को पहुंचाना है, कोई भी अच्छी एंटिटी को पहुंचाना है, तो घी इज बेस्ट व्हीकल। तो ये हमारे साथ सूक्ष्मम सर्पी तैलम वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मता तत्रापि चौतमम सर्पी संस्कार से अनुवर्तनात्। तेल उष्ण है, अगर उसको चंदन से सिद्ध कर दिया तो शीत हो जाएगा, शतावरी से सिद्ध कर दिया तो वो हो जाएगा। लेकिन घी पित्त समन करता है, घी थोड़ा शीत है, लेकिन घी को अगर चित्रक से सिद्ध कर दिया तो उष्ण होगा, लेकिन अपनी शीतता नहीं छोड़ेगा। तो संस्कार से अनुवर्तनात्, अपनी क्वालिटी को बरकरार रख के जो ड्रग के साथ उसको विकल्प बनाया है, उस ड्रग को पहुंचाने की जो क्षमता है, इसके ऊपर अलग से काम हुआ है, लेकिन आप इसको जरा समझिए। नेक्स्ट, तो कोलेस्ट्रॉल कितना कम हुआ, और खास करके ट्राइग्लिसराइड जो कल्प्रिट है हार्ट अटैक के लिए सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, आगे बढ़िए। और एक खास ताज्जुब हुआ कि इन वॉलंटियर्स को हमने कोई आयरन या फॉलिक एसिड या ऐसा कुछ नहीं दिया था, उसमें HB 1.5 1.5 ग्राम बढ़ा। हम कहते हैं कि दूध संपूर्ण आहार है लेकिन उसमें आयरन नहीं है, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान ने अपनी लाइफ में 3 बार ही सिर्फ फूड खाया था। विदुर की बाजी खाई थी, सुदामा के पोहे खाए थे, तीसरी बार कब मारूं मैं किसी को, कभी अन्न नहीं खाया था, हर बार दूध और धारोष्ण दूध। तो ये बड़ी, एक कृष्ण परब्रह्म परमात्मा खुद गाय की सेवा करता है, गाय का दूध लेता है, गाय का घी के बारे में बात करता है, गाय का घी बेचता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसे कुछ अमृत है जिसके बारे में हम जानते तक नहीं। नेक्स्ट, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, जर्सी को हमने गाय समझ लिया, और वेस्ट में तो है नहीं, यूरोप में गाय, तो उनको भी यहां आया तो लगा कि ये भी काऊ है, और उसने बोला काऊ तो हम भी बोलने लगे काऊ। ये पृथ्वी के ऊपर 5,500 मैमल्स है, 5,500 मैमल्स, जिसको अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध आता है। कुत्ती का बच्चा, पपी, उनकी माँ का दूध पी के बड़ा होता है, बंदरी का बच्चा बंदरी का दूध पी के बड़ा होता है। तो जर्सी इज ऑल्सो प्राणी, एक मैमल है, तो उनके बच्चा का दूध उनको चाहिए। हम नहीं पी सकते, क्यों नहीं पी सकते?
आगे चलेंगे देखेंगे। ये हमारी जैसे आपकी अमृत महल मलाड गिद्दा गाय है तो वो गुजरात की गाय का मैंने, तो ये देसी गाय है। ये बोस इंडिकस है, उसका मिल्क A2 टाइप का है। और जो जर्सी है, हॉर्सलिन है, फ्रीजियन है, जो यूरोप की काऊ का सीमेन हम लाए और हमने दूध तो बढ़ाया लेकिन जहर बढ़ाया, वो A1 मिल्क है। नेक्स्ट, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो आपकी नंदिनी का बाकी डेयरी का दूध आता है उसमें जो 67 प्लस है प्रोटीन की, वो है BCM7, बेटा कैसिन मॉर्फिन, जो अगर टूट के लिवर में जाएगा तो सीरियस ऑफ लिवर करेगा। वो अगर टूट के अगर पेनक्रियास में गया तो डायबिटीज पैदा करेगा। वो माँ प्रेग्नेंट है और माँ वो पीती है तो बच्चे के ब्रेन में जाके सेरेब्रल डिजीज करेगा, सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, ऐसा कोई भी सेरेब्रल डिजीज बच्चे में, मंदबुद्धिपन, ऑटिज्म आ सकता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम आज क्यों इतना डायबिटीज बढ़ गया, ये आपका देसी दूध नहीं मिल रहा है, देसी गाय को हमने समझा नहीं। ये गाय, ये माता है, ये सिर्फ इतना धार्मिकता से बात नहीं चलेगी, विज्ञान के आधार पे हमारी जिम्मेदारी बताने की। तो ये जर्सी का दूध है, ये पूरा यूरोप में, अमेरिका में यही प्रॉब्लम है, उनको यहाँ देसी गाय नहीं है, भारत में ही ये बॉस इंडिकस है। नेक्स्ट, तो ये गोदुग्ध सर्वो औषधि सारम, 11 किलोमीटर गाय चरने के लिए जाती है, 11 किलोमीटर तक वापस आती है। तो मिनिमम कहीं भी भारत में, राजस्थान हो या हमारा कच्छ हो, आपके यहाँ तो थोड़ा अच्छा पानी वगैरह है, लेकिन जहाँ ड्राउट एरिया है ऐसी जगह पे भी 35 वनस्पति चर के आती है, जो भैंस नहीं चर सकती, उसका जबड़ा ऐसा है नहीं। गाय तो ऐसी ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बहुफली, ऐसी सब वनस्पति, तो 35 वनस्पति चर के आती है। सूर्य के किरण उसके ऊपर पड़ते हैं, जो प्लैक्सिस है उसका हम्फ जो है, ठुड्डी है, कन्नड़ में आप क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं मुझे, हाँ, तो उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तो वो शॉक लेता है, एब्सॉर्ब करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस वनस्पति में होता है, उसी तरह हमारी देसी गाय माता वो एब्सॉर्ब करके अपने बॉडी में बायो गोल्ड एंजाइम पैदा करती है, वो है सुवर्णपित्त, शास्त्रों ने जो बोला। तो सर्वौषधि सारम है गाय, देसी गाय। और वो दिन में हमारे यहाँ बताया, दिनांते पिबेत दुग्धम किम वैदस्य प्रयोजनम, दिन के अंत में पीना है दूध, सुबह नहीं पिला। हमारी माता सुबह सुबह पिलाती है बच्चों को, दूध पी के जा, दूध पी के जा। हमको ना बोला है कि सुबह का दूध नहीं लेना है गाय का, क्योंकि चंद्र का अंश होता है ना रात को, और गाय खड़ी रहती है, ठंड होती है, खड़ी रहती है, एक्सरसाइज नहीं होती, सूर्य के किरण जो मैंने बताया वो नहीं मिलता। तो सुबह का दूध नहीं पीना है, उसकी मिठाई बनाओ, दही बनाओ, उसको शास्त्र ने ऐसा बोला है। तो कब का दूध पीना वो भी हमें मालूम था, कौन सा पीना, कब पीना, कैसे पीना। तो हमको मत समझाओ आपकी ये मिल्क की टेक्नोलॉजी, जिससे तुम सोना चांदी हीरा मार लेके आते थे दुनिया में, हम विश्व गुरु थे, हमको सिखाओगे ये डेयरी। नेक्स्ट, तो सद्य शुक्र करापयम, देखो प्रसाद रक्तम ततो मांस मांसान मेदो प्रजाए थे, कैसे कैसा रहे। बाकी भी फिजियोलॉजी के वाले बोलते हैं कि भाई 72 डेज लगता है, आज जो खाया उसका शुक्र बनने में इतना समय लगेगा, ओम बनने में 54 डेज लगेगा, ऐसा सब कहते हैं। लेकिन वही चरक कहते हैं, वही अग्निवेश कहते हैं, वही आत्रेय का आदेश है कि सद्य शुक्र करापयम। यहां ये केदारी कुल्या नया नहीं है दूध में, मालूम है, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा की मेरी बाहों में, और फिर वो गाय दूध का ग्लास पीता है। तो वो जो सीन है ना, वो चरक का दिया हुआ है उसका, कि सद्य शुक्र करापयम। आपको वो सुनते सुनते चरक याद आने चाहिए, जो कभी शादीशुदा नहीं थे। मजा आया? ठीक है, चलो आगे चलेंगे। तो हमको ये हमारे मैं शाम को ये बात करने वाला हूं कि एंटीनल जो कुटुंब प्रबोधन के लोग आए हैं उनको बताएंगे कि कैसे उत्तम संतति हम ला सकते हैं गाय माता के थ्रू। नेक्स्ट, इसलिए ज्यादा उसमें नहीं रुकेंगे। नेक्स्ट, और तीनों ट्राइमेस्टर 9 महीने का जो महर्षि चरक ने बताया वही फॉलो करते हुए कैसे बच्चे पैदा होते हैं, वो हमारे गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र है जामनगर में, वो उसका मैं पूरा डाटा दोपहर के बाद रखने वाला हूँ, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, और वंश गौवंश रघुवंश, भाई गीता पढ़ा, मैं तो कन्नड़ में इतना नहीं समझ पा रहा था, लेकिन गौ गीता जब पढ़ा तब उसमें गौवंश का उल्लेख है, रघुवंश का उल्लेख है। तो गाय न होती तो राम नहीं मिलते। दशरथ को ओलिगोस्पर्मिया था,
अब राजा और राम के पिता ऐसा मत बोलो, राम को भगवान मत मानो थोड़ी देर, एक सिंपल एक फिजिशियन बन जाओ। तो दशरथ को ओलिगोस्पर्मिया था। महर्षि वशिष्ठ तो कितने बड़ा प्रतापी ऋषि थे, तो भी नहीं हो रहा था, चिंतित थे। तो दशरथ को बताया कि महर्षि श्रृंगी को बुलाओ। महर्षि श्रृंगी रसायनवाजीकरण के एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया क्या करना, और वह फिर यज्ञ बनाएगा, पुत्रेष्टि यज्ञ। पूरा इंटरप्रिटेशन शाम को कोशिश करूंगा कि व्हाट इज पुत्रेष्टि यज्ञ, यज्ञ यानी क्या होता है और कैसे उसमें से यज्ञ पुरुष पैदा हुए। तो ओलिगोस्पर्मिया ठीक हुआ, इतना नहीं। और राम इतने भगवान थे तो भी वो रघुवंश क्यों बोला गया? तो राम तो मरीच के ब्रह्मा के पुत्र थे, इक्ष्वाकु वंश था, काकुस्थ थे, भगीरथ उसके वंश में पैदा हुए थे, मतलब उसके वंशज राम है, तो भी रघु क्यों बोला गया? क्योंकि उसकी 10वीं पीढ़ी में दिलीप थे। महाराजा दिलीप को डायबिटीज था, इतना सीवियर डायबिटीज के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, इरेक्शन नहीं हो रहा था, शुक्राणु तो अल्पता थी। फिर दिलीप को फिर से वशिष्ठ ऋषि ने बोला नंदिनी की सेवा करो, नंदिनी जो करती है वो करो, उसके पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ। तो 11 किलोमीटर वो राजा की एक्सरसाइज होती थी, वापस आता था और 11 किलोमीटर। आसीना लभते सुखम, डायबिटीज की समस्या वही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो उसको वो चलाया दिन में 22-25 किलोमीटर नंदिनी के पीछे। वो करती है वो करो, वो खाती है उसमें से खाओ। तो गौ भक्त यव के बारे में आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, चरक सुश्रुत सब ने बताया कि गाय को यव खिलाना चाहिए प्राणियों को, और वो जो यव है वो उसकी सिस्टम में से बाहर निकलेगा, गोबर में से उस यव को फिर से लेके धो के उसका पाउडर करके वो दिलीप खाते थे। वो चिकित्सा में लिखा है हमारे शास्त्रों में। तो वो सब उसने नंदिनी के पीछे पीछे करके उसको डायबिटीज ठीक किया, और फिर पुत्रेष्टि यज्ञ फिर से हुआ। वही श्रृंगी ऋषि है जो एक्सपर्ट थे रसायन और वाजीकरण के, और फिर उसको जो प्रतापी पुत्र हुआ उसका नाम था रघु। तो रघुकुल हो गया उसकी 33वीं पीढ़ी में। ये आपको लगता है कि मैं रामायण का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हूं, धुंधुमार को भी यही समस्या थी। जब नवरात्रि होती तब मैं राम गाय उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूं, हर बार अलग अलग विषय होता है, तब ये मुझे पता चला। मैं आपको उसका कभी मौका मिलेगा तो सिर्फ इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये गाय नहीं होती तो राम नहीं होता। नेक्स्ट, तो कितना महान का बालो ही बलम राष्ट्र से। मुझे पता चला कि जिज्ञासा के लोग सोनप्राशन करते थे, अभी थोड़ा रुका है लेकिन फिर से करेंगे नेक्स्ट। लेकिन जो पूरी समस्या है वर्ल्ड की, $6,000 ये वैक्सीनेशन में, खास करके ये जो रिकमेंडेड वैक्सीन है उसमें जाता है, उसमें भारत कहीं है ही नहीं। हजारों खरबों रुपया हमारा जाता है इस सो कॉल्ड वैक्सीनेशन है या डेथ है, आप क्या कर रहे हो, किसकी जरूरत है? भारत की तो इतनी बड़ी जनसंख्या, आपने कभी देखा था ये पोलियो वोलियो? महाभारत की तो जनसंख्या और युद्ध आपको याद है, कितने पराक्रमी लोग थे, इतने 18 औक्षणी सेना में किसी को पोलियो नहीं था, एक ही आदमी को पोलियो था। किसको मालूम है? शकुनी, उसको तो मगज का भी पोलियो था, उसमें तो पूरा महाभारत बन गया। तो हमारे पुरखों को पोलियो क्यों नहीं होता था? हमको मिजल्स क्यों? हालांकि वर्णन है कि वो वायरल है, गात्र संस्पर्शात स्वभोजनात् वस्त्रमालानुलेपनात्, वायरस का वर्णन तो हमारे शास्त्रों में है। उसको कैसे एड्रेस करना, तो सुवर्ण प्राशन जरा आप क्लिक कर दीजिए। तो ये जो मैद्य है, बल्य है, वर्ण्य है, स्वर्य है, इसको हमको समझना पड़ेगा। एक साथ 12,000 बच्चों में हम ये काम कर रहे हैं गुजरात में, हर पुष्य नक्षत्र में। उसका बड़ा एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, 6 कंट्री में हम वो भेज रहे हैं। भारत के 13 राज्यों में ये हो रहा है। जब तक आप 1 लाख 2 लाख बच्चों का डाटा नहीं देंगे इस सरकार को या उस सरकार को या विश्व को, तब तक आप बता नहीं पाओगे एक साथ एक ही प्रकार का प्रोडक्ट, जीएमपी स्टैंडर्ड, एफएसएसआई अप्रूव्ड ऐसी चीज, और बताओ कि इससे इम्यूनाइजेशन होता है। ये सिर्फ आपके पोलियो को एड्रेस नहीं करता, ये बल्य भी है, वर्ण्य है, स्वर्य है, ये चिरंजीव बनाता है हमारे बच्चों को। ये ताकत है उसमें, ये हम उससे भूल गए सिर्फ 12 साल तक। क्योंकि जो 87% जो आईक्यू है वो तो गर्भ में सेट हो गया है, जो बाकी बचा 13% है उसको काम कैसे करना वो शाम को हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो अभी तक के रिसर्च जो मैंने थोड़े बताए, तो एक हमारा गौ सेवा आयोग जिसका मैं एडवाइजर हूँ, भारत गुजरात सरकार का है। फिर हमारी यूनिवर्सिटी जो आज अब इतरा बनी है, यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी है, और
वेटरनरी रिसर्च भी हम थोड़ा करते हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस डिपार्टमेंट राजकोट का, सब मिलके हम काम करते हैं। नेक्स्ट, तो ये थोड़े जरा आप देख लीजिए अलग अलग, ये ऑफिशियल रिसर्च वर्क है। पंचगव्य के ऊपर 14 काम ऐसे हैं जो आप उसमें से कुछ प्रेरणा लेके उसके ऊपर और फर्दर रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट, इन लोगों को, इन बच्चों को आप मिल सकते हो जिन्होंने ये काम किया है। नेक्स्ट, तो सब डायबिटीज की, अस्थमा की, सबकी दवा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो कभी सार्स, कभी बर्ड फ्लू, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोविड, अभी बताया कोविड फिर से आएगा, कोविड अपना स्वरूप बदल के आएगा। ये हमको मूर्ख बना रहे हो। ये भारत के लोग इतने भोले हो गए, हमारा कोई ऐसा नेतृत्व तो नहीं जो बताए इसको। कोशिश की गई है इसको कैसे एड्रेस करना। नेक्स्ट, तो ये जीवनीय है जो कश्यप का रेफरेंस लेके हमने कोविड को कैसे एड्रेस किया वो बताने की मैं कोशिश करता हूं। नेक्स्ट, ये भारत का पहला एक आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर राजकोट में हमने 5 महीने तक चलाया, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोटोकॉल था। आयुष को मनाने में, हमारी सरकार को मनाने में, मेरे यहाँ तो 25 साल से हमारी सरकार है लेकिन नहीं मान रहे थे उनकी साइंटिफिक कमिटी। फिर सीएम से ही मैंने उद्घाटन करवाया। ये हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन है, भारतीय राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के डॉक्टर वल्लभ कथे, ही इज ऑल्सो ऑन्कोलॉजिस्ट, लेकिन ये गाय को मानते हैं क्योंकि हम लोग साथ में रिसर्च कर रहे हैं। तो ये कोविड केयर सेंटर का आपको बताऊं। नेक्स्ट, ये जो कश्यप का रेफरेंस है वो पंचगव्य ही है, लेकिन कश्यप का रेफरेंस थोड़ा अलग है, किस तरह से बनाना, कहाँ यूज करना। ये जीएमपी और ये एफएसएसआई अप्रूव्ड ये प्रोटोकॉल है, ग्रेन्यूल्स बना लिया हमने पंचगव्य के। नेक्स्ट, तो आप उसको देखेंगे एक एक करके, एक क्लिक करिए, एक एक करते जाइए। ये 7th आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर ऑफ राजकोट। नेक्स्ट, तो कोई कहते कोविड ट्रीट नहीं कर सकते, ऐसा बोलते थे, उसको हमने चैलेंज किया। नेक्स्ट, ये आपके सामने पंचगव्य आयुर्वेद की है, 340 पेशेंट का डेटा है, सीरीज है मेरी, इंटरनेशनल जर्नल में छपी हुई। नेक्स्ट, आप कर दीजिए क्लिक। 9 दिन में आरटीपीसीआर नेगेटिव होता था, इंडोर ट्रीटमेंट 3500 रुपये में, 3500 रुपीज में, 6 बेड ऑक्सीजन के थे, ऑक्सीजन देना पड़ता था, और 90 लोग हमारे पेशेंट वेंटिलेटर पे गए, लेकिन एक भी डेथ नहीं हुआ। ये पंचगव्य है, तो आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिर घबरा गई है WHO, क्योंकि अमेरिका जितना बड़ा कंट्री जिसके पास वर्ल्ड के 40% रिसोर्स है, इतना रिसर्च है, इतने डॉक्टर्स है, इतनी समृद्धि है, लेकिन और उनकी जनसंख्या 4% है वर्ल्ड में, उनके नागरिक को बचा नहीं सकी कोविड में। तब फिर घबरा गए कि सबको बताया कि आप अपने अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जरा देखो, हम लोग थक चुके हैं। ऑफिशियल पत्र लिखा है। तो पहले तो जो है इथियोपिया, माली, म्यांमार, जो गरीब कंट्री जिसको बोले जाते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है या प्रगत कंट्री है, डेवलप कंट्री है, वहां भी अपनी कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो अब ढूंढ रहे हैं। जामनगर में वो सेंटर उसने क्यों शुरू किया, करना पड़ा कि भाई अपनी अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम से ही आप ठीक हो जाओगे, उसको ही मानो। वो कौन कहता है, अब वो थक के हार के बोल रहा है। हम तो कॉन्फिडेंस से कहते थे कि सिद्धि रसे करिष्यामि निर्धारितम् इदं जगत अत्र गव्यम जीवनीयम मेद्यम रसायनम। हम बोल के थक चुके, लेकिन सुन रहे थे, अब ये सुन रहे हैं। नेक्स्ट, तो और इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट है पॉल पिल्जर, मैक्सेस अवार्ड इस किताब को मिला है। वो कहते हैं ना, वर्ल्ड इज शिफ्टिंग इलनेस टू वेलनेस। सबको ये बीमारी देख ली, ये नहीं चाहिए, ये रोग और रोग की चिकित्सा वाला संसार नहीं चाहिए। ये नया जो डिकेट शुरू हुआ है वो वेलनेस का डिकेट है, उसमें आप हो, हम है, आयुर्वेद है, भारत है, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये बड़ा सिर्फ वेलनेस इंडस्ट्री का $1 ट्रिलियन का व्यापार है, और उससे भी बढ़ रहा है, मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट, तो गोमय वसते लक्ष्मी, ये मोहनजोदड़ो का सिल है, कोइन का, पीछे उसमें काकरेज बुल है। तो बुल इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी अर्थ की, आरोग्य की, सब हमारे पास थी। नेक्स्ट, तो हम उसको, तो देखो ये वेलनेस इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, ये वर्ल्ड का आकलन है, ये वर्ल्ड एजेंसीज ने रिसर्च सर्वे किया है, इस तरह से वेलनेस जा रहा है। नेक्स्ट, तो भारत में भी देखो ये बड़ा। नेक्स्ट, तो हमने इसके छोटे प्रयोग क्यों किए, कभी जामनगर पधारिए, एक छोटा गांव हमने अडॉप्ट किया है जहां ये पूरा काम कर रहे हैं कि गाय, ये
राष्ट्र सेविका समिति की हमारी प्रमुख संचालिका उस समय की, और हमारा RSS की महिलाओं की, मेरी पत्नी भी क्षेत्र कार्यवाही का है, तो उन्होंने मिलकर एक छोटी ये कल्पना है, ये आज से 15 साल पहले एक कामधेनु दिव्य औषधि महिला सहकारी मंडली बनाई, जिसका अभी टर्नओवर है 74 लाख दिसंबर तक का, गाय के पुत्र से, गोबर से। नेक्स्ट, बाबा रामदेव दुनिया को समझाते हैं, हमने बोला कि आपको हमारा लेबोरेटरी का उद्घाटन करने के लिए आना पड़ेगा, मैं कंसल्टेंट हूँ बाबा रामदेव का कुछ प्रोडक्ट का, तो मतलब आप दुनिया की सेवा करते हो, कुछ गाय की भी सेवा करो, हम तो कोशिश में है। तो इस विमेन एम्पावरमेंट, विमेन मीन्स एम्पावरमेंट, वो प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट, तो गाय माता क्या लेती है, हम कहते गाय के लिए ये करेंगे, हम बड़े बड़े लोग कहते थे कि गाय की सेवा करो, गाय की सेवा करने से इसको, देखो केला हमने खाया, छिलका गाय को दे दिया, मूंगफली हमने खाई पीनट और उसका छिलका गाय को दे दिया, मक्का हमने खाया, उसका जो डोडा है वो गाय को दे दिया, हमने बेस्ट खाया और वेस्ट गाय को दिया, लेकिन गाय ने हमको बेस्ट दिया। तो ये गाय माता है, हमने समझा नहीं अभी तक, या समझा था और बीच में रुक गया है, फिर से समझाने का जो आज मैंगलोर में कोशिश हो रही है, गौ सेवा गतिविधि, आरोग्य भारती, ग्राम विकास, जिज्ञासा के माध्यम से, तो बहुत आनंद हो रहा है कि बड़ा चेंज दिख रहा है। नेक्स्ट, तो कौन किसको बचाता है बताओ, हम बचाएंगे क्या गाय को, गाय हमें बचाती है, तो ऐसी बात है। नेक्स्ट, तो हमने एक सूत्र दिया है, शायद आपको पसंद आ जाए, संस्कार विद साइंस, मातृत्व विद मेडिसिन एंड आध्यात्म विद इकोनॉमी, तब भारत महान बन सकता है। अब ऐसी ऐसी बातें करने से, गाय माता की जय बोलने से नहीं होता। जब पार्टीशन हुआ तब 90 करोड़ काउस गाय थी, देसी गाय, और हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी, एक आदमी के पीछे 3 गाय थी। पार्टीशन के बाद आज 75 साल, जिसको हम अमृत महोत्सव कहते हैं, अमृतकाल कहते हैं, तो हमारी जनसंख्या हो गई 130 करोड़ और गाय हो गई 9 करोड़। तो अगर हमारी बात सही होती, गाय माता की जय बोलते बोलते गाय के मंदिर बनाते हैं, गाय के पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन गाय नहीं है। आप आइए हमारे यहाँ कभी, हम लोग 14 डॉक्टर और सब मिलके चलाते हैं, आपको बताओ मैंने, हमारे पास जमीन नहीं, हम तो किसान के बैठे नहीं है। नेक्स्ट, लेकिन जो हमने पाया कुछ, तो ऐसा हमने एक पूरा इको विलेज बनाया है, मॉड हाउसेस है, यज्ञशाला है, गौशाला है, पाठशाला है, वहाँ आयुर्वेद का अध्ययन होता है, अष्टांग शिविर वहाँ चलते हैं, आत्रेय शिविर चलते हैं, पितरा के लोग आते हैं, कभी जिज्ञासा का केंद्रीय कार्यक्रम रखना हो तो आप जरूर करिए, आइए उधर। नेक्स्ट, तो ये पूरा एंटीक है, वर्ल्ड का बड़ा फेमस वेलनेस टूरिज्म का गुजरात सरकार ने मुझे एडवाइजर बनाया कि वेलनेस यानी गाय, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट, तो कभी जरूर पधारिए। तो ये हमारा आपको, और इसको समझना है तो हमने एक शब्द दिया है, लोकायुर्वेद। आयुर्वेद वैद्यों के पास से लोगों के पास जाना चाहिए, हमने फंसा के रख दिया आयुर्वेद को, हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारी कॉलेज में, हमारा क्लिनिक में। तो आयुर्वेद को लोकायुर्वेद बनाओ, लोगों का आयुर्वेद। कभी मौका मिले इसमें लोकायुर्वेद का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या करते हैं। अभी अभी हमने एक प्रोग्राम लिया, आयुर्वेद की थाली हेमंत ऋतु वाली, पूरा यूरोपियन स्टाइल का 22 फूड का पूरा आयुर्वेद स्टाइल से समझाया था बेंगलोर में। शुभ मंगल हमारी अच्छी एक आयुर्वेदाचार्य है, तो उनको समझाना पड़ेगा लोगों को। जिस दिन मोदी जी का मन की बात होता है उस दिन मेरा कार्यक्रम होता है लाइव, ऐसा ही एक बड़े रिसोर्ट में, तन की बात। तो तन की बात, हमारे मन की बात तो कौन सुनेगा, हम तो तन की बात वाले हैं। तो दूध के बारे में, घी के बारे में, सोल्ट के बारे में, पानी के बारे में, भारत की आयुर्वेद की अवधारणा क्या है, उसमें साइंस क्या है, वो हम ऑडियो विजुअल बताते हैं। कभी आप डॉक्टर हितेश जानी तन की बात टाइप करेंगे तो कुछ वीडियो उन्होंने अपलोड भी किया है। लेकिन आप ऐसा काम करो, जिज्ञासा के लोग तो ये कर सकते हैं। हमारा जो हेल्थ डोमेन है, स्वास्थ्य डोमेन है, उसको बड़ा करो आप, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद मिलेगा, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, अगर फिर भी पसंद ना आए तो ट्रायलनेस, ठीक है, तो अच्छा लगा। नेक्स्ट, लास्ट, तो पूज्य गुरु जी जन्म शताब्दी वर्ष से हमको ये काम सौंपा गया है, तो दिल दिमाग सब छोड़ छाड़ के कर रहे हैं, आप भी इसमें जुड़ जाइए। तो अच्छा लगा, प्रवीण जी ने बुलाया, हमारी बहन इंतजार कर रही है कब से क्या पूरा, तो मैंने ज़्यादा समय ले लिया हो तो क्षमा करना। और क्योंकि ये परिपूर्ण है ना, खुद परिपूर्ण है, तो ये मैंने कोशिश की है उनके जैसे बनने की। अच्छा लगा हो तो शास्त्रों का है, आयुर्वेद का है, हमारे पुरखों का है, कुछ बुरा लगा हो, कुछ गलत लगा हो, मैंने से कुछ स्लिप ऑफ टंग भी हो गया तो वो मेरा है, मुझे क्षमा कर देना। भारत माता की जय, गौ माता की।
वेरी वेरी थैंक यू सर, आपके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे बातें बताने के लिए। हम होप करते हैं कि आपकी जो विजन है, जो मोटिव है गौ माता की रक्षा करने का और उससे सबको आयुर्वेद की ज्ञान बांटने का, ये जो भी है उन सबको प्रेरित करें और इनमें से कुछ लोग आपकी तरह बहुत बड़े बने और ऐसे ही सबकी सेवा करें मेडिसिन फील्ड में, स्पेशली आयुर्वेद में। थैंक यू वेरी मच। So that concludes our first session with Dr. Satish Jani sir. Now I would request you all to take a short break. Now it's 11:18, so let's meet up in 12 minutes. Hopefully, we are running slightly behind schedule. So let's meet back at 11:30 for our next session with Dr. Ramachandra Shetty sir. ಈಗ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇದರದ್ದೇ ಗೋಶಾಲಾ ಭಕ್ತಿಭೂಷಣ್ ಜಿ ಗೋಶಾಲದ್ದು ಸೋಡಾ, ಜಿಂಜರ್ ಸೋಡಾ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕದಿರೋದು ಪಾನೀಯ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹರಿಶಣ್ಣ, ಓ ಹರಿಶಣ್ಣ, ये लोग बच्चे देखिए आप। अच्छा तो यही तो हमारी चिकित्सा शास्त्र ऐसा ही है। तो फिर से प्रैक्टिस में कैसे लाए और ये यंगस्टर्स उसमें कैसे जुड़े, वही हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बस आप मुझे मैसेज कर दीजिए, जोड़ दीजिए, भेज दीजिए। आपका यही इसको डॉक्यूमेंट बनाओ ना, आपने अपने घर में ट्रायल किया है, वो लोगों को पता चला छोटे से टेस्ट प्रोग्राम। नहीं 8252 12 वो तो करिए, ठीक है। इंडिया में तो कहने की जरूरत नहीं होगी। 90 इंडिया हाँ, यही सेम आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ, मैं मेरी टीम आपसे बात करेगी, हमारे पूरे गोल्ड हम कभी फोन की बात करेंगे, समय निकाल कर ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಶ್ರೀ
नहीं लेकिन बताइए उसको थोड़ा साइंटिफिक बैकअप दो। उसको सीधा आँख बंद करके फॉलो करना। तो क्या है हमारे बच्चे जो है वो थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस हुए हैं इंडिया में, तो थोड़ा बताना पड़ता है लैंग्वेज में मेथड से बहुत ओहो क्या बात है। आपके कौन सा रिपोर्ट या हाँ वो तो ठीक है फिल्म में नहीं मैं चाय वाला कॉफी वाला हूँ हमारे यहाँ पड़ा है फिर भी एक ट्रायल ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಜಿಜ್ಞಾಸ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಕರ್ಣ आप बताइए सही तो चाय बोलेंगे ये हमारे यहाँ पड़े हैं जामनगर आपका रिव्यू सही ಪ್ರೆಷರ್ ಭಾಳ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶೀಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣ ವೈಫೈ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂದ್ಸಲ बिकॉज मोबाइल अरे पावर पैट आता मोबाइल में देखना अब अंदर चुटकियाँ पड़े ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ
ರಮೇಶ್ ಅವರ ಅಂದರೆ ಇವರು 50% ಇವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ. ಹೇಳಿ. ನಿರಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ 8:30 ಅಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೆ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. Of any disturbance or any discomfort here. Now I would like to take this opportunity with great privilege. Now I would like to invite upon stage Dr. Ramachandra Shetty sir for the next session of the day. Thank you sir. Over to Lakshmi Shri Narayanan. એટલે ત્યારે તમને એક મિનિટ મને બોલી હતી તમે કેમ એમને ઓળખો Very warm good morning to one and all. It's my great pleasure and privilege to welcome today's our chief speaker, chief guest, Dr. S. Ramachandra Shetty. Namaste, sir. Dr. Ramachandra Shetty sir is the Director, Research and Development Officer at Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore. He is a retired principal of Government College of Pharmacy, Bangalore, and the chairman
Board of Examination Authority of DIFA. He is a member, Pharmacy Council of India, former Dean, Faculty of Pharmacy, RGHS. He is a former syndicate member of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, former executive committee member of Central University of Karnataka. He has guided 11 PhD scholars, 70 PG dissertations, and has published 150 papers. I am very proud to get this opportunity to reveal that his H index is 16. He has been awarded Fellow of Indian Pharmacological Society, Fellow of Association of Biotechnology and Pharmacology. I request Sir to enlighten our delegates and equip them with your vast knowledge. Over to you, sir. Thank you. I think nothing is left for me to talk about Panchagavya treatment after Hitesh Jani's speech. He has wonderful experience. My dear friends, today I would like to present my topic, integration of Ayurveda and allopathic system of medicines in treating epilepsy. It's a smaller area, but still Samanvaya. There is one statement that you cannot discard any technological development. Again, at the same time, you cannot forget ancient science also. There is a need to integrate systems for the benefit of the mankind. Government of India, after Narendra Modi took as the Prime Minister, initiated integrative medicine system. Niman's Bangalore has been identified first center wherein all the three fraternity doctors will be sitting with one patient and they will discuss what type of intervention shall be done at what type of, for what type of disease at what point of time. Thereby they will be seeing into the well-being of the mankind or the patient. And before going into my topic, I would like to tell two things. One is seminar. Semi means off. Do you want to have off knowledge? Therefore, Bharatiya Shikshana Mandali and another Parivar organization has coined the term called BLISNAR. Now onwards, I request Jignasa or Ayurvedic fraternity, first they shall name the all seminars as BLISNARs. BLISNAR means Ananda experience. That's why it is my sincere to the organizers, now onwards we shall use the term BLISNAR. It is Bharatiya Shikshana Mandali's terminology, that is Bharatiya terminology. We are thinking of Bharatiya science, therefore it should be BLISNAR, and I am participating in this BLISNAR. Second thing is, you see, when we want to integrate, what sort of integration is needed? What sort of integration is needed? Whether directly use both in combination or separately or one after the other. But when it comes to my mind as a researcher, earlier I am interested in Rasa Shastra and I am interested in preparation of drugs. One PhD on Shodhana has already come out and this is the second PhD. Here what we are thinking is, instead of one after the other, the simultaneous treatment. And I will tell you the limitation of my work. Limitation is that I am not authorized to conduct clinical trials. Therefore, I am a preclinical pharmacologist, thereby my experiments are on animals. All my experiments are animals and animal data I am going to present here. Next slide please. You see, before going into the topic, these are the things I would like. Epilepsy. I think in any of the cinemas,
villain has planned to give a shock to the person. Once an electrical shock is given, what will be his action? The hero or relatives of the hero will have all sort of extension plays, chronic phase and all those things. And if that electrical activity is generated within you, if the electrical activity is generated within you, similar things will be happening. And that excessive electrical activity generated within the cerebrum is called as epilepsy, and seizures are seen. What you observe during the break dance is that. In Uttara Karnataka, we call it as Setel Rogan Nritya. Okay, this is what is the epilepsy. And treatment. In allopathy, they treat it with, you see, whenever epilepsy occurs, it will be enhancing the entry of the sodium into the brain cells. That causes depolarization of the cerebral cells. When there is an increased depolarization of the cells, it goes to the repolarization, and thereby electrical conduction in the particular area is enhanced. That will be causing epilepsy or the clonic tonic seizures of the concerned area of the body. This is what is epilepsy. Many of the, and you can think that all the epilepsies are the over-excitatory activity of the brain. Caffeine, coffee we drink here, caffeine, excessive caffeine causes the overactivity. And we use caffeine-induced epilepsy in animals. Nicotine-induced epilepsy. Like that, any excessive administration of CNS stimulants will cause epilepsy. And most of the anti-epileptic drugs will be trying to suppress that. For example, phenytoin sodium is used to suppress the sodium channels, thereby they will be preventing the entry of the sodium. It is a symptomatic relief. Similarly, phenobarbital, which potentiates the GABA, which is the controlling mechanism. What I mean to suggest here is, either we prevent the stimulation or we suppress the stimulation. And during this process, it will not only symptomatically relieve, it also causes various adverse drug reactions. For example, phenytoin, carbamazepine, diazepam. All these things will be destroying our cognitive functions. They will be derailing our cognitive functions. That means they will be, memory is altered, interpretation, integration of the things will be reduced, and thereby you will be having a suppressed stature throughout the lifespan. And again, most of these drugs are, because whenever they want to produce any effect on the brain, they should cross the blood-brain barrier. That means blood-brain barrier is a lipid layer. So these drugs will be crossing the lipid, means they will also cross the mother's mammary gland cells, and thereby they will be released into the baby when they were baby during the lactation. Not only that, it can also cross the placental barrier, thereby neonatal abnormalities are also seen. Then phenytoin and phenobarbital drugs they are called as enzyme inducers. In our liver, there are several cytochrome enzymes. Their function is induced, and whenever you want to take other drugs, their metabolism is increased, thereby the effect of the other drug is decreased. Such type of drug-drug interactions are also seen. In addition, the final one is drug resistance. Whenever there is a continual, because these are all the life-threatening, lifelong diseases, we have to administer these drugs for a prolonged period of time. Whenever you administer these drugs for a prolonged period of time, there is a possibility of the development of resistance by your body, thereby their efficacy goes on slowly decreased. Especially it is in case of phenytoin and phenobarbital, it is compulsorily there will be a decrease in their efficacy. Next slide please. So,
Yeah, I don't want to talk into more about this. I want to talk about Ghritas. You see, Ghrita is in Sanskrit, Ghrita, or in Ayurveda Shastra, it is called as Yoga Vahika, all of you are knowing it. Any molecule which is solubilized in Ghrita will be easily entered into the brain or cerebrum by crossing the blood-brain barrier. This is one of the important property, and it even for any nutrition to reach brain, if it is eaten with Ghritas, it reaches faster. That's why for many people, for a particular community people, we call them as Tuppat in the Tale. That is because they are intelligent. Yes, it is Yoga Vahika, it carries drug substances into the brain. Next is, there are several Ghritas everyone has talked about, and I am specifically concentrating on Brahmi Ghruta and Kushmanda Ghruta. Brahmi Ghruta is, as all of you are knowing, that it is established behind doubt that it improves the cognitive functions. Kushmanda Ghruta, again, for a particular community people, we call them Kumblaka Tintatale, because it also improves the cognitive function. And Ghruta improves the cognitive function, Kumbrakai improves the cognitive function, Brahmi improves the cognitive function, and synergy may be existing in it. Next slide, please. So, keeping all these things in view, in the Prastavik, he has clearly told, Vivekananda has expressed that for Indian, don't question, do it and then question. Accept it and then question. If it is a Videshi, question it and then accept. Keeping that in view, my hypothesis is first accepting. If I am not accepting it, I would have given null hypothesis, but I am giving the positive hypothesis, that is, Brahmi Ghruta and Kushmanda Ghruta possesses anti-epileptic activity, it is positive, which acts synergistic with phenytoin and thereby helps in reducing the dose of phenytoin and also protect the animals from phenytoin-induced cognitive dysfunction. This is a positive hypothesis. I am not questioning my ancient knowledge, I am accepting it, and after acceptance, I will go for the testing. Please. Next slide, please. Research questions. Then, for any researcher, because you are all students, therefore, I am just how a research question shall be generated to get answer or to get evidence to your hypothesis. To get evidence to my hypothesis, there are few questions. Whether Brahmi Ghruta, Kushmanda Ghrutas possess anti-epileptic property, or these Ghrutas act synergistically, whether Brahmi Ghruta and Kushmanda Ghruta protect the animals from phenytoin or any anti-epileptic drug induced side effects. What is the possible mechanism of action? These are the questions I should answer in support of my hypothesis. So, to get answer to such questions, I have designed my experiments. Please, can I? These are the objectives of the study: to prepare the Ghrutas as per the classical references. I am not interested in any preparation methodology which is not classical. I am depending on the Rasa Shastra, because Rasa Shastra's way of preparation is totally, though it is not evidence based, it is totally scientific, I believe. Totally scientific, I believe. Okay? Because my earlier experience told that. In Shodhana and all, my earlier research experience told that Rasa Shastra's preparation methodology is very good. Even when I was doing my Trayushnadi Loha research, the Loha Bhasma prepared by cow dung method was found to be better than Loha Bhasma prepared by furnace method. Hence, because of that, my conviction is that Rasa Shastra is the best way of preparation, having more efficacy. Therefore, I prepared Ghrutas as per the Rasa classical referential, and then evaluated the anti-epileptic activity, mechanism of action, and impact of Ghrutas on phenytoin and these phenytoin and other drugs induced adverse effects. Next slide, please. This is my way. This is my experimental design.
because I am also giving experimental design, because many of the delegates here are students. I have been informed before I came. That's why I began my talk with introduction, hypothesis, questions, objectives. On the basis of that, all of us should design our research methodology. This is my research methodology flowchart. First, preparation of grutas, then analyze the grutas, qualitative, quantitative analysis, and the physical-chemical analysis. Then is animal studies, evaluation of effect of grutas in subtherapeutic doses, then evaluate pilocarpine-induced status epilepticus and effect of grutas on phenytoin-induced cognitive dysfunction. This is the most important part of my study. I was happy about these results. Next slide, please. Preparation of grutas. I think I did not tell anything about this preparation of grutas because you are all experts on it. First, you prepare the swarasa of the brahmi, then add, take up the powders of vacha and kusta, shankapushpi, then make a paste of it, add it to the swarasa, and then boil it, then heat it till it gets the liquefaction, and then use that gruta. Here, wonderful thing about Brahmi gruta is that they have asked for old gruta. I prepared, you see, why I am telling you this, this is an important thing to be noted. I used old Purana gruta means what? That was my question. And I have been told by an Ayurvedic expert that any gruta which is more than 1 year old is Purana, and if you increase the Puranita, that means if you increase the oldness, the efficacy may be improved. That was the statement given. I searched for old gruta. Rashtrottana Goshala in Bangalore gave me 1 kg of Purana gruta of 6 years old at free of cost, which was around 20,000 rupees per kg. And I am thankful to the Rashtrottana Goshala. Then I also used Nandini gruta separately. One important thing that, first point, in physical chemical test only Nandini gruta prepared, Brahmi gruta failed. There was no consistency at all for me. But when it has got, I used it for more than 1 year, and this gruta, prepared from old gruta, was stable throughout my study. Next please. Kushmanda's preparation method is same, but here they have not mentioned old gruta. However, since old gruta is costlier and I got only 1 kg, I used it for Brahmi gruta, and Kushmandu gruta I used Nandini only, but there was no difference in preparation of Nandini in Kushmandu gruta, and it was also stable. Next slide please. Animal studies. You see, I have used rats, and I got rats from our drug testing laboratory of Karnataka government at free of cost again, and we used all these things. The parameters was latency to tonic iron limb extension. Tonic iron limb extension. Have you seen any epileptic patient like this? Is it not? And clonic. Okay. This tonic iron limb extension, there are 2 things we have studied in this. One is onset of tonic. How much time it has taken to produce tonic iron limb extension. If it is produced within 10 seconds, and after treatment if it is produced after 25 seconds, that is increasing the latency of THLE, and at the same time duration. These 2 things are important. I want to reduce the duration of THLE. I want to increase the time taken to cause the THLE. These 2 things are seen, or is there any abolition of THLE? These are the parameters I have observed. Next slide please. Effect of grutas and MES. MES means maximal electrical shock induced epilepsy. MES, maximal electrical shock, that is 0.2 this thing. You see, I have given grutas with phenytoin, so one group of animal phenytoin 35 mg per kg, Brahmi gruta
2.2 ml per kg. These are all the calculated, doses are calculated. There is one calculation table, that is on the basis of the surface area. If human dose is this much, multiplied by 0.018 will give you rat dose. Multiplied by 0.0026 give you mice dose. There is a table, dog dose table, cat dose table. This is all depending on it's a modern technology, not Ayurveda. But modern technology, I have got only that was my knowledge. So I used the calculation of that. You divide it by 0 or multiply it by 0.018, you will get the human dose. I say it is all calculated from the basis of that. This much doses were selected. Next slide, please. And they were given for 7 days. On 6th day before MS, they were received phenytoin doses as mentioned above. Group 5 to 8 received 5 to 8, 5, 6, 7, 8. They received different doses of phenytoin, that is half dose. Actually, I have done some pilot studies wherein 0.75%, that is 75% of the 35 mg and below 25% of the 35 mg we tried. In pilot studies, we could not get better activity. There is no synergism. Therefore, we selected for final study of 6 animals group, 8 animals group, we studied 17.5 mg phenytoin, 8.75 mg phenytoin, and combination of 3.6 ml of per kg of drug and phenytoin. Our gluta with phenytoin, like that we have tried. These are the combinations we tried. Next slide, please. Next, another, because always I am not satisfied with the one model of the study. It has to be confirmed in minimum of 2 to 3 models. Therefore, one was the MES model. Now this is the PTZ, that is letrozole, pentylene tetrazole. It is a CNS stimulant. It is also called as cardiotonic. It is also respiratory stimulant. But it is out of market for human consumption because of the side effects. It is out of market. But we use in laboratory for the purpose of and it is used as a pharmacological tool. It is used as a pharmacological tool to induce the epilepsy. Even in my informed days, 40 years back, I studied the same model. Then same here also same doses were given in one set of animals for 8 days treatment. Next slide, please. And in another set for the same PTZ, combination of glutas and the diazepam. Here, you see, there I have given you phenytoin. Here I have used diazepam as a standard. There is a difference because PTZ causes CNS stimulant, and it is not via sodium channel. It may be stimulation, other mechanism. I want to suppress it. Diazepam is a GABA stimulant. GABA is a suppressant. Therefore, I have used diazepam. For using the standard also, dear students, you should have a logic. You should have a rational. Therefore, I am talking about the selection of the standard, 2 different standards in 2 different models. Next slide, please. And this is pilocarpine is another epilepsy causing alkaloid, and here again a control is used with 10 ml of 10 ml per kg. Diazepam, again here also diazepam is used, and the glutas and combination of here the combination of glutas are also given. Next slide, please. Then I was talking about the cognitive impairment, that we have used elevated plasmas and served as the extroceptive behavioral model, and it is evaluating the learning and memory in mice. Next slide, please. Then effect of phenytoin-induced cognitive dysfunction. We have used full-fledged phenytoin. We have used antagonist of paracetam, brahmigluta and all. This is the way we have used, because by giving phenytoin
with full dose, it for how many days? For 24 days, causes complete memory dysfunction. Then along with that we gave, then to understand the mechanism, I have used artificial intelligence caused binding energy studies. There is one instrument called, even software called Schrodinger. We download the Schrodinger, it is around 6 lakhs rupees per annum, the registration fee. So in that there are 2,500 and above common functional proteins library. We download the required protein and give our drug on it. If there is a binding, if it requires minimum binding energy, then we can call it as stable binding. For example, if I carry 1 cup of water, it is stable for more long, I can keep it for more time. If I carry 1 jug of water, what is the time required? It is not that stable. If I carry 1 bucket of water, it requires more energy and thereby stability is less. You can have only 5 minutes you can catch that bucket like this. Whereas a cup, 1 hour I can. Therefore, minimum energy required for binding will be enhancing the stability of the stability of the molecule. Like that, we have studied the binding energy required and required for the various phytoconstituents that are present in the Kushmandu Gruta as well as the Brahmi Gruta, and tried to analyze their mechanisms. Because those functional proteins which are involved in causing the epilepsy have got better role. Next slide please. Now results. You see, in epilepsy, especially in MES, in addition to THLE parameter, survival criteria is also important. Phenytoin has got complete survival. All the animals survived, but there is an extensor phase. There was a clonic. In our Grutas, though no animals were survived, you can see the increase in the latency and decrease in the THLE. That means it is having, our Grutas are having milder apasmara property for that small period of treatment. I have not tested for full-blown period, but there is a mild effect we can see. Next slide please. Now you see, in MES, latency is almost tripled when we gave it Gruta. And almost more than 50% animals survived. Here more than 70% animals survived with only 50% of the dose. Only 50% of the dose. That means there exists a synergy between the Grutas and allopathic tract. Therefore, my first hypothesis that there is a synergy is proved from this experiment. It is proved from this experiment. Next slide please. Next. Same in case of Grutas on subtherapeutic doses. In case of other model, you see 70%. Here, one important thing which we noticed is Kushmandu Gruta is becoming better than the Brahmin Gruta in this. Kushmandu Gruta, you see, there you can see the results which are depicted in blue color. Next slide please. Then pilocarpine induced. Same is the case. Same is the case with Kushmandu and when they are given in combination. Next slide please. EPM. You see, on this is transfer latency. What we do, you know, in elevated plasmas, there is one open horn, there is another closed horn. And the animal will be there, that elevated height of that will be around 1.5 feet. By seeing that height only, rats are very much afraid. Rats are very much afraid. Therefore, immediately they go into the closed arm. They go into the closed arm and they try to escape. Here,
escape latency is reduced. Escape latency is, you see, increased. You see, control on the 12th day, on the 11th day, within 14 seconds, it ran into the close run. After my treatment, with all these drugs, there is an increase. There is an increase. That means, not only that, in these 11 days, they will be having memory. They will be having memory. Here, during that, that is electrical shock or treatment, shock treatment or any seizure treatment, you see, they forgot to go 37 because their memory is lost. Now it is again brought back. After treatment, it is again brought back. Next slide, please. Cognitive dysfunction. This is another very interesting experiment. We have used cameras and analyzed it with computer. You see, we are having plus maze. This is water maze. That was elevated plus maze. This is water maze. A bucket of water is taken. We tie the thread, dividing that bucket surface into 4 quadrangles. We place one flowing piece of wood in one corner, and in the third corner we will be leaving the animal. These animals are very intelligent. They will go and search and they will sit on that because they will be exhausted if they are swimming longly. So it searches and it learns the memory. After few days, we remove the wood. It will go there and it will be searching in that quadrant only. We teach the animals like that. That is called as conditioning of the animals. And this conditioning, leave of these figures and all. Figures will not be going into our head. I want to explain why actually it is there. So, whenever you go, this conditioned behavior is lost because memory is lost when phenytoin is given. When diazepam is given. This memory is lost. It will be taking too much time to go there. When we gave our grutas, it has gone with the normal timing. What it indicates? In phenytoin, it has forgot or it has taken too much time to go there. When it is treated with grutas, it has gone fastly. That clearly indicates that this memory is called as spatial memory. For example, all of us, we will be going to think that you are going from one place to other place, there is no Google. Don't Google Map, don't think of Google Map. But you are traveling. When you travel, you will be having remembrance like this. You see, when I go there, after the third class, fourth class I should take left and then right and then fourth class, like that you remember. Am I right? That is not learning memory, that is spatial memory. How fast you learn to go that? For example, if I go for the once in that route, I will remember easily. If you take 2 to 3 times to reach, your learning ability is little retarded. It is like that. So learning ability and spatial memory are totally little different. And here the total memory, spatial memory and learning memory, both are being altered with phenytoin and diazepam when they are given for treating the epilepsy. When they were given along with the grutas, they have reversed back. This is one second thing or final thing which I am very much interested. When my student brought that particular project, I added this and I am very much happy after learning this mechanism. Next slide, please. Same. This is our spatial memory results. Next slide, please. Because these readings and these things are for only people who are testing my students' ability. For understanding the concept, these things will not help you for you. But here, this is another important thing. You see, glide score is nothing but the binding score, binding energy. For example, ACHE, acetylcholine esterase. Here I want to tell you a story. I think I have got some more time, sir.
Huh? I want to tell you one Janapada Vijnana. My mother is Angutika chop. My grandmother is double Angutika chop. But my grandmother used to tell, when a baby is sleeping, that is after acupressure bath and all, that acupressure on that small baby, when that baby first it cries, afterwards it enters into the deep sleep. Am I right? And my grandmother used to tell, when baby is sleeping, don't make noise because baby grows during sleep. Today, it is proved behind doubt. Similarly, my Angutika Chap grandmother used to tell me, whenever there is a baby salivate, she used to tell two things. That is, one is that salivating baby learn to speak faster, and that baby is having higher intelligence. Today it is proved beyond doubt that acetylcholine is essential for salivation, and in Alzheimer's disease, that is memory or dementia, we give a drug donazepam which increases the acetylcholine level. You see the Angutika Chap knowledge, that is science. I am thinking of writing a book, Janapada Vijnana, on the basis of these things. This is a wonderful, theirs is observational science, ours is experimental science. Theirs is intuitional science, ours is experimental science. Theirs is experiential science, ours is only experimental science. We still there. And we, this generation, including me, forgot to observe. We should learn to observe. Observation should be interpreted. Interpretation should be integrated. Integrated should be applied. This is what my people used to do, my ancestors used to do, and I feel this science in ancestors was evolved like this. That can be called as empirical science. Same thing is true here. We have downloaded acetylcholine esterase enzyme, which is increasing the metabolism of acetylcholine, thereby reducing the acetylcholine level. When it is binding, you see, minus 12 kcal2 up to minus 8 kcal can be considered as best binding energies. Since the cognitive improvement is done by the Glutamine, this liquid in, all these are phytoconstituents up to this point. All these things have got better binding with the acetylcholine esterase. They inhibit them, thereby acetylcholine level is increased, and thereby your cognitive function is improved. Wonderful, is it not wonderful thing? That is what is Kumblakait in the Tale, that is what is Brahmit in the Tale, that is what is Tuppat in the Tale. Next, Camphorol is another ligand. You see, another COX-2. This COX-2 is nothing but the causing inflammation, brain inflammatory enzyme. If it is more, inflammation is more. COX-2 is blocked. You see, Camphorol, Senoprol. So, your damage to the cerebral cells is reduced. There is a proportionate reduction in the damage. Once there is no damage, increased acetylcholine, that is cognitive dysfunction. Next slide, please. So, the MES model mimics the general. This I will read. MES model mimics the generalized tonic-clonic seizures seen in humans. Triggers influx of sodium ions, increase the glutamate level. Glutamate is known as CNS stimulatory neurotransmitter. Glutamate is CNS. That's what you are eating. You know what is that? Golgappa. In Golgappa we eat Chinese salt, tasting salt. That tasting salt is nothing but the MSC, monosodium glutamate. Monosodium glutamate causes excitotoxicity. In our laboratory, we use monosodium glutamate induced neurotoxicity. And we eat it. Sir, will you please add little more? That is what our habit. Next, and BPG and KGD significantly increase the latency of THLE and decrease the duration of THLE, but not completely abolish that. Next, the phytoconstituents responsible for the activity are PHD, choice of drugs, mild severe adverse reactions, BPG protected
tested the efficacy of the subtherapeutic doses of PHT, maybe synergistic effect. I'm using the maybe. That doesn't mean that I don't have the confidence on it. But whenever we use the preclinical studies, it is not established in human beings. I cannot conclusively say because until and otherwise I test it on human beings. That's why I'm using the word maybe. Don't think otherwise that I don't have the confidence on it. I am totally confident of its utility in human beings if it is tested in future. Next slide please. PTZ, that is GABA antagonist. That's why I used the diazepam here. It is, there are in brain, there are two amino acids. One is glutamate, which stimulates your brain, NMDA receptors. Another is GABA, which depresses. Thereby there will be always fight between the glutamate and the GABA in your brain. Because of the fight between them, you are having normal health. If think that GABA is blocked, CNS stimulation is over and you will have a epilepsy. Therefore, PTZ causes stimulation of, antagonism of GABA, thereby when there is no fight, when there is no opposition force, this power will be more, So stimulation will be more and epilepsy will be. Diazepam is the potentiator of GABA, thereby it enhances and brings back the balance or homeostasis between GABA and glutamate. Then even your PTZ causes oxidative stress or neuronal damage. The antioxidant in the glutas will prove to be neuroprotective agents. These glutas significantly increase the onset of clonus, protected the animals from death when they are given with the PPG and in combination with the drugs. So phytocon and DPG is used as an adjuvant therapy. It may be used as an adjuvant therapy, and glutas significantly potentiated the effect of therapeutic doses of diazepam, due to the antioxidant effect and inhibiting the further damage by protecting the neuronal cells because of the antioxidant property. Next slide please. So pilocarpine is a young muscarinic receptor agonist, induces seizures similar to epilepticus, that is, and in humans. And it is like this, epilepticus, status epilepticus. If a person, you will be sitting here, you will be losing consciousness, you will be like this for a few seconds. Not having any consciousness of the surroundings. It is sometimes dangerous. Because if he is driving, what happens? If he is working with the machine, so this is very dangerous. If he is having all this tonic, someone will be there to protect him, and they will give some iron or something else to reduce the electrical activity. He will be protected somehow. But this is status epilepticus is dangerous. Okay. Then all these things are being protected as shown in the tables. Next slide please. Next slide, because this is all the discussion now. This is the conclusion part. That is, Brahmigruta and Kushmandugruta demonstrated mild anti-epileptic activity in rodents. Why I am underlining the word rodent is, in humans, we have not tested one thing, and human physiology and animal physiology are totally different. Totally different. Though they are mammals, totally different. I will tell you. There was in 1980s, there were papers, some 6 papers, there all the organ size ratio of humans and body to organ ratio were similar. When anatomically they are similar, what is the need to have test the drugs on human beings? This was the question. Some 6 to 7 research papers were published. But later on it is proved that though anatomically they are similar or ratio wise, but physiologically they are different. Physiologically they are different. For example, your cow, it is having 2 stomachs, 4 stomachs. That is, it will melako hakuvudu.
It takes back and it redigests, is it not? Is it possible in human beings? It becomes nausea or vomiting. Am I right? Similarly, in rodents, there is one called exose monophosphate scent in humans. But in rodents, exose monophosphate scent, that is glucose metabolism, is not there. Therefore, there is that's why they say in rodents, just by testing the urine ascorbic acid level, we can say that whether that patient is having hepatitis or not. But humans, it is not like that. We have to test it through blood samples. Therefore, I am underlining the word rodents. It is probably because of the physiological variant, it may be having better activity in humans, but we have to look into it. However, there is a mild influence is there on apasmara by treating with these drugs. And they potentiated the anti-epileptic potency of sub-therapeutic doses of phenytoin and diazepam. Further, these drugs also reverse the deleterious effects of that is phenytoin and diazepam on memory dysfunction, because most important deleterious effect is memory and dysfunction. Memory dysfunction, because they will become totally dull. My cousin was there. She died at the age of 30 after this epilepsy. She got epilepsy during her first pregnancy. After that, and she always used to be so sober, and she used to sit in a corner, so sober, all because her memory was lost, and she died at 30. Where I have seen the epilepsy fever from a very close corner. Then it is concluded that the integration of the Ayurvedic drugs with allopathic drugs may be highly beneficial and improves the patient's compliance and therapeutic outcome. This is what my conclusion after these experiments. However, further studies are needed to confirm their mechanism. In addition, human trials also needed to ascertain the usefulness of such integration in clinical situation. Next slide. Thank you. Any questions? It is open. Small note, for any of the delegates or participants that have any questions regarding Sir's Blissnar, please keep them noted. We'll have a panel discussion briefly after our next session, where we'll have an interactive session between our speakers as well as guests. Sir, I would like to request you to come on to the dais. So we would like to felicitate you regarding this. I am an odd man in this gathering. Now I request our organizing member committees to please felicitate Sir.
Now over to Ms. Nikita. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ DP ರಮೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಅವರ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ DP ರಮೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು GOU ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹಾ ವೈದ್ಯರು ಆಯುರ್ ಪಂಚಗವ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಶೇಷ ಸಲಹಾ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೈನ್ ಕೋ ಯೂರಿನ್ ಥೆರಪಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಸಂಘ ಸದಸ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗದಗ. ಇವರು ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆದ ಪಂಚಗವ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದೆಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟವರು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಯುರ್ ಪಂಚಗವ್ಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅನೇಕ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂಚಗವ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂಥ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೋಪತಿಯ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪಂಚಗವ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು ಅನೇಕರು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪಂಚಗವ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 100% ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ DP ರಮೇಶ್ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಚಗವ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಚಗವ್ಯ ವಿಧಾನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ನಮಃ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಒಂದಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷಯ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪಂಚಗವ್ಯ ಸೆಮಿನಾರು, ಪಂಚಗವ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಯಾವುದು ಈಗ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಹೊಸದಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಚಗವ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಚರಕಾಚಾರ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಸುಶ್ರುತಾಚಾರ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ವಾಗ್ಭಟಾಚಾರ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೊಸರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಪಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅನೇಕ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಅನುಪಾನವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಸೌಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಸೌಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೋಮೂತ್ರ ಗೋಮಯಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಪಂಚಗವ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಚಗವ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ತತ್ವ ಇವತ್ತು ಪಂಚಗವ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತ್ರಿದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ತ್ರಿದೋಷಗಳ ಏರುಪೇರು, ಸಮದೋಷ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಏರುಪೇರು ಆದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಈಚೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಸರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಪತಿಲಾದರೆ, ಮಾಡರ್ನಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಸಿಂಟಮೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರ್, ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಜ್ವರ, ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರು, ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡು, ಇದಿಷ್ಟು 3 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು.
ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಕು, ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡು, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಡಿಸೀಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಮೇಯ್ನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೀಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವುದು ವಾತನ ಪ್ರಧಾನ, ಪಿತ್ತ ಪ್ರಧಾನ, ಕಫ ಪ್ರಧಾನ ಡಿಸೀಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಆವರ್ತಿತವಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ ಡಿಸೀಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಷಡ್ರಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಕಟುತಿಕ್ತ ಕಷಾಯ, ಮಧುರ ಆಮ್ಲ ಲವಣ, ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟಿನ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ, ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದಿರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲು ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇದು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೈನ್ಸು, ಇವತ್ತೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಈಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನು, ಈ ವಾರ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ 15 ಡೇಸು ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ 50 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಇದೇ ಫೈನಲ್, ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಂಚಗವ್ಯ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಯುರ್ವೇದನೇ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಪಂಚಗವ್ಯ ಅಂದರೆ ಪಂಚಗವ್ಯ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಪಂಚಗವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಗವ್ಯ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ತಳಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸು ಅಥವಾ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ತಳಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶೀಯ ತಳಿಯ ಮಹತ್ವ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪೌಡ್ರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಈಚೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಸು ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೇಯ್ದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಲಮೂತ್ರವಾಗಿ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ತಳಿಯ ಗೋಮೂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಗೋಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಗೋಮಯ ಅದು ಔಷಧಿಯಾಗೇ ಇದೆ, ಅದು ಮಲಮೂತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ. ಇಡೀ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೋತ್ಪನ್ನ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೋಮೂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೋಮಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಲಿರ್ಬೋದು, ಈ 3 ಉತ್ಪನ್ನಗಳೇನಿದೆ ಯಾವುದೇ 9 ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದೇ ದೇಶೀಯ ಗೋವಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಔಷಧಿಯ ಮಹತ್ವ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಕೇವಲ 15 ದಿನ
3 ತಿಂಗಳು. ಇವತ್ತು ಲಿವರ್ ಮೆಟಾಬಲಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ 15 ಡೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲೂ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ಆ ರೀತಿಯ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು 15 ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರೋಂಥ ಪೇಷೆಂಟು 3 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು, 6 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅನುಭವನ ಅವರಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ತುಂಬೆ ಗ್ರಾಮದವನು. ನಾನೊಂದು 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಒಂದು 2 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಇದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್, ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಅನಿಲ್ ಪಂಡಿತ್ರವರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಭೂಷಣ್ ದಾಸ್, ನಮ್ಮ ಸುರಾಬಿ ಗೋವಾ ಉಂಟು ಮಾರಿಪಾಲದ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನಗೆ ಇಂಥ ಅವರ ವಿಷಯ ಅವರೇ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ನಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಏನು ಮಾಡ್ದಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಪ್ ತಿಂದಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಆಗಿ 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡ ಜ್ಯೋತಿಷರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನೊಂದು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಡುವಾಗಂದ್ರು ಮೊದಲು ಮೋಷನ್ ಆಗಲಿ, ಮೋಷನ್ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು, ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡೈಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾ ಆ ಮದ್ದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಗೋಮೂತ್ರ ನೀವು ಕುಡಿತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಇದು ಗೋಮೂತ್ರ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಗೋಮೂತ್ರ ನೀವು ಕುಡಿತೀರ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ಕುಡಿಯುವ ಸರ್ ಗೋಮೂತ್ರ, ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದವರು, ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಬನ್ನಿ 1 ನಿಮಿಷ, ಏನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ICU ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆಯವರು ಇನ್ನೇನು ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೇಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ ಇವರು. ಮನೇಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಸಿರುವಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂದರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂದರು, ಭಾವಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಸಾಯಿದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇದೊಂದು ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಟುಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಡೌಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಟ್ ಏನು ಸರ್ಜರಿಗೇ ಇವರು ಸರ್ಜರಿನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈವನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಇದೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎದ್ದು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಪೂರ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡುವಾಗ 4-5 ಜನ ಕಾಣ್ತಾರೆ, 4-5 ಜನ ಕಾಣ್ತಾರೆ.
ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ CTDS ಮತ್ತು ಗೋರ್ಕ ಪಂಚಗವ್ಯಕೃತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಇದೊಂದೇ ಕೇಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಿರಾಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಲೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಡ್ರಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ನಾವು ತ್ರಿದೋಷವನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ತರದೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ, ಕುಟುಂಬ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಗೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೋಸೇವಾ ಗತಿವಿಧಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೊಡಗಿದೆ. ನಾವು ಉಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಒನ್ ವೇ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಸ್ ಅದೇ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗದಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಡಿಸೀಸನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಕ್ಗಳು ಕ್ಲಿನಿಕಲಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದೇನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನೇ. ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. Now we are going to have the much awaited panel discussion. We already have with us Dr. D.P. Ramesh sir. I would further like to call upon Dr. Suresh sir, Dr. Sandeep Bekal sir, Dr. Ganapati sir and Dr. Hari Krishna sir for the panel discussion onto the stage. I would also like to call upon Dr. Hitesh Jani sir onto the stage for the panel discussion. Now we will have a brief discussion about the sessions that have been conducted so far. Any delegates or audience having any questions are free to ask them by raising their hand or by writing them on a piece of paper and handing them over to our audience in charges.
I repeat, you are free to ask any questions. Please do raise your hand. If not, you can write them on a piece of paper and hand them over to our volunteers. ಏನಂದ್ರೆ ಒನ್ ವೇ ಬರೀ ನಾವು ಏನೋ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ವೇ ಕಿವಿಲ್ ಕೇಳಿ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಪಂಚಗವ್ಯ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿಬೋದು, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲೋಪತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಟನಾಶಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಬರದ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಅದರ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Namaste. Thank you, Dr. Gopalakrishnan, sir. I think there are multiple questions here. We may take a different session to be discussed. Am I audible? One or two points I will just begin with. Hopefully my colleagues will add. First question that I have understood is regarding the hereditary aspect. ವಂಶವಾಹಿನಿಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟೋ ಇಲ್ವೋ? As per the modern oncology, they consider probably only a couple of conditions, like cervical cancer and breast cancer as having a hereditary tendency. But practically we have seen that majority of cancers have a hereditary trait involved. So in our clinical practice also we have seen a family where 4 people were affected by cancer. Not the similar conditions, different kinds of cancer. So one had lung cancer, another had breast cancer, the third one had colon cancer, but different kinds of cancer. That means there is an inherent abnormality in genetics where the decision of cell division is monitored. So we, in our concept, we call it as a cellular intelligence, which we see in Ayurveda or in Hinduism or in Buddhism. We know that there is an increased mitotic figure, so which is observed in all cancer cases. So there is definitely a hereditary tendency. There is no doubt about it. Whatever the text says, it may be limited to certain cancers, but in majority of cancers, there may be some exceptions like non-Hodgkin's lymphoma, but in majority of cancers there is a hereditary tendency, which I have observed. That is first. And second question sir was talking about is related to the carcinogens. So which substance can cause cancer? Anything can cause cancer, or there are various debates on these issues. And it is very important that there are many things that can cause cancer. I cannot say that everything can cause cancer, but there are many things that can cause cancer. One is in our control to some extent, that is the food. And second, which may not be under our control totally, that is environmental factors, which may include the pollution or many other things. So if you are talking about the food, so there are many things which are considered and proved to be having carcinogenic effect,
it may be a smoked food, it may be red meat. So there are many references which you can get here and there. And the most important one is the pesticide residue. So which to a great extent is not under our control. We are not cultivating vegetables and fruits organically and using it. We are definitely dependent on the market. Whatever we get from the market, we are purchasing them and using them. Many of them are genotoxic, because we have seen young individuals, say 25-30-year-old women coming to us as cancer patients who do not have any such habits which are mentioned as causative factors like smoking or alcohol or whatever. But the cases are increasing exponentially, which we are seeing every day. So an important cause is the genotoxic chemical that is present in these fruits and vegetables. There are different types of opinions regarding the removal of these toxins from the vegetables or fruits. Many times it is not possible. So I usually advise my patients to restrict some such fruits which are exposed to very high amount of toxic chemicals. For example, grapes. We say that grapes is very good. It is very good anti-cancerous. It has got anthocyanidin. So it is having antioxidant property, all these. But practically it is a highly genotoxic, because a bunch of grapes is dipped in pesticides at least 20 to 24 times throughout its development crop. So we will have to ask the patient to restrict them. Whatever you use the method to wash it, maybe turmeric water, maybe salt water, whatever, it is very difficult. So as much as possible, try to use those which are having peels. Which are having peels, or the one which are not much exposed to chemicals. If at all you have an idea regarding the source, it may be possible. Otherwise you will have to depend upon the authorities, as we have in Sikkim, which is totally free from chemicals. It's very difficult. So that is one aspect. So we have tried to develop a product in our institute where we are, our intention is to use certain herbs which have got chelating effect, which can bind with chemicals and try to eliminate it from the body. It contains very simple drugs like cilantro or turmeric or haridra-like substances. As these food substances are not in our control, at least you can use such products or some rasayana preparations you can use. And one more, the most important, very relevant for today is Gomutra. So they help to cover these toxic materials and help to eliminate them from the body. Not only the antioxidant potential, they also act as chelating agents, so that these carcinogenic chemicals which are induced into the body can be removed. So that's first two questions I think I addressed to some extent. The next is the treatment. That's a very huge topic, I think. Probably others also can contribute to some extent. Then if anything I have to add up, I will add based on my 2 decades of experience of treating more than 1,000 cancer patients. So it's a very huge topic to discuss. Probably my colleagues will start with their inputs. One of the questions that the delegates asked was with regard to prevention also, if I'm not wrong. And as we are all aware, invariably we can prevent it to an extent. See, like we can't expect our white cloth to remain white when we use it. When you definitely go out, venture out and you get into many activities, it is going to get dirty. And what is a solution for that? It is as simple as washing the cloth very often. And what is the solution we have in terms of Ayurveda? And it's not an answer, I think, which was given only recently or thought about only recently, because we have Rutu Shodhana, we have yearly also Shodhanas which have been mentioned, as well as for all the ailments that the Shodhanas have been prescribed. Therefore, inevitably toxins will get into the body. So for example, I was just wondering, like
when the announcement was made earlier that we will be getting an organic drink. So then this organic drink comes in a PET bottle. Okay, it is an inevitable thing because I think it is most convenient. Like earlier, if you had seen the soda bottles, they used to be of glass, which is a very inert material. And if you research into it, I'm very sure some content of this plastic will leach into the drink that we are consuming. And it is inevitable as well. But then what is the answer? The answer is that you have to cleanse your body from time to time, and we should make people also aware that cleansing the body, that's the shodhana, very simple concept of shodhana, has to be made known to the public also. And with regard to causative factors also, there is no clarity with regard to only a few chemicals. They have come out with some clarity, but then day before yesterday I was just attending one of the seminars conducted at MIO, that is Mangaluru Institute of Oncology, and the best of the experts that we have there were also perplexed with this question, and they were telling that they have limited answers. And I asked them, like, do you really have any answer with regard to modification of diet and lifestyle? No, they really don't have, and they are open to the idea that we all contribute to it, and that's the reason why they had invited a lot of Ayurveda doctors there. And this discussion, I should tell, rather than a seminar, it was just a discussion, and they were open to the idea that we contribute something to them. And invariably the Panchagavya, what we are talking about today, especially the Gruta Kalpanas, have a very, very major role to play in each of these aspects, because even for Shodhana, what we are using as Snehapana mostly is a Gruta, not on all occasions, but many a times it's a Gruta. Therefore, with so many things equipped in our armory, I think we can definitely contribute to supportive treatment, or sometimes even complete management, or sometimes to manage the symptoms caused by the other harmful medicines that are given, which is inevitable on some occasions. Therefore, this question in fact is a very big question, which in fact needs a very elaborate answer. But then, with the limited knowledge that I have, I just touched a few aspects of it, and maybe my colleagues also will contribute further. Sir, thank you, sir. We have a couple of other questions that we would like to put towards you. Dr. Praveena asks, how to interpret Sthanarbuda versus fibroadenoma and breast cancer, with special light to dosha sammorchana and its chikitsa. As such, we cannot have the direct comparison, as already pointed by Dr. Ramesh, because Sthanarbuda may present in different forms, not just fibroadenoma, because sometimes Vajra of Kashyapa Samhita also can be compared to some extent with breast cancers. So just comparison A to 1, 2 to B, like that, that comparison is not at all possible. But in an outset, we can compare some of the cancers of the breast cancer, especially it is having genetic probability to the fibroadenoma, the early precancerous condition sometimes. But all fibroadenoma may not be the cancers as such also. It is just, it may not be even the predisposing factors also. But some studies have shown the link also. So in Ayurvedic management, we have to take it as in an Ayurvedic diagnosis approach instead of going for modern diagnosis. Otherwise, you will lead with some medicines, just giving some medicines. But you require a holistic approach of lifestyle management, hormone management, then digestive system management as well, and the psyche. Moreover, there is something called oncopsychology. That also to be handled very well. Otherwise, the person's having a feeling that I may get cancer, as Dr. already Gopalakrishna has pointed, I may develop cancer. If this plant is having anti-cancerous, this may cause a carcinogenic effect. Such type of concept will gradually develop
our cells to proliferate in that way, or we will have the tendency to develop the cancers. So the Vyadhyutpadaka Pratibandhakatva and Vyadhibala Nirodhakatva, these two aspects have to be very much highlighted in our lifestyle and the management of the patients. As such, I give the mic to the Jani sir to further elaborations. तो रेडी डायग्नोसिस के ऊपर मत जाओ, कंपेयर मत करो। विकारो नाम कुशलम न जिरियत कदाचनम। आपको ये डायग्नोसिस कोई एलोपैथी या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास से आता है, आपको लगता है ये प्रूवन डायग्नोसिस है, और आप उसी लाइन पे आपकी चिकित्सा का पाथवे ढूंढने लगते हैं, वजह उसके हमारे शास्त्रों ने जो बताया कि उस समय का आपको क्या लक्षण लगते हैं, दोष दूसरा आपको क्या लगता है, आप अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करिए। उसके बाद आप चिकित्सा, हर जगह पे चिकित्सा सूत्र है, लेकिन चिकित्सा सूत्र के लिए भी हमारे वैद्यों ने, हमारे ऋषियों ने कहा है कि भाई आप अपना बनाइए, एतावत पिसजम कार्यम रोगे रोगे यथाविधि। आप अपनी इंस्टिंक्ट से हर करो, उसको चिकित्सा करो। सीधा आप उसको कैंसर मान लो, और अभी प्रश्नोत्तरी भी कैंसर के ऊपर आप मत चलाओ। मेरा सुझाव है कि ये कैंसर के लिए सेमिनार नहीं है, ये गव्य के लिए, पंचगव्य के लिए है। अदरवाइज कैंसर कॉन्फ्रेंस तो उसमें बहुत बड़ा समय जाएगा, जो बहुत लोगों का, क्योंकि मैं गुजरात में सौराष्ट्र में हूँ, 11 लाख कैंसर राजकोट कैंसर सोसाइटी में रजिस्टर्ड है। अहमदाबाद में गुजरात कैंसर सोसाइटी के 23 लाख कैंसर रजिस्टर्ड है। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई में है, बीकानेर में है, हैदराबाद का आपका है। करोड़ ऑफ कैंसर केस क्योर नहीं कर पाना और डिस्कशन करते रहना, तो बजाय आयुर्वेद हमको जो बताता है कि आप अपनी लाइन सोचिए, अपनी लकीर खींचिए, अपना डायग्नोसिस करिए। और ये डॉक्टर साहब ने जो बताया कि भाई व्याधि बल विरोधित्व, व्याधि जिसमें पंचगव्य आता है, डॉक्टर साहब ने भी कहा क्योरिंग करना है। शमन और शोधन दोनों हमारे चिकित्सा में है। पंचगव्य का जैसे दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, वो ब्रहण करने वाले हैं, तर्पण करने वाले हैं, पूरण करने वाले हैं। और जो गौमूत्र और गोमय स्वरस है, वो लेखन करने वाले हैं, क्षरण करने वाले हैं। एक साथ शोधन और समन दोनों प्रॉपर्टी जिसमें है, ऐसा पंचगव्य है। तो सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है बॉडी का, फिजियोलॉजी का, वो अपने आप तय कर लेगा। इसलिए पंचगव्य मिरेकल क्यों लगता है, अभी 25 साल के बाद लोग बोलने लगेंगे कि ऐसे यूनिक कंपोनेंट हमारे पास है कि जो शोधन भी कर सकता है, वही समन कर सकता है, वही तर्पण कर सकता है, वही ब्रहण कर सकता है। तो बॉडी को ऐसी आवश्यकता है, उसके ऊपर कुछ सोचने का प्लान करना चाहिए। Thank you, sir. We have a few questions related to the same topic, which stems from how nowadays cows are being given hormonal treatment, or rather even being inbreeded. So how can we differentiate between a desi cow and a breeded one? And if suggested by their other physicians to not consume milk because of the hormonal effect of the milk derived from cows, how do we deal with it? This is very interesting because many of us are already, like Dr. Supreet is in front of us, is having a center for Deshi cows. Deshi cows are totally different. They are very robust. They are very active. You just can't touch it. If you touch it, immediately it vibrates its body. That is the first and foremost sign of a Deshi cow. If you touch a HF or a Jersey, it won't have much. Just it will stay without having much movements. So that is the touch itself is totally different. Then there is a hump in the Deshi cows, whether it is male or female. The third one is the lower back is full bend. In Deshi cow, it is bent totally. If you have a figure, I could have shown it. But in other cows, see that picture, the back is full bend. But in HF or in Jersey, it is straight. And the tail will be long in Deshi cows, and the ears are very active. A few months back, we started one Goshala with Dr. Praveen Saralaji. Then we went for collecting Deshi cows of Malenad Gidda.
One person showed me one cow. It is purely Deshi. I wanted Malenadu Gitta cow, and he said this is pure 100% since 3 generations, 4 generations we are having. And then I took a video of that. And then I sent it to some experts in identifying the Deshi cows. Then he said, just by the movement of earlobe and the color of earlobe, he said, this cow has a mixture of Sindhi cows. Of course, Sindhi also Deshi cow, as in Gujarat, Sindh, after the Gujarat it is Sindh. Sindhi mixes was there. I was surprised, how you told this? He is capable to identify even the inbreeds of Indian cows. The Sindhi cows earlobe movement, ear movement is very fast. In Malenadu Gitta it is slower and the color is bit reddish inside. So even in Indian breeds there are color differences of the Deshi cows. I was talking to Dr. Krishnamurthy few months back. He said basically there are 5 breeds of Indian origin. One is Kankraj, second one is Gir, third one is Malenadu Gitta, and the fourth one is Ongol, and another one, fifth is there. Total 5 varieties are there. Now in India we have 53 varieties remaining. These 53 are originated from these 5 basic breeds. So this is about the Swadeshi breeds of Indian cows. And then the other part of the question is the hormone therapy. It is totally unagreeable. The medicines taken with the hormone treated milk is totally very dangerous to health. Yesterday also I had one patient with polycystic ovarian disease. And that patient was just 20 years and the weight was 62 kgs. I just thought, what is the diet? The food is always chicken, always cold milk, cold coffee, this type of foods. So what happens to the body? You will lose your Vyadhyutpadaka Pratibandhakatva, the genetic, what Satyanarayana was telling, the genetic capability of a person to withstand, to prevent the disease, you will lose finally. So the food, the environment are all contributing factors in disease management, development actually. So returning back to the Deshi cows, the Deshi breeds, even in treatment, living with the cows is a very popular approach in Western countries. Living with nature, living with plants, all are contributing factors for the holistic management of any disease. So in Panchagavya, we have very good combination of, as our Professor Jani was telling, very good combination of all the Shadvida Upakramas. Shadvida Upakrama is the concept behind every treatment. Whenever you go for excessive snehana, then you have to think of little bit of rukshana also. When you go excessive for stambhana, then you have to think of svedana also. So this type of approach has no just single medicine. It is a insightful approach of a physician is essential in Ayurveda. Ultimately, that is essential. Shadvidopakrama. When Shadvidopakrama cannot be understood properly, then Charaka told Dvidopakrama. It's not. So this approach is possible when you are with our nature, when you are with your own products, when you are with your own insightful treatment, it is possible. So going back to the nature is the best answer. Of course, it is not possible for every people living in cities also. At least our soch can be changed. With this, some ideas I give to Dr. Harikrishna Parnada is having a very good pharmacy setup also. Please, sir. ಪಂಚಗವ್ಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಾನು ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅವರಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಘೃತಗಳು ಲಾಸ್ ಮೆಮೊರಿ, ಈಗ
ಮರೆತು ಹೋಗುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಝಿಮರ್ಸ್, ಅದು ಡಿಮೆನ್ಷನ್, ಅಲ್ಝಿಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಘೃತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿಲಿ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೆನೆಂಟಾಯಿನ್ ಅಥವಾ ಇದು ಫಿನಬಾರ್ಬಿಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಚಗವ್ಯ ಘೃತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಡಾಟಾಗಳು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರವಾದಂಥ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಇಂಥ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಝಿಮರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು. ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನಂಥ ಕೆಲವು ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿಗಳಿದ್ದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇವಲ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಗುಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. Thank you, sir. We have one last question, sir, in connection to what you are just explaining. Dr. Aparna asks, can Panchagavya Prashana be done on a daily basis, especially because Gomutra is considered as Ushna and Ruksha? So how, if it can be, how it can be consumed on a daily basis? And she also asks whether Panchagavyas are Apatarpana and Panchamritas are Santarpana in nature. पंचामृत प्राशन तो डेली कर सकते हैं, लेकिन पंचगव्य प्राशन डेली नहीं कर सकते। पंचगव्य से मेडिसिन, आप उसको एक एक गव्य का उपयोग करना है, जैसी नेसेसिटी है, जैसी अवस्था है उस प्रकार से करना है। गौमूत्र भी डेली लेने का कोई जरूरत नहीं। बहुत बड़े कन्फ्यूजन्स इस फील्ड में बढ़ गए। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, लोगों को गौमूत्र और गौमूत्र अर्क के बारे में भी मालूम नहीं कि दो अलग है। हमारे जो क्लासिक्स है बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, खास करके चरक, तो उसमें कहीं गौमूत्र अर्क का उल्लेख ही नहीं है। गौमूत्र का हमने बहुत यूज किया है, शोधन, मारण, रसशास्त्र में तो गौमूत्र का बिना चलेगा नहीं, लेकिन गौमूत्र का वर्णन है चरक संहिता में, लेकिन गौमूत्र अर्क का वर्णन नहीं है। 12वीं सदी के बाद फिर जब टिंचर हम बनाने लगे उसके बाद इसका डेवलप, तो और गौमूत्र अर्क मेडिसिन बन जाएगा। गौमूत्र फ्रेश गौमूत्र अगर लेना है, क्योंकि गौमूत्र की सेल्फ लाइफ है ½ आवर ओनली, उसके बाद तो फिर ऑक्सीडेशन होने लगेगा और फॉर्मलिन डेवलप होगा, उसमें दुर्गंध होगी, गर्म होगा, पित्त बढ़ाएगा। गौमूत्र उष्ण तो बताया ही है, क्षारवान, वात भी बढ़ाएगा। तो गौमूत्र ताजा आप ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में अगर लेना है तो, ताजा गौमूत्र, और नहीं तो फिर गौमूत्र अर्क तो डेली लेने का चीज ही नहीं है। तो पंचगव्य भी डेली लेने का चीज नहीं है, वो मेडिसिन है। पंचगव्य कभी कभी उत्तम कार्यों के समय, या जब जब जैसे पंचगव्य आपको मालूम होगा कि कभी टॉक्सिन्स आ जाता है बॉडी में, खास करके भागवत में जो रेफरेंस आपको मालूम होगा, जब पूतना ने कृष्ण को स्तनपान के बहाने पॉइजन दिया, तो सबसे पहले यशोदा माँ कहाँ भागी जब पता चला कि स्तनपान करते करते कृष्ण के पेट में जहर गया है? तो तुरंत गौशाला में गई, 5 गव्य को मिश्र किया और पिलाया, तो तुरंत वॉमिटिंग हो गया। तो गैस्ट्रिक पूरा उसमें से हेमेसिस करवा के पंचगव्य को अंदर, जहर को अंदर जाना ही नहीं दिया। तो वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी है। लेकिन पंचगव्य प्राशन वो जब आप करते हैं कोई यज्ञ कार्य, तो भी आप प्राशन करना पड़ता है, वो एक रिचुअल्स में है, परंपरा में है। तो क्योंकि आपका बॉडी में कोई टॉक्सिन्स न लग जाए, या है तो भी थोड़ा निकल जाए, तो ऐसे यज्ञ कार्य के समय या पवित्र कार्य के समय आप पंचगव्य प्राशन कर सकते हैं। डेली कंजप्शन की चीज नहीं है। दूध आप डेली लेना चाहिए, जैसे अभ्यंगम आचरित नित्यम, तो दिनांते पिबेत दुग्धम, तो कुछ दूध डेली लेने की चीज है। घृत है वो समन भी है और ब्रहण भी है, तो जब डेली जो हमको समन औषध चाहिए उस मात्रा में वो समन है, और जब हमको ग्रो करना है तो ब्रहण चीज, जब घी लेना है तो मिठाई लेनी है, तो घृत ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। दही हर दिन नहीं ले सकते,
शाम को नक्तम दधी न भोजेत, दही पंचगव्य तो भी शाम को नहीं ले सकते, बसंत ऋतु में नहीं ले सकते। अगर लेना भी है तो हर ऋतु का प्रोटोकॉल बताया कि कौन सी ऋतु में दही कैसे खाएंगे। तो गौमूत्र और गोमय सुरस का तो लेने का कहीं ज्यादा उल्लेख ही नहीं है। 3-4 रेफरेंस है डायरेक्ट गोमय सुरस लेने का, तो वो व्याधि अवस्था में है, वो स्वास्थ्य अवस्था में नहीं है। तो कभी आपको जरा डीप समझना पड़ेगा। हमारा एक अभी पूजनीय संचालक जी के हाथों से पंचगव्य चिकित्सा विश्वकोश हमने बनाया है। बहुत सालों की मेहनत के बाद बहुत से हमारे स्कॉलर्स उसमें लगे थे। तो आयुर्वेद के 29 ग्रंथ लेके, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, उन सबको लेके जहाँ जहाँ एक गव्य, द्विगव्य, त्रिगव्य, चतुर्गव्य, पंचगव्य चिकित्सा में है, शोधन में है, मारण में है, अनुपान में है, जहाँ जहाँ ऐसे चैप्टर ही कि अनुपान में कहाँ पंचगव्य है, शोधन में कहाँ पंचगव्य है, मारण में कहाँ पंचगव्य है, हाँ? तो सहपान में कहाँ है, ऐसे पूरा क्लासिफाई करके 2 पार्ट में पंचगव्य चिकित्सा विश्वकोश। 5000 साल के जितने भी पुराने ग्रंथ है आयुर्वेद के, आप कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक बार आपके पास पंचगव्य चिकित्सा विश्वकोश है तो आपको सब मिल जाएगा। तो वैसा वो हमारा पुनरुत्थान विद्यापीठ है अहमदाबाद में, जो संघ के विचार के लोगों का है। अभी ज्ञान सागर ग्रंथ का विमोचन हुआ अहमदाबाद में। पुनरुत्थान विद्यापीठ ऑनलाइन अवेलेबल अभी नहीं है, हो जाएगा, लेकिन फिजिकल बुक पार्ट 1 पार्ट 2 पंचगव्य चिकित्सा विश्वकोश, तो उसमें आप जरा पढ़िए, देखिए कि भारत ने कितना दिया है। 4500 फॉर्मुलेशन पंचगव्य के मिलते हैं, गव्य के 4500 फॉर्मुलेशन, हमको पता ही नहीं। तो ठीक है, मुझे तो ये। और दूसरा एक पॉइंट ऑफ एडिशन जो पूछा था ना, तो भारत का जो एनिमल जीनोम रिसोर्सेज सेंटर है करनाल का, वो आपको कौन सी गाय कितना परसेंटेज बॉस्टोरस है या बॉसिंडिकस है, वो किसान अगर रिक्वेस्ट करता है तो उनके बेंगलुरु में भी उनका सेंटर है, मतलब पूरे जोन में, पूरे भारत के 5 जोन में उसके सेंटर्स है। वो आपको आके वहाँ का लैब का साइंटिस्ट आएगा और ये गाय जर्सी है, मतलब यूरोपियन ब्रीड की है या इंडियन देसी ब्रीड की है, वो आपका ब्लड सैंपल लेके बताएगा। और वो फ्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो फ्री करती है, एटलीस्ट 10 काउस का सैंपल लेके। तो डीएनए से पता चलेगा कि ये जर्स मतलब A2 है या A1 मिल्क देने वाली है, बॉस्टोरस और बॉसिंडिकस। फिजिकल फीचर तो आपको बताया कि पूंछ लंबी होती है, कभी उसका फिसिस जर्सी का जो या यूरोपियन का हुआ है तो उसका जो गोबर है कभी पक्का हुआ नहीं रहेगा, फैल जाएगा, बदबू आती है। गौमूत्र में तो इतनी बदबू आती है कि उधर खड़ा नहीं रह सकते। दूध सिर्फ उसका क्वांटिटी ज़्यादा है, बस एक ही उसका है, जो उस क्वांटिटी में हम फंस गए। जब हम क्वालिटी को छोड़ने लगे, जब हम कहते थे 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ तो गुरु गोविंद सिंह कहलाऊँ, लेकिन ये कहते कि 30 लीटर दूध, अब वो जहर है तो इतना ज़्यादा जहर क्यों पिलाना। तो भारत सरकार का एक सिस्टम है, उससे आप वो टैली करवा सकते हैं, डीएनए चेकिंग मैपिंग करवा के। तो आपकी गाय है, अगर 10 गाय है तो वो फ्री में आके कर देगा। दूध का भी एनालिसिस हो सकता है, लेकिन ब्लड से एग्जैक्टली कितना परसेंट। और भारत में बाय एंड लार्ज जितने प्राणी हैं वो A2 वाले हैं। भारत सरकार ने मतलब 50 साल 60 साल पहले डेयरी डेवलपमेंट के नाम से हमने वहाँ से सीमेंट मंगवाया, हमने वहाँ से सांड मंगवाए, और हमारी गाय को क्रॉस ब्रीड करते करते ख़त्म कर दिया। तो इनब्रीडिंग तो हुआ और बहुत खतरनाक क्रॉस ब्रीडिंग हुआ है, तो उसको रोकना, यानी यही काम कि हमारी देसी गाय को बढ़ावा देना, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए, तभी हम आयुर्वेद को बचा पाएंगे। गव्य के बिना आयुर्वेद टिक नहीं पाएगा। तो हमारी सबकी यंगस्टर्स आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसमें भी कुछ काम करिए। और जैसे चरक संहिता में पढ़ा है कैसी मेडिकल स्कूल होनी चाहिए, विमान स्थान में जो चैप्टर है उसमें बिना गौशाला आप आयुर्वेद सेंटर चला ही नहीं सकते। और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि कल एक ऐसा सेंटर भी शुरू होने जा रहा है। ಸ್ಮಾಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಪಂಚಗವ್ಯ ಸಂತರ್ಪಣ ಮಾಡ್ತದ ಅಪತರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನೀವು ಈ ಪಂಚಗವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ 5 ದ್ರವ್ಯಗಳ ರೇಷಿಯೋದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಪಂಚಗವ್ಯ ಅಂದರೆ 5 ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟಿನ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಗೋಮೂತ್ರದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೋಘೃತದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಸಂತರ್ಪಣ ಆಗ್ತದ, ಪದಾರ್ಪಣ ಆಗ್ತದ, ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆಗ್ತದ, ಲೇಖನ ಆಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗವ್ಯದ ಉಪಯೋಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂಚಗವ್ಯ ಘೃತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಗೋಮೂತ್ರದ ಉಪಯೋಗ, ಅದು ಮತ್ತು ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಗೋಮೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನಂತೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಯುಟರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಂಥ ಲೇಡಿ, ಅಬೌಟ್ 65 years ಲೇಡಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ 3 years ಅವರದ್ದು ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಈಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ಕೇಸುಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಂಚಗವ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಆಗ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ರಸಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಸಾಯನವನ್ನು ಕೊಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ 3 ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅವನಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ, ಅಪತರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಸಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ. ದೇಶಿ ಗೋವಿನ ಪಂಚಗವ್ಯ, ಫ್ರೆಶ್ ಪಂಚಗವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಹಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೂಮಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಆ ಹಸುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೌಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪಂಚಕರ್ಮ ಸೆಂಟರ್ನ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಏನು ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗೋಶಾಲೆ. ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಬಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಡ್, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಅನೇಕ ಸಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅದು ಅನುಭವ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಅವನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ರಿಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ, ಆ ರೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಮೆಡಿಕೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋ ಪೆನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೇನು ಔಷಧಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೇಷಂಟ್ನ ದೋಷ ದೂಷ್ಯಗಳು ಏನು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾಗ್ತೇವೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆ ಗೋಮಾತೆಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ
ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡೂರು ಅಂತ, ಶ್ರೀಪೂರ್ಣ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಅಂತ, ಕಡಬ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಹತ್ತಿರ. ನಮಸ್ತೆ. Thank you, sir. Now over to Dr. Trishal Rao, National Co-Convener, Jignasa. Dignitaries on the dais, off the dais, respected delegates, it was our pleasure to listen to such big scholars. Those are practicing Panchagavya and other aspects of Ayurveda since many years. So due to time restrictions, we couldn't answer to other questions. But delegates, those who have got any doubt, you can personally come to our speakers and you can clear your doubts. So it's now time to felicitate our beloved speakers, those who have spent their time clearing our doubts. Firstly, we would like to honor Dr. Hitesh Jani sir with a token of love. I request Dr. Mohan, Udupi City Committee member, to come and honor Dr. Hitesh Jani sir. Thank you, sir. Next, I would like to request Dr. Ritik to honor Dr. Satyanarayan Bachcha, Principal, Munila Ayurveda College. Next, I would like to request Dr. Sharvari to honor Dr. Suresh Kudur sir, Sri Purna Ayurveda Hospital, Kadaba. Next, I request Kiran, Social Media Committee in charge, Jignasa, to honor Dr. Hari Krishna Panajay sir. Next, I request Tejas to honor Dr. Jeddu Ganapati Bhatt sir. Next, I request Dr. Arbas to honor Dr. Sandeep sir, Principal, Sharda Ayurveda College. Once again, a hearty thanks to all the panel discussion members. Now, I request all the delegates to go for lunch and assemble back in the auditorium by 2 o'clock. We'll be continuing with our third session. Dr. Hitesh Jani sir will be talking on Garbha Samskar. Kindly be on time at 2 o'clock. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು
ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
अमृतकलशहस्ताय सर्वामेनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय विष्णवे स्वाहा. Previous one. Previous one. So then let us have blessings of all Gurus. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. With the blessings of all Purva Vidyas and Apurva Vidyas. Purva Vidyas are older Vidyas and Apurva Vidyas who are presently practicing Apurva Shrestha Vidyas. With their, it may, we don't think only older, our younger generation Vidyas also, we should have with their blessings. I will start my presentation. Next please. So, Tattva and Prayoga of Ayurveda in Arbuda. Next please. So, next, Arbuda, a new growth. Arbuda means new growth. It may be benign or malignant. Next please. So, a cancer growth, it is how you diagnose, it is hard in consistency. Any place, it produces pain, bleeding, heaviness, anemia and general debility, produces different signs and symptoms according to site of the growth. Two things are there. One about specific to growth. Second one is where it occurs. Like that also different symptomatology presentation will be there in the patients. So another feature is of a growth is malignant growth is metastasis, spreading locally through bloodstream or lymphatic spread. These are the main features of any malignant growth. Next please. So diagnosis. A diagnostic thing is biopsy. In biopsy, definitely you can diagnose is it a malignant or benign growth. This is a diagnostic thing. Next, so treatment aspect is surgery, chemotherapy, radiotherapy, internal medicines, maybe hormonal, analgesic, steroids and palliative care. Next please. These are all modern advanced technological treatment. This presentation is there, this treatment is there according to Western science. In Ayurveda, how we should approach this condition. In Ayurveda, a basic siddhanta, what Charaka says, Hetu Linga Aushadam Jnanam Swasthatara Parayanam. Patient comes to us with the signs and symptoms, Linga. We have to analyze what is its Hetu. To that Hetu, we have to give Aushada. This Trisutra of Ayurveda, Trisutram Shashwatam Punyam Ubudheyam Pitamaha. With this Trisutra, we should analyze everything. Here, that means he says, a karya karana siddhanta. That means a presentation of signs and symptoms is karya. It has some cause. So cause and effect siddhanta. So in here, in which cause we have to, on which way we have to analyze a cause. Even Western science also based on same concept. There is no difference in that concept. Cause and effect siddhanta. In Ayurveda, how we should analyze, what is the logic of cause and effect siddhanta. There is a difference. In the Western science, logic of cause and effect analysis is biochemical activity of the cell. Deranged biochemical activity is pathology. It is corrected by giving some molecular drug. It acts on target cells. It will be corrected. This is how Western science developed. In Ayurveda, this cause and effect analysis is done on the basis of logic of Tridosha Siddhanta. Next please. What Sushruta says, Nasti Rogo Vinadosha, Yasma Tattva Vichakshana, Anuktam Doshanam Lingi Adhyupatiri. There is no roga without dosha. There is no aroga also without dosha. When tridoshas are in vishamavastha, there will be roga. When doshas are in samavastha, there will be roga. This has two meaning of same shloka. Anuktamapi, even it is not told, you have to see dosha linga in given vyadhi, then give dosha vyadhi viparita chikitsa. Next please. So, how you will understand a dosha symptoms in any disease? If shula is there, that means vata is involved. Or shosha will be there. When avarana dosha is there, vata there will be shula. When dhatukshaya is there, there will be shosha will be there. When pitta involved, there will be daha, maka, kotha, raktasrava will be there. And kapha is there, there will be shotha, shitata, shaityata. These are signs and symptoms will be there. So next please. So that is why Charaka says, Hetu Sthana Vishesha Bhavya Roga Vishesha. One is Hetu Vishesha, and one is Sthana Vishesha. According to Sthana Vishesha, there will be different signs and symptoms. According to Hetu Vishesha, there will be signs and symptoms. In context of Arbuda, Sthana Vishesha is next piece. Gatra Pradesh Vachidev Dosha. In
Prakupita dosha gets Sansamshaya, anywhere in the body you can get Arbuda. Sthana Vishesha, there is no specific, in this sthana you get this disease, not. Arbuda can happen anywhere in the body. Katra Pradeshe, Kvachideva dosha. Next please. So, next please. And gulma, when it occurs in koshta, we call it as gulma, in a growth. When it occurs in rakta, it presents as a pandu. A sannipataja pandu mimics the signs and symptoms of a leukemia. This presentation will be there. Next. Then hetu vishesha, that is sthana vishesha. Hetu vishesha, prakupita dosha gets sansamshaya at mamsam abhipradushya, mamsam abhipradushya. That does mamsa avarana vata, getting different types of arbudas. Next please. Next. So that is why in hetu vishesha vata prakopa will be there. Always without vata prakopa, sanyoga vibhaga of annus will not happen. Sanyoga vibhaga of annus, everything is done in the body is done by vata dosha. How vata dosha prakopa occurs, that we have to analyze. That is why we have to see yatha dushtena doshena. Here yatha vata dushti occurs. Next please. Vata dushti can here hetu vishesha is mamsa avarana vata. Next please. Mamsa avriti kathina shopa yuvarna pidakaha. Kathina shopa, anywhere kathina hard shopa in the body occurs, it is due to mamsa avarana vata prakopa. Here vata prakopa, how it occurs. This concept we have to analyze. Next please. Vata prakopa can happen dhatukshaya kopo margasya avaranena cha. Either by dhatukshaya vata prakopa can happen, by margavarana vata prakopa can happen, then cha. Cha means what? And means dhatukshaya due to margavarana. Here, next please. Here, by ruksha shita viruddhahar viharas, dhatukshaya occurs, vata prakopa prakopita gets sansamshaya, you get a disease. This is a generalized, not for arbuda, any disease. Next please. By margavarana. Margavarana by what? Kapha, pitta, rakta, mamsa, meda, asti, majja, shukra, vit, anna, mutra. Here, very interesting feature is, a kapha, pitta, artha, vata vyadhi will be sarvadehika vyadhi, just like madhumeha. Do you think madhumeha occurs one hand, madhumeha second hand, no madhumeha? It is a sarvadehika vyadhi. It is in molecular level. A kapha, pitta, avarana occurs, pathogenesis occurs in molecular level. Whereas, rakta, mamsa, meda, asti, majja, shukra, it occurs in cellular level. Whereas, vit, anna, mutra occurs macro level. 3 levels of avarana can happen. One is molecular level, kapha, pitta, avarana. And one is tissue level, cellular level. Third one is macro level. Like this, dosha prakopa can happen. In the context of arbuda, it occurs mamsa avarana. In context of runashota, it occurs due to rakta avarana. Next please. Like this prakopita gets sansamshaya. Anywhere in the body you can get different diseases. Next please. Then comes the cha. Cha means initially avarana symptoms are more, dhatukshaya symptoms are less. As time passed on, next please. Next. Avarana symptoms slowly comes down, dhatukshaya symptoms increases. For example, a madhumehi patient or a cancer patient. Initially avarana symptoms are more, that is no dhatukshaya. As time passed on, he become cachextic. Completely. Why it occurs? Because of that avarana. It can happen in the body. In madhumeha, initially he will be very heavy. If you don't treat him, what happens? Slowly he will become degenerative. That is avarana dhatukshaya. So, or a pakshagata patient, one-sided complete weakness. Only weakness is there. Avarana vata prakopa. If you don't treat him after 6 months, he comes with all wasting of the muscles. Why it happens? Because of that avarana. Avarana dhatukshaya. So, when it occurs like this, patient may come in any stage. He may come in 90% avarana, 10% dhatukshaya, 50% avarana, 50% dhatukshaya, 10% avarana, 90% dhatukshaya. Can you give same treatment? That is why Charaka says, avastha vashena chikitsam kuriyat. If he comes in avaranamastha, you do karshana chikitsa. If he comes in dhatukshayastha, you give brahmana chikitsa. I hope you understood. This is the basic concept. So, next please. Then this is a mathematical equation. There comes the question, how you will diagnose, is it pitta or not? That is Daha Trishna Shulam Brahma. When pitta involved, Daha Trishna Shulam Brahma. Shula is what symptom, other pitta symptoms. When
Kapha avarana. Kapha is, Shula is what symptom? Shaitya Shota Gurutva and these comes are Kapha symptoms will be there. When Rakta avarana is there, Daha, Arti, Tvak Mamsa Antarajabhusha, in between Tvaka and Mamsa, Arti will be there. Ragha, redness, Shvayatu Jayante Mandala. Mandala and Shvayatu. It can happen all over body. It can happen anywhere in the body, one place of the body. That is a Mandalani Shvayatu, he is told. Here, one question arises, Arti in between Tvaka and Mamsa. What do you mean by that? Do you think any patient comes to you and tell, sir, my pain is in between skin and Mamsa? Do you think tell like that? What is that? That is why, next please, Sushruta says instead of that, Sparsha Dveshaha. Sparsha Dvesha means tenderness. So, these 5 sign symptoms, pain, swelling, tenderness, and redness, these 5 signs and symptoms of inflammation according to Western science, it is occurs due to Raktavarana Vata Prakopa. So, Mamsam Asriksha. When Mamsavarana occurs, next please, there will be Katina Shopa. Here, I don't want to explain this. So, next please, time is there. So, to happen this, there should be Rakta Dushti happen. A Raktavarana cannot happen by itself. First, there should be Rakta Dushti or Rakta Sroto Dushti should occur. This Dushita Rakta can block movement of Vayu. Then Raktavarana Vata Prakopa occurs. So, Rakta is a Dhatu, Vayu is a Dosha. Dosha is Shakti Surupi Dravya. Its Dhatus are Shakti Yukta Dravya. Its Shakti is given by Doshas. How a Dhatu can block Vayu, Vata Dosha? Is it possible? Like that, it cannot possible. By Dosha Dushita Rakta can do the block of Vayu. Otherwise, it cannot happen. So that is why in the Rakta Dushti Karanas, if you see first line is Pitta Swarup Rakta Dushti Karana, second and third is Kapha Swarup Rakta Dushti Karana, fourth and fifth is Vata Swarup Rakta Dushti Karana. When the Pitta Swarup Rakta Dushti Raktavarana Vata leads to any disease, it will have Pitta Vata symptom. Kapha Swarup Rakta Dushti Raktavarana Vata will have Kapha Vata Lakshana. Vata Swarup Rakta Dushti Rakta Avarta Vata, that will have Kevala Vata Lakshana will be there. Next please. Next. Next. There are many diseases. Next please. Another cause for Rakta Dushti is Krimi, infections. One is Abhigata, second one is Ahara Vihara, third one is infections. These are the 3 causes for Rakta Dushti. Raktavarana Vata Prakopa, you will have Runa Shota anywhere in the body. Next please. Tvakmam, Sirasna, Sandhyasti, Marma, Koshta, anywhere it happen. If it is by Abhigata, Shalijikisa, Dosha Dushti, Dosha Apachan, if a Krimi is, Krimi Chikisa should be done. Krimi Chikisa is Apadarpana, Nidana Parivajana and Prakriti Vighata means what? Prakriti Vighata means killing of the Krimi. So before advancement of microscope, it is done by Anumana Pramana. After advancement of microscope, this is done by Anumana Pramana. In Western science, they have developed many antibiotics to kill the Krimi. In Ayurveda, there are many drugs are there which can kill the Krimi. Surasa, Rigana, Nimba, Rigana, Arkvada, Rigana, Gomutra. Gomutra is the best Krimi. We are using in many gangrenous patients. It's one of the wonderful Krimigna Dravya. And Ksharodaka. I think Ksharodaka you are using daily. All of you using or not? Ksharodaka. You are not using. You are daily using a soap. What is soap? Soap is Ksharodaka. If you tell in English it is soap, if you tell in Ayurveda, in Sanskrita it is Ayurveda. If you tell Ravi Shankar is Ayurveda, San Shankar allopathy. Is it like that? Dravya is the same. Okay. So don't think a Ksharodaka is a killing of the Krim. Next please, next. So coming to, then Raktavarana is, you will have Ranashota. When Mamsavarana, we will be Arbuda. Next please. So as it is clear now that, next please. So Hetu Vishesh is, by Vata, Pitta, Kapha, Raktena, Mamsena, Medasacha, Tajayate, Tasya, Lakshanani, Granthe, Samanani, Sada Bhavanti. Like this Dushita Mamsa, do the Mamsa Avarana, it will happen anywhere in the body. You get Mamsa or Vata Khatina, Shopa will occur. Next please. Mamsa and Asrik, both will be involved. Any Arbuda, basically at first Mamsa Dushti should occur by different doshas. Like that, Rakta Dushti by different doshas, then the Raktavarana Vata like occurs.
Like that, first mamsa dushti should occur. By ahara viharas, dosha swarupa mamsa dushti should occur. This dushita mamsa do avarana of vayu, that prakriti vayu does sanyoga vibhaga of haramanus with the sthanika shleshma dosha to produce deranged akriti. Why I am saying, you see, here on basic question is there. Sanchaya, prakopa, prasara, sansamshaya occurs. Where sansamshaya occurs? Yatra khavaigunya vyadistatropa jayati. Right? Yatra khavaigunya. Who has done this khavaigunya? Here you are saying dosha is coming like this, then already there should be khavaigunya. Who has done it? अब दोष आने के वक्त उधर कुर्सी रेडी करना चाहिए, वो कौन कुर्सी रेडी करता है? Who has done khavaigunya? Dosha prakopa occurs, prasara occurs, coming here, already khavaigunya. Who has done? Dosha coming here, who has done it? I hope you understood my question. Who has done it? Without dosha nothing is possible, but who has, which dosha? Sthanika dosha, how? You are saying by ahara vihara, dosha prakopa occurs, prasara occurs, coming here. I hope you understood my question. So like this, you see, according to, there are two types of nidhanas there. One is vyadhi pratyanika and one is dosha pratyanika nidhana. Dosha pratyanika nidhana does dosha prakopa prasara, whereas vyadhi pratyanika nidhana does irritation of dosha, prakopa of dosha in that particular sthana where vyadhi should occur, khavaigunya. Dosha only by ahara vyadhi pratyanika nidhana. So every disease has vyadhi pratyanika nidhana and dosha pratyanika nidhana. That according to khavaigunya, you will have atma lakshana of that particular vyadhi. So every vyadhi has a atma lakshana. So jwara is atma lakshana is santapa. That is a pitta is khavaigunya dosha. In atisara also pitta is khavaigunya dosha. Whereas in the pitta jaliyamsha increases, in the jwara agneyamsha increases. Like that, for every disease there will be khavaigunya dosha. In the context of arbuda, khavaigunya dosha is kapha, shleshma dosha. What is work of shleshma? Vayu does movement, pitta does pachana, whereas kapha, shleshma does shlesh alingane, formation of the atoms are attached together. Akriti formation done by kapha dosha. When ahara viharas dosha, kapha dosha is involved, akriti variation occurs. That is how arbuda occurs. Granthi, galaganda, arbuda is our shleshmaja vyadis. Shleshma is khavaigunya dosha. So akriti, deranged akriti produces to get arbuda. In the benign growth there is hyperplasia, whereas in the malignant growth dysplasia, deranged growth. Variation in akriti will be there. One is hyperplasia, one is both are deranged. One is hyperplasia and one is dysplasia. Next please. Next. So diagnosis, how to diagnose? Next please. So diagnosis prognosis in ekadoshaja and medaja arbuda is sadhya, whereas raktaja and mamsa arbuda is asadhya. Even ekadoshaja arbuda, when it becomes fixed, a transformation of benign growth into malignant, it becomes asadhya. Adhya arbuda, recurrence, once you remove it again arbuda forms, then it becomes asadhya. Dvira arbuda, that is metastatic growth. When the growth is spread somewhere else, one arbuda is another arbuda, then dvira arbuda, that also becomes asadhya. When severe pandu is there, enema is there, or marma jota, even a benign growth occurs in the marma sthana, it becomes asadhya. So even ekadoshaja, then it becomes asadhya. Next please. So diagnosis by clinical examination, darshana, prashna, sparshana and prashna, provision diagnosis you get, then you do the confirmatory test is using a modern diagnostic technique, USG, CT, MRI, biopsy, all these things. You see, there are Trivida Bodha Charaka set. One is Samuthana Vishesha, second one is Adhisthana Vishesha, third one is Vikara Prakriti. In the Vikara Prakriti, which dosha involved you have to see, but Samuthana Vishesha, how dosha prakopa has happened, Adhisthana Vishesha, Yatra Sthana Samshaya. These three things should be analyzed. Even today's world,
today in 21st century, you can utilize modern diagnostic techniques. MRI, CT scanning, all these things, you will understand Adhisthana Vishesha, where it happens. It can be understood. Samuthana Vishesha, by biopsy, you can understand is it benign or malignant. Sanyoga Vibhaga is it deranged or increased. These things can be diagnosed. Hyperplasia, dysplasia. Both Samuthana Vishesha, what I am saying, modern diagnostic technique should be understood according to Ayurveda concept. Utilize modern diagnostic technique, but understood according to Ayurveda concept. Then utilize in your practice. Next, please. Next. This is Trividha Bodha. You will explain. Next, please. So, Arbuda Chikitsa, Sushruta said, Shastrakaram is first line of treatment. Kshara Agni, Beshaja. In Gunma also same line is treatment is told. Next, please. So, then he has here, Granthi Shwameshu Bishakvida Shopakriyam Vistarashok. First he says to do Shopakriya. Shopakriya in Shashiravakraman's first 11 Upakramas he says Apatarpana, Alepa, all these things to make it Paka. But Paka will not occur. Why? In Arbuda, it is a Shleshma Pradhana Vyadhi. That is why Paka will not occur at any cost. If anywhere it becomes Paka, then you do incision and drainage and remove it. Otherwise not possible. Next, please. So, if Paka occurs, then do Vedana Karma. This is for Ekadoshaja, Medaja, Arshas. In Sannipata, Raktar, Mamsar Buddha, he says it is Hasadya. That is my treatment is not told. But even though it is Hasadya, he says according by seeing Dosha Lakshana in given Vyadhi, give Dosha Vyadhi, Viparita, Chikitsa. Next, please. Previous one. Back. Alle back hoಗ್ಲಿಕ್ಕೆ let's start. Okay. Open. Okay. Go for next. Then for Kshara Karma, Kshara is two types. One is internal Paniya Kshara and one is Pratisaraniya Kshara. It is burning by alkali externally. Internally, Gomutra is best Kshara. Gomutra itself is a best Kshara. If Gomutra is possible to give, definitely you give daily Gomutra as a Paniya Kshara. It's best. If not possible, you can prepare Gomutra because Gomutra you can preserve in long time. You can utilize it. It's a best. But Agneya Amsha is more in the Gomutra than Gomutra itself. Parthiva Amsha of them will be sedimented. Only Agneya Amsha comes up. According to Dosha Vikalpa, you can utilize it. So, effective and Paniya Kshara. It is just like chemotherapy. You are burning the tissues. Next, please. Then coming to Agni is burning tissue directly with the Agni. With the modern technology, they are doing radiotherapy. Definitely, you are burning the specific treatment. So, Agni Karma is nothing but radiotherapy, burning the tissue directly. Next, please. Beshaja is internal medicine. Here, two types of internal medicine is there. One is to make it Paka. Second one medicine is to reduce the growth, mass to reduce. Two types you can have a treatment. Next, please. So, one is Shopakriya, try to ripen the growth and do. Second one is Rasayana therapy. Here is the second line is a very interesting line of Sushruta in Arbudadhyaya. Rakshet balam chapi narasya nityam tadrakshitam vyadi balam nihanti. If you do rakshana of bala of the person daily by giving rasayana, that rakshita bala itself reduces bala of the vyadhi. Now in Western science, immunotherapy is developing a science. It is nothing but rasayana therapy of Ayurveda. In Arbuda Adhyaya itself, Sushruta has said this therapy. Rakshet balam chapi narasya nityam tadrakshitam vyadhi balam nihanti. Vyadhi balam reduces. Next, please. So, how Rasayana Chikitsa should be done? First, get Deha Shuddhi or at least Koshta Shuddhi. If patient's bala is good, you do Snehapana, Sweda, all these things you do. So, Deha Shuddhi first, then start Rasayana therapy. Or if a patient is weak, you can do just least Koshta Shuddhi by Sadhya Omana and Sadhya Virechana, then you can start the Rasayana therapy. Get Deepta Agni, it's very important. Without getting Deepta Agni, how much amount of Gritas, all these things is useless. Or you can do Shamana Deepana Dravyas, like that also can be done. Next, please. Then he says,
for snehana karma, he says, Mamsala medula bhurishleshmana vishamagneha. Bhurishleshma vyadhi, like arbuda. First, rukshana should be done. Rukshana chikitsa. Next, please. What is rukshana chikitsa? Apatarpanam evam adav sarvam langhanam. Sarva langana means there are how many? 10 types of langanas, sir. What are they? 4 shodhana langas, 6 shamana langanas. What are shodhana langanas? Vamana, Virechana, Nirohabasti and Raktamokshana. Here one query occurs. For doing Vamana, you have to do Snehana. For doing Snehana, he says, do Vamana. Ande bhale, murgi bhale. Should you do first Vamana or first Snehana? This question arises. That is why Avastha Vashena Chikitsam Kuriyat. In that Avastha, if you can give Snehana directly, you can do. If already Rukshana is there. If Rukshana is not there, first do Rukshana by Sadyomana and Sadyo Virechana, get Koshta Shuddhi, do Rukshana. You can buy Shodhana Rukshana also, or Shamana Rukshana. Shamana Rukshana, there are many, Udvartana is there, Takra, Bhojana is there, all these things. How many days you will do? When patient comes in acute state, there is no time. But Sadyomana, Sadyo Virechana you do in a single day or 2 days you can do. In the Rasa Vaisheshik, in the Rasa Shastra, Rasendra Sara Sangraha, he says first drug he starts with the Ichha Bedirasa. Why he has told Ichha Bedirasa? Vapu Shuddhi. Vapu Shuddhi, do get to Vapu Shuddhi, Koshta Shuddhi. He starts with Ichha Bedirasa. In Ruddha Vaidyas in villages, they used to give, as soon as patient comes, immediately they give Ichha Bedirasa to the patient. First day. Get 2 Virechana, 1 Vamana. Get Koshta Shuddhi. Then they start to Aushadhi. Otherwise, Aushadhi will not work, what they say. Because Koshta, Agni Deepti is not there. By getting Sadhyam Hadevara, you get Agni Deepana, then you can start the treatment. All the Ruddha Vaidyas used to practice like that. I don't know, they are not doing it. Next, please. Next. Sasambrambhesh Kartvami Urdha Shatashodhan. When Sasambrambha is the acute state of the disease is there will be Sasambrambha, acute Shodha is there. You do Urdha Shodhana next. Such when acute state is there, already Dosha Lakshana is there. That means already Dosha Uttesha is there. Instead of giving Snehana, all these things, you can do Vamana directly, Vamana and Virechana. That may be Sadhyo Vamana and Sadhya Virechana. Sadhyo Vamana and Virechana not a classical Vamana. Just you get Koshta Shuddhi and Sharira will become, Rukshana will occur immediately. Next, please. Next. So, you see, it's Praya Abusho Shuddhi Krutva Deyam Tadaushadam. This is Rasendra Sara Sangraha, he said. Next, please. But then comes Rasayana Chikitsa. Many Rasayana Chikitsa, Guggulu Rasayana, Ballataka Rasayana, Vacha Rasayana, people are Guggulu Tiktaka Gruta, Mahatikta Gruta, next please, Panchagavya Gruta. And Beshajas, Kanchana Ruglu, Yoga, Chandra Prabha, Vati, all this. Here, what I do is, Guggulu I prepare. I have Desi guy, about 25 cows is there. Usually I tell all my friends, before starting a hospital, you should start a Goshala first. I have started my Goshala first, then started my hospital. So we get Gomutra first. By that we prepare this Guggulus. It's Shuddhi done by Trifala Kashaya, the Shamana Kashaya. What I have seen, if you prepare Guggul Shuddhi by Deshi Gai Gomutra, I use Gomutra. After taking the drug, it digests within 15 minutes. 15 minutes. Within 2 days you get result. Previously I used to use Gomutra of Jersey or mixed breed. Used to get result in 10 days. And whatever Guggul you give, that goes by motion directly. After using this one, Indian cow's Gomutra, doing the Guggulu Shuddhikarana, it's excellent. Within 15 days it digests in the body. And I think Jamnagar there was a thesis I have seen. It was published in a journal. I don't know who has prepared. Sir may be knowing. In 1998 it was published in a journal. He has done a study on it. If Indian cow's Gomutra, it did Guggul Shuddhikarana, it digests within 15 days in the stomach. That gives
result very fast to the patient. This is what it is a published paper is there. So this is what I used to practice. Next please. Then Bhasma Rasaushadhis are there. Next please. So when there is a multiple sign symptoms presents with any malignant all the diseases, what he says, Rasavishesha Susra says, idam eva pradhanam, idam naiti avadharanam nayuktam, chikissayam avastha vidanam hi pradhanam. In chikissa, avastha vidana is important. Even though by dosha, kala, avastha, you have to see with your own intelligence, swayam dhiya, you have to do tarkya, with the logic analysis you have to give a treatment. Without logical analysis, vina tarka ya siddhi, yadrichaya siddhiriti. What you people think that e cancer e maddu, e jwarakke e maddu. Like that don't learn. It is useless. Always you should see in which avastha, in which sthana, in which dosha, which drug should be. Dosha, kala, bala, avastha. According to that, you have to analyze a condition. Then you have to develop a protocol and treatment to each individual patient. That is very important. Next please. So with this analysis, can we develop a protocol for cancer management? Next please. So when patient comes in initial stage, many patient comes to us. First stage they come with, or many of the patient we diagnose ourselves. There is a growth. We do biopsy and it is a malignant. In that stage, what we can do? See, first there is no metastasis. There is no recurrence with the minimal anemia. Sushruta said the first line of treatment is Shastra Karma. Should be done Shastra Karma, if possible, if you can remove the mass completely without any metastasis, definitely it is a cure for the patient. That is why Sushruta said first line of treatment is Shastra Karma. After that you can give the medicines. So next please. When the patient, there is a metastasis with the recurrence, with the anemia, multiple focus of growth, then also many patient comes to us. According to Acharya Sushruta, he said it is asadhya. Still what we can do next please. Do the apatarpana, that is samrambhet urdhva adashodhana. You do urdhva and adashodhana first. Then by sadhyam adevrechana can be done for any patient. Even 100 years of age patient also you can do Sadhyomana. Don't think there is no contraindication for classical Omana, contraindication is there. But Sadhyomana can be done for anybody. Or small babies also you can do. Many of them ask me, how a heart patient, how you are doing Omana? I am asking them, are they not vomiting or not? Vomiting disease occurs or not for him? Does he die? Vomit? No. Like that in Sadhyomana, just you give just a salt water or one glass of Yashtimadafanta is sufficient. You vomit out. That itself is sufficient. You get immediately Agni Deepti occurs. And if Vamana will not occur, if dosha klesha is there, Vamana occurs. Vamana does not occur, you can give Mrudu Virechana, it goes off. So, then you start the Rasayana Chikitsa. Next please. Rasayana Chikitsa, Vata Kuti Praveshika. We usually, Vata Achar Rasayana we give. Gomutra Arka or Gomutra can be given. Panchagavya Grita can be given. Ballataka Rasayana. Usually I use Ballataka Rasayana. A Kafara Rasayana is best is Ballataka Rasayana. Ballataka Kshira Taila. Usually I prepare Kshira Taila. How I do this Balla Kshira Taila? The idea I got from there was a cancer hospital in near Chennai 100 years back. Not now, 100 years back. Cancer Ayurveda hospital. It was working. Now it is closed. What they used to do is, their one publication is there. What they used to do, Ballataka, about 6 Ballataka they take and make it Kshirabhaka and give it to the patient. Usually what we do is, you make Ballataka Shuddha with the Kshirabhaka, then you throw out that Kshira and use Ballataka. Actually in that Kshira, all the anti-cancerous activity is there. Usually we throwing out. It does has the anti-cancerous activity. So what I used to do is, do the 1000 Ballaka I take, make it a Kshira Bhaka. Then that Kshira, by that Kshira I do a Taila. Its Kalka is used as Haritaki. Haritaki is the best antidote for Ballataka Visha. It has done as its Kalka. Kshira is prepared out of it. So without Kshira it cannot be done. Go Kshira is very important here.
So you prepare ballataka kshira. That ballataka kshira means for 1000 ballataka 1 liter taila you prepare. That means 5 ml means 5 ballataka comes. So 5 ml you give to the patient daily. That 5 ml taila is given. This is how daily it is start from 2.5 ml, half teaspoon, go to 1 teaspoon. Some more patient gets irritation, itching still. So then for them again you stop it and start with the smaller dose and increase into 5 ml. So such patients usually you get excellent result. Next please, if patient comes after surgery, after chemotherapy, after radiotherapy with the decreased ojas and bala, at first what can be done? In that condition also, if possible you do sadhyomana and sadhyo virechana, then rasayana chikitsa should be started with the gritas, panchagavya grita, mahatikta grita, shilajito, swarnavasman. There are many rasayana dravyas are there. According to dosha it should be selected. Usually kafara rasayana, sometimes pitta pradhana, or some patient comes with hematuria. Last week I had a patient who had hematuria. About 2 years back he came, had hematuria, growth in bladder. I started medicine, hematuria stopped everything, growth started to reduce in size. He was taking the medicine for about 2 years. His age was 80 years, he is contraindicated for any surgery. Still he came in again, after 2 years he came back. His growth is only same size. If it was 5 cm size, now also it was 5 cm size. But again hematuria started. Again, then in such a condition we can't give gomutra or ballataka, all these things. We have to give brahmana, kshira, kashayas, all these things should be given. Next please. So here I present 2 cases, then I stop. Number 1 patient, a Leelavati, aged 53 years, came with headache and giddiness. CT scan shows enhanced hyperdense lesion in the anterior third ventricle, the dilated lateral ventricle. Next please. It was diagnosed a meningioma, something like that. The base of the skull it was there. Advised surgery. Patient refused surgery and came to our treatment. I told her, if you want you can get done surgery, but there is no guarantee patient will live because it was in base of the skull. So next please. Then diagnosis according to Ayurveda, arbada occurring in the shiromarma, no evidence of durarbuda, vata pitta symptoms, giddiness and headache was there. According to Western science, it is a advised surgery with the bad prognosis. According to Ayurveda also, bad prognosis because it is a marma jata. Even it may be benign or malignant, it was biopsy was not done, but it is a bad prognosis. Next please. Explained the prognosis, advised surgery, but because of marma jata, they refused. Started treatment with the tailadara, kshirabala taila, dashamula kshira kashaya basti and kshirabala taila anuvasana and niroha basti is given. Then internal medicine started with the sushekara rasa, hingu ashtaka and kamaduda with mukta. Next please. So she was taking treatment for about 18 years with me. After 14 years when I did again CT scanning, lesion became small, it was there only. But patient lived 18 years afterwards. Patient died of heart attack on 2018. He came in 2001. So such a result you can get. Next please. That patient is in front of me. Now patient is expired. Next please. Another patient, Sumitra, age 22 years, pain abdomen, mass in abdomen, hard mass felt in suprapubic region. USG shows large mixed endogenous solid mass, not in the pelvic region. It was size is 18 cm, 22 cm. Such a big mass. It was a ovarian tumor diagnosed. Next please. So next is a diagnosis. Next. So management the program is growth occurring in the costa with hard consistency as ovarian tumor. According to Ayurveda, it is a kapha pradhana arbuda or gulma at bastisthana. Treatment protocol should be shastrakarma as first line of treatment. Next please. So under spinal anesthesia we did surgery, removed the mass. In the OT, when we opened the abdomen, there was a full over abdomen, there was metastatic growths, lymphatic growths, para-aortic, suprapubic, everywhere metastatic growth was there. How much possible removed? Then it was not possible to remove all the growth focus because it's all over abdomen it was there.
Then this indicated Virarbudha with the bad prognosis. Next please. The biopsy report came as dysgerminoma, a highly malignant growth, dysgerminoma. Next please. So what I did is I advised the patient to go for radiotherapy or chemotherapy if wanted, or you can take an Ayurveda treatment. So patient opted for Ayurveda treatment. So after their option, Rasayana Chikitsa started with the Balataka Kshirathaila, Kanchanara Guggulu, Vata Gajankusha Rasa and Suta Shekara Rasa. Next please. After 2 months when we did the scanning, the metastatic growth, lymphatic growth 7.5 into 6 centimeter, other 2-3 growths are there with different sizes. Then I continued the treatment. Next please. After by 10th of October, the growth becomes 7.6 and 6.8, another growth reduced in size. Next please. After about 6 months, then the growth started to reduce in size, 5.2 to 2.6 centimeter. Then continue treatment for another 1 year. Next please. After 1 year, completely normal abdomen. There was no growth. So this is the, if you do this Rasayana Chikitsa continuously, this type of result can happen. I don't think in every patient you can get such a result. That patient is obediently has got treatment, done Patya properly. That is why we got the result. Otherwise, many of the patients, what they do, after 1 month, 2 months, they start to take all Apatya Ahara Viharas. Then you can't get result. If they follow, such a result can be taken. Next please. So proteomic study, we did some, especially is Kanchana Guggulu and Madhunashini. Many other patients I used to give Kanchana Guggulu with Madhunashini. Its proteomic study is done. Next please. You see what we had treated without treatment, see cells are like this. Only Kanchanara cells reduced in size. In Madhunashini also cells reduced. When Madhunashini and Kanchanara combined, all the cells are gone. This is the result in omic study we have done in a Yenapaya Research Center. In scientists they are doing it. I give the drugs. Next please. Another drug we did about Balataka Kshirathaila. The result you see, next please. It was compared with the cisplatin, a anti-cancer cisplatin drug is there. Along with that it was compared. Next please. What we have found out, next please, next. You see, cisplatin, it is uncontrolled growth proliferation. With the cisplatin only this much, in a semicarpanicardium, that Balataka Thaila, almost reduced. All the cells are reduced in size. Next please. So like this, in cisplatin, Balataka, you see, it is more effective than cisplatin, a anti-cancerous chemotherapeutic drug. Almost all the cells are gone. It was studied in the study. Next please. Next. 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 So there is a Pratisaranya Kshara. It's explained, applied in a growth, in a breast growth. It's almost reduced in size, about 7.7 cm reduced to 6.5. Daily Kshara is applied, slowly, the size is reduced. Pratisaranya Kshara. Pratisaranya Kshara can be applied for Gatra Pradesh, on the outside the body. Next please. So even though cancer growth is asadhya according to Ayurveda, according to presentation, by analyzing symptoms, adopt appropriate treatment protocol and medicine. By utilizing modern advanced diagnostic management techniques, we can give better result as a palliative care mainly and curative occasionally. Next please. So my advice to the students is Satata Adhyanam, Vadaha, Paratantravalokanam, Tadvidyachara Sevacha, Buddhi Medha Kuruganaha. Satata Adhyana, Vada, Paratantravalokanam, everyone will do, but what is most important is Tadvidya Acharya Seva. Acharya Seva means work along with the Acharya. That means practical understanding of theory. Theory understood, practically what it is should be understood only working with the Acharya. So thank you very much. Next please. You can ask any questions if you want.
context of Panchagavya seminar, how you have tried with the Panchagavyas or Gomutra you said, Panchagavya Krita or something like that. Have you tried? Panchagavya usually I give to the patient as a Brahmana. You see, many of the patient comes with the chemotherapy or radiotherapy after surgery with the decreased OJs. In such conditions, first you start with the Panchagavya Grita. Slowly, by this what happens, there will be Brahman occurs. When the patient gains some weight, they get confidence in you. Then we can start our other treatments. So this is the one thing. So best before giving Panchagavya, usually I do Sadhyomana and Sadhya Virechana. Otherwise, your Grita what you take, that goes directly. But only Gomutra you can do, it does the Lekhana Karma. But a fresh Gomutra, it is very difficult to patient to get. Just you do Sadhyomana Sadhya Virechana, it's a very simple procedure, easily it can be done for anybody. Already such patients, by seeing milk itself, they vomit out. Give 2 glass milk and 1 glass salt water, then I give Estiman. Before giving Estiman itself, they start vomit out. That vomiting is sufficient. No need to vomiting 4 Vegas, 6 Vegas like that, not possible, not necessary. Then you give just Virechana. In Virechana, I usually give Eranda Taila with when the Kapha Samsarga is there, it Gomutra. If Pitta Samsarga, it should be given along with the Godugdha. If both Kapha Pitta Samsarga is there, Eranda Taila should be given with both Gomutra and Godugdha. Then you get very good Ruksha Virechana will occur. Then start Snehapana with the Shamana Snehana, as a Panchagavya Grita can be given as a Shamana Snehana. That's what I usually use my practice. Gomutra, Go-Maya, it is very good in the context of Astama, Pratishaya. Its rasa is put as a Nasya. It gives excellent result. This is another drug we usually use. Next, any question? I think I have answered this question. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. Sir, you said about treatment before chemotherapy, if the patient approaches you, and after chemotherapy, how to deal. If the patient comes in between the chemotherapy, like they are not able to withstand chemotherapy, in between cycle they are coming, can we treat or should we say them to continue chemotherapy? No, during the chemotherapy, it is left to patient. If he wants to continue the chemotherapy, I tell them to continue it, just tell them to take some Gritas according to dosha. But if wants to stop the chemotherapy, I start from that area. According to dosha, Vishleshan, according to avastha, start the treatment. I hope I answered you. Yes, sir. Yes. Because patients, this one is very important. Because nowadays patients don't agree with the Ayurveda treatment. They want all the treatment till death, modern medicine. After death they come, any medicine is there. Yes. Thank you so much, sir. Thank you. I would request you to kindly please be seated. Okay, thank you. I request members of the committee to felicitate Dr. Ravi Shankar, sir. Sir, thank you very much for your valuable insights, your case presentations especially, for inspiring us that even in such a modern drive era, Ayurveda is still relevant to all of us.
Once again, thank you very much, sir. Now let us have our last session, but most awaited session of the day. I would like to invite Dr. Shritesh Jani, sir, onto the dais, along with Subbaraya Nandodi ji. Along with Subbaraya Nandodi ji, Kutumba Prabodhan, Dakshina Karnataka Pranta Sayojakaru. ಚೇರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. PPT ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಚೇರ್ ಆ ಕಡೆ ತೆಗೀರಿ. अभी PPT कंसीव हो रहा है. Yeah. तो शुरू करेंगे. आदरणीय सुब्रह नंदूरी जी, कुटुंब प्रबोधन के बहुत से अधिकारी इधर बैठे हैं और मेरे कलीग, मेरे आयुर्वेदाचार्य, जिज्ञासा के सब प्रतिनिधि. अभी जो विषय मैं रखने वाला हूं, जो विषय इतना प्रचलित है, लेकिन उनका जो बाहरी दिखावा या बाहरी चर्चा है उसमें ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर का थोड़ा विषय है, ये तो कोई पंडित का विषय होगा, धोती चोटी पहन के वाला आदमी को बताता होगा, कुछ संस्कृत बोलेगा और कुछ ऐसा अच्छा बच्चा आ जाएगा. तो लेकिन ये बात आयुर्वेद की जो है, आयुर्वेद की हर बात में आप डीप जब जाएंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेंगे. एकम शास्त्रम न अभिधानियो, एक आपके शास्त्र को पुष्ट करने के लिए अलग शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा. सुश्रुत ने जो बोला है, तो शायद वो चिकित्सा शास्त्र या आयुर्वेद के ऐसे ऋषियों ने न भी लिखा हो, लेकिन अलग अलग शास्त्रों को मिला के जब हम फिर आयुर्वेद को समझते हैं, पढ़ते हैं, जैसे भी कैंसर के बारे में रविशंकर जी ने बताया, तो आपको कोई ऐसा गुंजाइश ही नहीं कि आप नहीं कर सकते. तो मैं आपके सामने विषय रखता हूँ. कुटुंब प्रबोधन के अधिकारी बैठे हैं, हम शुरू करते हैं उसी विषय को जो आज पूरे देश में हम इस तरह के ले जाते हैं. नेक्स्ट. सबको लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा आना चाहिए, स्मार्ट हो, स्वरूपवान हो, गुड लुकिंग हो. नेक्स्ट. तो ऐश्वर्या राय जैसा बच्चा हो, सचिन तेंदुलकर बने, सबके मन में होता है और वो उनकी चॉइस है, उनकी राइट है, उनकी इच्छा होना, ये इतनी इच्छा प्रकट करना, ये बहुत बड़ी सही बात है. उसमें कोई इसका ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा ऐसा बने. तो जो कपल है, जो यंगस्टर्स है, जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं, उनके मन में बहुत से उम्मीदें आती होगी, तो हो सकता है. नेक्स्ट. कभी कभी हम एक तो इच्छाएं होती है और कभी कभी हम कुछ सुनते हैं.
कभी आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी है, कभी आपने राम का प्रागट्य जो मैंने सुबह बताया वो भी सुना होगा, कभी आपको सावित्री के बारे में पता होगा, कभी शिवाजी की कहानी हमें सुनाई जाती है। तो क्या ये कहानी है? क्या ऐसे दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है? ऐसा तो है नहीं। सुभद्रा को जब बताया जाता था तो सुभद्रा को नहीं बताया था कृष्ण ने। जो यादव मार्शल्स थे द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान वो बता रहे थे वॉरियर्स को कि कैसे कैसे चक्रव्यूह बनेगा, युद्ध का मैदान में क्या क्या होगा। वो तैयारी चल रही थी उस समय महाभारत के युद्ध की। तो सुभद्रा सुन रही थी, ऐसे ही ऑडियंस में थी या जैसा भी मानो उनके घर में ये वार्ता चल रही थी। लेकिन बाद में नींद आ गई थी, जैसे अभी आ सकती है शायद। तो नींद आई तब तक 6 चक्रव्यूह भेदन उन्होंने सुना था। जब 7वें चक्रव्यूह के समय उसको नींद आ गई थी तो आपको मालूम है अभिमन्यु 14 साल का था जब युद्ध में गया। तब कोई फॉर्मल एजुकेशन, धनुर्विद्या, युद्ध विद्या, अस्त्र शस्त्र कुछ सीखा नहीं था। वो बेबी बच्चा था, लेकिन वो गया था। उसने बोला मैं जाऊंगा, मुझे जाना है। बहुत सीनियर लोगों ने बताया, लेकिन नहीं मैं जाऊंगा, मैं जानता हूं। तो 6 चक्रव्यूह तो उसने भेद दिए जो बहुत से महारथी नहीं जानते थे, लेकिन 7वां चक्रव्यूह भेद नहीं पाया। ये कहानी सुनी होगी आपने। तो माँ जो सुनती है तो बच्चा सुनता है। अब वो कौन सा कंडक्शन है, नर्वस कंडक्शन है, ये आप समझिए, आप जो पढ़ते हैं। लेकिन जो कंडक्शन है वो कनेक्टिविटी में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अभिमन्यु ने कहानी सुनी थी, स्टोरी सुनी थी। अब स्टोरी है या कहानी है या एलोब्रेशन है या कोई सूत्र चल रहे थे, जो भी थे, लेकिन सुनता है बच्चा गर्भ में। आपको मालूम होगा प्रहलाद की कहानी, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 असुर कैसे पैदा हुए। माँ भागवत में ये कहानी आती है। एक अभी सब जैसे संध्या अभी धीरे धीरे होने जा रही है, ऋषि कश्यप जो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, दीति और अदिति उनकी पत्नी दीति ने उसने संभोग की डिजायर व्यक्त की कि भाई अभी मुझे सहवास चाहिए, इंटरकोर्स चाहिए। उसने बोला ये टाइम ठीक नहीं है, ये संध्याकालीन संभोग हमारे शास्त्रों में वर्ज्य बोला गया है। तो लेकिन फिर भी चलता तो उसका ही है घर में, जैसे मुझे भी इधर भेजा गया है। तो वो क्षेत्र कार्य वही का है, हमारा पत्नी जी क्षेत्र कार्य। वो बोले कि तुम जल्दी जाओ तो फिर हम हमारा प्रवास करेंगे। तो चलता तो ऐसा ही है। तो दीति का चला, संध्याकालीन संभोग हुआ और 2 बच्चे जो पैदा हुए उसी ऋषि के कुल में, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अब वो कोई नाखून या सींग या ऐसा कोई राक्षस दिखता नहीं था। वृत्ति क्या थी उसकी, मैं बोलूं वही सही, मैं कहूं वही ज्ञान, मैं बोलूं मैं ही भगवान। कोई मैं राजा और भगवान दोनों एक है। दिल्लीश्वर हुआ जगदीश्वर हुआ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। कि आज भी हम वो समझते हैं कि नर जो अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। कोई एक बोलेगा, एक गुरु बोलेगा वही करना, या एक राजा बोलेगा, एक प्राइम मिनिस्टर बोलेगा वही देश होता है। ऐसा नहीं होता है। तो अब हिरण्यकश्यप को सब लोग उससे डरते थे, कोई बोल नहीं सकते थे। वो जो बोले वही सही, वही भगवान। तो कायाधु उनकी पत्नी हिरण्यकश्यप की, उसको लगा ये क्या है, ये हमारे शास्त्र विरुद्ध रचना है, ये ऐसा जीवन नहीं है, ये राक्षसी वृत्ति है, दूसरों को प्रताड़ित करना। वो चिंतित थी कि भाई उनका बेटा ऐसा होगा, इससे तो और नोटरियस होगा। तो वो चिंतित थी, वो कंसीव होना नहीं चाहती थी, वो ना बोलती थी। उसकी जो चिंता थी, आज सुबह आपको स्ट्रेस और समझाया मैंने, वो शी वॉज इन स्ट्रेस। तो ऐसे स्ट्रेस के समय हमारे यहाँ कोई आते हैं, ऊपर से आते हैं, नीचे से आते हैं, कहीं से आते हैं, और वो है नारायण। नारायण करके नारद। नारद इज ए स्रोत, सोर्स ऑफ। तो फिर क्या करूं, तो टिप्स दिए 1 2 3 4 जो मैं अभी बताने वाला हूं। ये टिप्स जिसको हम प्री कंसेप्शनल प्रोग्राम कहते हैं। तो एक टिप्स दिया, फिर बताया कि ये टिप्स तुम इसका फॉलो करो और जब तुम कंसीव हो जाओ तब मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आ जाऊंगा फिर से और बाकी की प्रोसेस बाद में बताऊंगा। तो कायाधु कंसीव हो गई। फिर मैसेंजर से मैसेज गया, नारद जी आ गए,
और वो तो और तप के लिए चला गया हिमालय। तो अब तो थोड़ी फ्री भी थी, इच्छा भी थी, नारद ने प्रॉमिस भी किया था, नीचे आ गए और शुक्राचार्य के आश्रम में नारद जी इस कायाधु को ले गए। 9 महीने जो खाना हुआ, पीना हुआ, रहना हुआ, सुनना हुआ, शास्त्र का अध्ययन हुआ, जिसको कहते हैं आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर, जो भी मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, आपके शास्त्रों में, आपके पास तो है ही है, हमारे कुल में है, हमारे घरों में है, लेकिन उसका विज्ञान समझने की कोशिश हम करने वाले हैं। तो एक ऋषि के घर में दैत्य पैदा होना, दैत्य की पुत्र वधु फिर समझ लेती है उसकी पत्नी, तो उसके घर में फिर से प्रहलाद का जन्म हुआ। वो शुक्राचार्य के आश्रम में कयाधु को प्रहलाद का जन्म हुआ, जो फिर से नारायण को समझ पाया, प्राप्त कर पाया, जो कहानी आप जानते हैं। राजा अश्वपति, उसको इच्छा थी कि मेरी तो बेटी ही होनी चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। तो सावित्री को पाया, एक बड़ा प्रोग्रामिंग हुआ, सावित्री का अवतरण हुआ। आपको शायद मालूम होगा सत्यवान सावित्री की कहानी सुनी होगी, बताते होंगे, आपकी दादी नानी बताते होंगे, या ऑप्शन में निकल जाओगा, पता नहीं आपको। जैसे अभी तो 10 में से 8 प्रश्न पढ़ो। तो लेकिन सावित्री वॉज डिजायर चाइल्ड ऑफ राजा अश्वपति, कि मुझे बेटी ही चाहिए और ऐसी चाहिए पराक्रमी, ऐसी विदुषी चाहिए। तो आपको मालूम है जब सत्यवान के साथ उसकी शादी हुई, सर्पदंश से मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद यम के दूत उसको जब ले जा रहे थे, तब बताया ये नहीं हो सकता, आपका कॉन्फ़िगरेशन गलत है, सत्यवान का आज डेथ नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ उसका भाग्य, आपसे कुछ गलती है, यमराज से कुछ गलती है। तो नहीं, हमारा कभी गलती नहीं होती, हमारा सुपर कंप्यूटर है। तो नहीं, आपका कंप्यूटर भी करप्ट हो गया है और मेरे में नहीं चलेगा। तो उसका पीछे गई, यमराज तक पहुंच गई, देखो ये पीछे पीछे आ रही है, वो कहती है कि आपने गलत किया है। तो यमराज ने बोला बोलो बेटी। फिर चर्चा हुई, शास्त्रार्थ हुआ, और यमराज ने गलती स्वीकारी, सत्यवान को जिंदा लेके भारत की एक महिला आई, जो पृथ्वी में अभी तक नहीं हुआ है। तो सावित्री डिजायर चाइल्ड थी कि ऐसी क्वालिटी वाली मुझे बेटी चाहिए, वो राजा अश्वपति ने तय किया था। रानी मदालसा, उन्होंने बोले मुझे 4 संतान चाहिए, एक गीतकार चाहिए, एक संगीतकार चाहिए, एक तो ऐसी चाहिए, और एक तो राजकाज, फिर मेरा ये पूरा किंगडम भी संभालने वाला चाहिए। तो सबकी क्वालिटी उन्होंने तय की थी। भगवान मनु और शत्रुपा, शादी हो गई थी, बड़े हो गए थे, दशरथ की कहानी आज आपने सुनी, वृद्धावस्था की ओर पहुंच गए थे दशरथ। तो राजा मनु और शत्रुपा, मनु को ओलिगोस्पर्मिया था या जो भी कोई प्रॉब्लम था, और शत्रुपा मेनोपॉज में चली गई, बच्चे पैदा नहीं हुए। लेकिन संकल्प क्या था, तब वो करते थे कि सृष्टि के परब्रह्म परमात्मा मनुष्य स्वरूप हमारे घर जन्मे। तो वो तो चले गए, मृत्यु हो गया, लेकिन संकल्प इतना दृढ़ था कि दूसरे जन्म में वो दशरथ और कौशल्या के स्वरूप में जन्मे, ऐसा भागवत कहता है। और फिर वही दशरथ को ओलिगोस्पर्मिया था जो मैंने सुबह बताया, लेकिन ट्रीटमेंट हुई और वहीं श्री कृष्ण श्री राम वहां अवतरे। तो एक जन्म का पहले का संकल्प भी आता है और उसको किया जाता है। मैं ऐसी आपको 100 कहानी के बारे में बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। सर्वे किया, इंटरप्रिटेशन किया, उसको रीडॉक्यूमेंट किया, डिकोडिंग किया, मैं आपको बहुत कहानी बता सकता हूँ, लेकिन ये कोई फेरी टेल नहीं है। शाहजी के यहाँ, आप बहुत पुरानी बातों को छोड़ो, शाहजी औरंगजेब का पास नौकरी करता था, सामान्य सिपाही था, सरदार था, लेकिन उसकी पत्नी जीजाबाई बोले ये क्या है वहां कुर्निश बजाना ऐसे मुसलमान के सामने, मुझे ऐसा बच्चा नहीं पैदा करना है, मुझे तो इसके साथ लड़े, जो जॉब दे रहा है मेरे पति को, महाराजा है, बादशाह है मुगल, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, इतना मुसलमान का त्रास है, तो मुझे तो ऐसा बच्चा चाहिए। तो सोचा क्या करेंगे, समर्थ रामदास के पास गई, तो कुछ टिप्स या जो भी सुझाव लिए, दादा कोंडदेव को ढूंढा गया, तीनों ने मिलकर एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाया, और फिर शिवाजी पेट में कंसीव हुए, और बाद में भी उसकी धनुर्विद्या, युद्ध विद्या दादा कोंडदेव ने सिखाई। समर्थ रामदास ने कुछ ऐसे पाठ पढ़ाए। सीता माता का जो डिजायर चाइल्ड था वो शिवाजी, उन्होंने हिंदू पातशाही की स्थापना की। तो ये कहानियां सुनते सुनते फिर हम थक जाते हैं।
कभी ऐसी इच्छा क्यों नहीं होती कि इस कहानियों को डिकोड करे, इसको रिकॉल करे, रिपीट करे? आयुर्वेदाचार्य को ये करना चाहिए। तो ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये नेक्स्ट, ये हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ये पूछता है अमेरिका, उनको प्रश्न होता होगा, ये पूछती है वेस्टर्न वर्ल्ड, उनको लगता होगा, लेकिन नेक्स्ट हमको तो हम कर सकते हैं। लेकिन आज की समस्या क्या है इसको पहले समझेंगे। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल कहता है कि आपके 1000 बच्चे में से 3 से 6 बच्चे फैक्ट्री डिफेक्ट होती है, कॉन्जेनिटल। ये मेरा आकलन नहीं है, ये अमेरिका का है, तो भारत में तो बड़ा रिकॉर्ड होगा। अभी लेटेस्ट का मैं आपके पास नहीं बता रहा हूं, लेकिन 6 तक पहुंच गया है। तो ये समस्या है। नेक्स्ट, और कॉजेज आप जानते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ जेनेटिक्स है, कुछ दोनों है। ये अलग अलग समस्या की वजह से बच्चे मंदबुद्धि या गुस्सैले या ऐसे ऐसे बहुत से फैक्ट्री डिफेक्ट आती है। आजकल जो समस्या है, विश्व की बड़ी समस्या की हम चर्चा कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से गर्भ संस्कार नाम के विषय से कर रहे हैं। आप इसको लाइटली मत लीजिए। नेक्स्ट, तो मैंने आज सुबह बताया कि जीवन शैली एटम बम है, क्या खाना क्या नहीं खाना। मुझे अभी दीदी एक पूछ रही थी, आप शायद पूछ रही थी कि छोटी छोटी बच्चियां, 80% लड़कियों को पीसीओएस पीसीओडी डेवलप हो रहा है। तो ये जीवन शैली बड़ी समस्या है, ये उसका आज का वजह है। तो आने वाले बच्चे, आने वाली संतति ठीक नहीं आ रही है। 50,000 साल से ह्यूमन जीन्स डिटोरिएट हो रहा है, 50,000 साल से। ये जेनेटिक साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस में, और पिछले 100 साल में 49,900 ईयर्स में जो नहीं हुआ, ये पिछले 100 ईयर्स में जेनेटिक डिटोरिएशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये जीएम फूड, ये गलत लाइफस्टाइल। तो ये कोई डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जेनेटिक साइंटिस्ट बोल रहे हैं। ये समस्या है विश्व की। तो क्या करेंगे हम? नेक्स्ट, तो देखो ये सब, ये उसके प्रॉब्लम कितने बच्चे में आ रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। आगे चलेंगे। आज सुबह आपने इनको तो मिला है, मिले हुआ। नेक्स्ट, तो हमने सोचा कि भाई ये बात तो आयुर्वेदाचार्य है, इसको जवाब दे सकता है। ये कहानी सुनने वाले लोग नहीं है, हम कहानी बनाने वाले लोग हैं। तो हमें कहानी बनानी पड़ेगी। तो हमने गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र करके एक इंस्टीट्यूट शुरू की, जिसमें आयुर्वेदिक फिजिशियन, वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम के फिजिशियन, पेडियाट्रिशियन, नियोनेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सबको रिक्वेस्ट किया। सब अच्छे लोग होते हैं, कोई साइंस किसी का बाप का नहीं है। सबको रिक्वेस्ट करेंगे, बात करेंगे, सेवा करेंगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो बड़े लोग हैं तो अभी आप रविशंकर जी ने बताया कि आचार्य के साथ सहवास करो, बात करो। कोई जूनियर है लेकिन बहुत तेज है तो बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, बच्चा है लेकिन तेज है तो उसको बुलाओ अपनी टीम में, उसको रिस्पेक्ट करो। तो ऐसे ऐसी 10-12 लोगों की टीम ने हमने जो काम किया है वो आपके सामने मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन जो सूत्र है, पहले जो सूत्र है वो और दूसरा सूत्र को आप जरा समझ लीजिए। एतद्देशस्य प्रसूतस्य सकासाधक जन्मनाम स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्या सर्वमानवा। भगवान मनो ने हमें आदेश दिया है हमको कि हमको ऐसे बच्चा पैदा करने वाले लोग हम नहीं है। हमारे यहाँ जो जन्मेगा वो ऐसा होगा जो दुनिया के लिए रोल मॉडल बनेगा। कैसा राजा हो, कैसा कवि हो, कैसा वैद्य हो, कैसी नारी हो, वो रोल मॉडल दुनिया को बताने के लिए हमको बच्चा पैदा करना है। हमको 130 करोड़ की जनसंख्या को ये मुफ्त अनाज देना है, वो हमारी जीवन की शैली नहीं थी। हम क्या करने वाले थे, क्या करते थे और क्यों बच्चा पैदा करते थे और कैसी जिम्मेदारी के साथ इस आर्यवर्त को हमने विश्वगुरु के स्थान पे पहुंचाया था। तो भगवान मनु ने आदेश दिया। तो महर्षि आत्रेय ने, महर्षि चरक ने, अग्निवेश ने ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली कि इच्छताम यादृशम पुत्रम, आप बोलो कैसा बच्चा चाहिए। तो चरक संहिता में से, अब वो तो हमारे आदेश है लेकिन ये हमारी प्रैक्टिस है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, तो बेस्ट प्रोजेनी ये हमारा राइट है, ये हमारी ड्यूटी भी है। हमारे यहाँ 2 शब्द है, एक श्रेयसी प्रजा, इच्छित संतति। चरक संहिता सारे स्थान में दिया गया है, जिसको आज की लैंग्वेज में जो ठीक शब्द नहीं है, कस्टमाइज चाइल्ड, सिग्नेचर बेबी, डिजायर चाइल्ड,
तो श्रेयसी प्रजा, मीनिंगफुल है। तो ये हम कर सकते हैं, ऐसा कौन कहता है, कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी विधि विधान दी है, लेकिन हम इसको बराबर समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो आगे चलेंगे। तो सारे स्थान के 6 अध्याय के, 8 अध्याय है लेकिन 6 अध्याय के ऊपर हमने पहले स्टडी किया कि भाई क्या क्या अध्याय है। इसका नामकरण देखते हम भाग जाते थे। एनाटॉमी में ये विषय आता था, गैनेक में विषय आता नहीं, स्त्री प्रसूति विभाग में है कोई यहाँ स्त्री प्रसूति विभाग के लोग जिसने एमडी किया है, पीएचडी किया है, ये डिपार्टमेंट में ये होता ही नहीं। सारे के समय ये छोड़ देते हैं। तो अब देखिए जीन, जेनेटिक्स, जीन्स क्या है, जेनेटिक्स क्या है, ऊजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब टॉपिक के टाइटल है जो नीचे दिए हैं, वो आज के सब्जेक्ट है। हमारे शब्द, हमारे सूत्र हमारे अलग है, लेकिन हमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, डिकोडिंग करना पड़ेगा। कुछ डिकोडिंग करके जो एसओपी बनी है अभी आपके सामने परत खोल रहे हैं। नेक्स्ट, तो पहले तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। संतति अविच्छिन्न धारा, गोत्रम वंशम परंपरा। संतति एक अविच्छिन्न धारा है। हितेश, मेरे बेटी का नाम है यात्री, यात्री, हितेश, ईश्वरलाल, दलपतराम, भवानी शंकर, वाघ जी, मदन जी, तुलसी, जानी, 7 पीढ़ी मैंने बोली। तो एक अविच्छिन्न धारा है। फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये एक अविच्छिन्न धारा है, इसको संतति कहते हैं। बेटा बेटी वो तो एक अलग बायोलॉजिकल एंटिटी है, लेकिन संतति है वो अविच्छिन्न धारा है। और गोत्र और वंश परंपरा को, ट्रेड को चलाने वाली ये प्रक्रिया को कहते हैं संतति। चाइल्ड या बेटा बेटी वो बाद में आता है, संतति इज द राइट वर्ड। और आज का कन्वेंशनल साइंस या वेस्टर्न मेडिकल साइंस या वेस्टर्न जेनेटिक साइंस क्या कहता है, इस बात को आप समझिए। नेक्स्ट, तो द डीएनए सीक्वेंस इज मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन। संतति अविच्छिन्न धारा, ये डीएनए की बात है। और डीएनए सीक्वेंस लाइव्स फॉरएवर, कभी मरता नहीं। मेरे पिताजी 2 साल पहले मर गए, ईश्वरलाल भाई जानी, लेकिन इसमें है। मेरी मां, मैं 9वीं कक्षा में था, सरला मर गई, लेकिन सरला इसमें है, कभी नहीं मरने वाली है। 71 पीढ़ी तक तो वो बदलता नहीं जिन्स। नरसिंह मेहता का सुना होगा आपने भजन, बने नरसइयों एनु दर्शन करता, कूड़ 71 तार्या। 71 पीढ़ी तक डीएनए सीक्वेंस वही रहता है। इतना जेनेटिक साइंस डीप था, हमने सुना ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, हमने चर्चा ही नहीं की। हम इन्फ्लुएंस है गलत लोगों से। तो संतति वही डीएनए, डीएनए यानी संतति, यानी ट्रेट, यानी हेरिटेज, यानी जो भी आप कह सकते हैं। फिर गोत्र की चर्चा करके नेक्स्ट, तो शास्त्रों ने पहले ये बताया कि अतुल्य गोत्र से रजक क्षयन्ते, जो हमारे चरक ने बताया कि भाई ये समान गोत्र वाले शादी नहीं कर सकते। किसको मालूम नहीं अपना गोत्र, जरा प्लीज योर राइट हैंड, या किसको मालूम है अपना गोत्र? ठीक है, सही बात है। लेकिन ये प्रश्न दोनों मैंने पूछा, अपने आप को पूछना, ये गोत्र क्या है? तो पंडित का विषय, ब्राह्मण का विषय, कोई पुरोहित का विषय हमने बना दिया है, या तो कोई ब्राह्मण कम्युनिटी सिर्फ उसको मानती है, समझती है। गोत्र यानी मैं आपको आज की लैंग्वेज में, आज की टर्म में जो हम मानते हैं, आप उससे शुरू करिए, तो फिर ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी। थैलेसीमिया माइनर आप जानते हैं, एक क्रोमोसोम की एक पैर में प्रॉब्लम है। अगर थैलेसीमिया माइनर वाला लड़का कोई थैलेसीमिया माइनर वाली लड़की से शादी करेगा तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर आ सकता है, होगा ही ऐसा नहीं, लेकिन पूरे चांस है। और थैलेसीमिया मेजर की चर्चा अभी मैं करने की जरूरत नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट है। आपको लगता है वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बढ़े देंगे हर महीने, तो क्योंकि आरबीसी बनते ही नहीं, माता के जो आरबीसी थे वो 120 दिन के बाद, 4 महीने के बाद खत्म हो जाएंगे, 6 महीने के बाद तो नया बनेगा नहीं, तो ब्लड बीटी करना ही पड़ेगा। बीटी किया तो आयरन ओवरलोडिंग होगा, तो फिर वो डेस्पेराल देंगे, डेस्पेराल देंगे तो हेपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, स्टोनी हार्ट हो जाएगा। 20 साल से ज़्यादा कोई थैलेसीमिया मेजर वाला बच्चा मुश्किल से बचता है। तो कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, आपको ट्रीटमेंट सोचना है ना। आप प्लान कर रहे हो क्या? ऐसे डे टू डे की जो हम ओपीडी में करते हैं, पूरा पश्चिम ओपीडी चलाता है,
तत्र अल्पे लंघनम पथ्यम मध्य लंघन पाचरम प्रभुते शोधनम। ताकत नहीं उनकी कि शोधन यानी क्या, सेलुलर क्लींजिंग हम कर सकते हैं। तो थैलेसीमिया माइनर इज ए गोत्र और दूसरा जो गोत्र है, दोनों समान गोत्र हो गए तो थैलेसीमिया मेजर हो सकते हैं। आप उसको पकड़ लो पहले, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आप कम से कम 12th साइंस में ये इतना समझ के आए हो जेनेटिक के बारे में, और हम सब एवरेज ये जानते हैं। तो स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप और स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप अगर जुड़ता है तो ऐसा ही तो संभावना बढ़ जाती है फिजिकल या ऐसे कोई जेनेटिक डिजीज की। तो उसको रोकना है, इनब्रीडिंग भी नहीं होने देना है, जो हम पशुओं में थोड़ी चर्चा सुबह थोड़ी हुई थी। तो अतुल्य गोत्र शादी करने से पहले ये तय करना पड़ता है, इसलिए। और उसका एकदम प्रैक्टिकल वे क्या था, कोई एक प्रौढ़ महिला अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए जाता है, तो वो क्या करता है, 7 पीढ़ी पूछता है उस लड़के की, पूछती है कि ये लड़का, उसके पिता क्या करते थे, उसके पिता क्या करते थे। तो लड़का जब दामाद ढूंढना है तो 7 पीढ़ी हमको देखनी पड़ेगी। और जब हम बहू लेने के लिए जाते हैं, लड़की पसंद करने के लिए जाते हैं, तो माँ 3 पीढ़ी पूछती है, लड़की, उसकी माँ, नानी और परनानी, क्योंकि लड़की में क्रॉस फिर तुरंत होने वाला है, जो भारतीय चिंतन है, जिस तरह से हमारी शादी होती है, कुछ भी होते हुए भी। तो ये कोई जेनेटिक साइंस नहीं जानते थे, लेकिन हमारे यहाँ प्रक्रिया ही थी। और हमारा, हम तो कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गोत्रोच्चार सुबह होता है कि माघ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्याम अहम भारद्वाज गोत्र सुत्पन्न ईश्वरस्य पुत्र हितेश अहम संकल्प करोति। कोई भी शादी हो, ब्याह हो, वास्तु हो, कोई भी अच्छा कार्य हो, तो हम अपने गोत्र को याद करते थे। गोत्र को याद करने की सिंपल मेथड थी। और शायद न भी याद हो तो हम कुल गुरु के पास जाते हैं, हमारे पौरोहित के पास जाते हैं, वो बताते हैं कि आपका गोत्र ये है, तो आपको ऐसे गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। और रादर वही ढूंढते थे, वही हमको सुझाव देते थे। तो हम बचते थे जेनेटिक डिजीज से। और इतना ही नहीं, जेनेटिक अपग्रेडेशन हम करते थे। और हम चाहे ऐसे गोत्र से शादी करके हम चाहे ऐसी संतान प्राप्त कर सकते थे। विश्वामित्र का उदाहरण मालूम है, ऐसे बहुत प्रयोग हुए हैं कि क्या करना है, लाओ दीजिए मुझे, हम आपको ऐसा कर सकते हैं। तो ये अतुल्य गोत्र की चर्चा शास्त्रों में आयुर्वेद में की गई है कि शादी से पहले ये करो, शादी के बाद तो फिर ये नहीं हो सकता, लेकिन इसके पहले आप देखो। तो आज यूनिवर्सिटीज में थैलेसीमिया चेकअप होता है कि नहीं? आप क्या होता है पता नहीं। हमारे गुजरात में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर BA BCom BSc कहीं भी आया तो उसका थैलेसीमिया चेकअप करवाना है कि भाई थैलेसीमिक तो नहीं है ना, बाकी भी प्रॉब्लम होते हैं तो ये पहले कर लो। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम, तो हम इस प्रॉब्लम से बचते और अच्छे जेनेटिक मेकअप को लाके हम उत्तम संतति कर सकते थे। ये साइंस है इसके पीछे। नेक्स्ट, तो ये हमारे जेनेटिक मेकअप है, बेसिक जो गोत्र है। जैसे मैं भारद्वाज गोत्र हूं, कोई भी भारद्वाज गोत्र वाली महिला कर्नाटक में हो, बंगाल में हो, गुजरात में हो, मेरी बहन होगी ही होगी, क्योंकि कोई एक पीढ़ी में हमारे पितामह 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 प्रपितामह एक है। हम सेम जेनेटिक मेकअप को, संतति अविच्छिन्न धारा, सेम DNA लेके आ रहे हैं। अब हमें मालूम नहीं तो क्या करना, गोत्र ही मालूम नहीं, तो हमारी एक प्रक्रिया होती थी पिता हमारे पितृ के तर्पण करने की। जैसे पूरे भारत का तो प्रयाग, जो प्रयागराज है, मालूम है ना आपको, प्रयाग में कहीं भी कोई भी कहीं तर्पण नहीं हुआ, अपने अपने एरिया में अपनी अपनी नदियां, अपना एरिया होता है जहां पितृ का तर्पण कर सकते हो। लेकिन कहीं नहीं हुआ तो आप प्रयाग में जाइए, प्रयाग में जाएंगे, प्रयागराज में तो बहुत पंडे आपको बहुत बोलते हैं तो बहुत पंडा परेशान करेंगे, आप मत जाना, आप ये करो, आप मंदिर में जाना, वो खिलाना, ब्राह्मण को खिला देना। लेकिन पंडा आपको परेशान करेंगे, आप उससे बच के रहना। लेकिन वो पंडा है, वो बड़ा डेटा बैंक है। आप गए, बताया कि आप कहाँ से आए, तो सेट्टी राव जैसा बताया, कर्नाटक से आए, मंगलोर प्रांत से आए, उसको पता चला। हव्यक ब्राह्मण हो, वो पूछने लगेंगे आप, हव्यक ब्राह्मण। फिर बताएंगे तुम्हारे तीसरी पीढ़ी में ये इधर आए थे, तर्पण किया था। वो पूरा नोटिंग होता है, दादा परदादा, वो उसको अपना दादा परदादा देख के जाता है। 700-800 साल का इतिहास कोई भी पंडे के पास, 800 साल का आपका परिवार का हिस्ट्री उसके पास होता है।
हमको नहीं मालूम, लेकिन उसको ये पूरा भारत ने, ऋषि मुनियों ने ऐसी कम्युनिटी को काम दिया था कि शायद कभी भूल जाएंगे, शायद आक्रमण होते हैं, ये परंपरा टूट रही है, तो कोई एक कम्युनिटी को एक काम दिया गया था। जैसे भारत का एक डेटाबेस बैंक है, तो वो तो क्या है, स्कूल कॉलेज जन्म मरण के जो सबका जन्म होता है, स्कूल का सर्टिफिकेट, उसका डेटा रखते हैं। है क्या उसके पास? वो भी अभी उनके पास तो 700, 800, 1000 साल के डाटा उनके पास है। कुछ तो परंपरा में खुद जानते हैं। तो या तो वहां जाओ, उसको आप 11 रुपया प्रणाम करके दक्षिणा देंगे तो आपका गोत्र बता देगा, या आप जेनेटिक स्क्रीनिंग करवाइए। कितनी फीस है डॉक्टर साहब को मालूम है सबको। तो जेनेटिक स्क्रीनिंग में भी जेनेटिक साइंटिस्ट ये नहीं कह सकते कि आपका कौन सा गोत्र है। आप 1000 भारद्वाज गोत्र के लोगों का जेनेटिक स्क्रीनिंग करके रख लीजिए, फिर 1000 ऐसे अत्रि गोत्र का जेनेटिक स्क्रीनिंग करके रख लीजिए। तो ये सब जेनेटिक स्क्रीनिंग, और जब भी वो स्क्रीनिंग आके तो जेनेटिक मेकअप आप मैच करेंगे तो पता चलेगा ये जेनेटिक मेकअप है। तो आप कह सकते हैं कि आप अत्रि गोत्र के, मालूम नहीं तो आप जेनेटिक मेकअप से कर सकते हैं। ये बाइडेन का भी अपना गोत्र है, उसको मालूम नहीं ना, वो परंपरा में से निकल चुके हैं। हमें समझाना होगा कि तुम तो बच्चा हो, अभी अमेरिका बच्चा है, सेकंड स्टैंडर्ड में है, चड्डी पहन के घूमता है, बरमूडा चड्डी, वो तो करेगा। वो तो उसके पीछे माता यशोदा भी नंद के पीछे, कन्हैया के पीछे जाती थी, तो जाना पड़ेगा। भाई जाओ, दौड़ो, कोई बात नहीं, अमेरिका के पीछे दौड़ो, वो बच्चा है। लेकिन भारत समझा सकता है कि क्या करना है। तो ये गोत्र विज्ञान को समझना पड़ेगा, तब आप उत्तम संतति की टॉप प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटीज है वो आप कर सकते हैं, उसके जो मापदंड है। नेक्स्ट, अब बात हुई संस्कार की। संस्कार की बात आती है तो लगता है चोटी, चंदी, बिंदी, धोती, कुर्ता पैजामा, जनोई, ये बाह्य चिन्ह है। एक अमेरिकन लगना, एक ब्रिटिश लगना, एक पुलिसमैन लगना, एक डॉक्टर लगना, एक एडवोकेट लगना, वो जरूरी है, ड्रेस, डिसिप्लिन एंड डेकोरेशन। लेकिन वो, उसको अब संस्कार कहते हैं। एक महिला है, मंगलसूत्र पहना है, सिंदूर लगाया है, हाथ में पूजा की थाली है, मंदिर में गई, पूजा करके वापस किसी के घर में घुस गई, फिर दूसरे के घर में गई, तीसरे के घर में गई, तो वो मंगलसूत्र और वो पानेतर, वो चंदी बिंदी का क्या महत्व है? पुजारी है, मंदिर में है, ब्राह्मण है, संस्कृत में ही बोलता है, चोटी रखी है, पीताम्बरी पहनी है, मंदिर में सुबह का समय है, कोई एक कुंवारी कन्या आती है अपना व्रत पूरा करने के लिए, और उसको रूम में ले जाकर रैप करता है। तो वो धोती चोटी का मतलब क्या है, पीताम्बरी का मतलब क्या है, वो संस्कृत में क्या होगा? तो कुछ बातें तो जरूरी है, लेकिन बेसिक क्या चाहिए, उसको कहते हैं हम संस्कार। संस्कार इनर क्वालिटी की चर्चा है। तो सम्यक करोति इति संस्कार, जो आपका जेनेटिक मेकअप कुछ बिगड़ा हुआ है, डीएनए में डिस्ट्रक्शन है, एरर है कुछ, उसको ठीक करना डीएनए लेवल पे, उसको कहते हैं संस्कार। संस्कारो ही गुणांतरादानम उच्यते। संस्कार उसको कहते हैं जेनेटिक अपग्रेडेशन, अपडेटेशन कर सकते हो, गुणों में परिवर्तन ला सकते हो, डिजायर क्वालिटीज जमा कर सकते हो, उसको कहते हैं संस्कार। जैसे आप लोग आयुर्वेदाचार्य ज्यादा हो, दही की प्रकृति क्या है, दही क्या करेगा, क्या बढ़ाएगा, बोलिए? अभिसंधि है, वो तो उसकी विशेष क्वालिटी है, लेकिन 3 दोष में कौन सा बढ़ाएगा? कफ, बराबर। तो दही कफ करता है, लेकिन इसी दही को आप मंथन संस्कार कर दे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 30 मिनट 60 राउंड पर मिनट आप करेंगे, वो पूरा उसका साइंस है, तो वो तक्र बन जाएगी, ताक मज्जी की, और वो क्या करेगी? त्रिदोष सामक है। भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। जो दही कफ करता है, नक्तम दधी न भोजे, जो दही आपको शाम को नहीं खा सकते कभी भी। हमारे गुजराती में कहावत है, मूड़ो मोगरी ने दही सांझ पची कोई दी नहीं। मूली मोगरी एक है सब्जी, और दही शाम के बाद कभी नहीं। तो नक्तम दधी न भोजे हमारे शास्त्रों ने तो बोला है, लेकिन शाम को हम छाछ पी सकते हैं, क्योंकि वो संस्कार बदल गया, वो त्रिदोष सामक हो गई। एक दही जो कफ करता है, उसका संस्कार करने से वो त्रिदोष सामक उसकी प्रॉपर्टी बन गई। उसको संयोग विभाग, जो डॉक्टर साहब ने बोला ना, संयोग विभाग, एक अदरक के इतना टुकड़े को आप ऐसे छिलका करके
आप चाय में डालिए, इतनी चाय पत्ती, इतना दूध, सब कंट्रोल में आप एनवायरनमेंट में आप करिए। फिर एक अदरक इतना ही टुकड़ा उसको कूट के उस चाय में डालिए, फिर एक को काट के डालिए। सिर्फ काटने से, कूटने से, छिलका करने से चाय का टेस्ट बदल जाता है। आप किस तरह से उसके पीसीस करते हैं, उसमें संयोग विभाग, ये पूरा जो आयुर्वेद का द्रव्य गुण के टीचर मुझे माफ करे मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो, लेकिन ये है प्रॉपर्टी हमारी ये सोच है, हमारे पास इसका डाटा था, उसका एनालिसिस था। तो छाछ हो गई त्रिदोष सामक, लेकिन वो छाछ अगर ओवरनाइट रह गई या दिन में भी शाम होते होते 12 घंटा हो गया तो छाछ खट्टी हो गई। खट्टी हो गई तो पिएंगे तो पित्त करेगी वो छाछ, वही छाछ पित्त करने वाली हो गई और गला पकड़ लेगी। उसी खट्टी छाछ में आप बेसन डाल के कड़ी पत्ते का घी का छोका लगाओ तो गला खोल देगी। तो संस्कारो ही गुणांतरा दानम उच्यते। भिंडी की सब्जी को किसका छोका लगेगा? महिलाएं बता सकती है। हम लोग मौन हो जाते हैं, लगता है कि कोई ये तो साग भाजी वाला बेचने वाला आ गया। भिंडी को मेथी का ही तड़का लगता है, या तो फिर उसको हिंग से गरम करके सीधा नीचे उतार के उस पर दही या छाछ डाल दो। अब आप बता पाओगे पोटैटो को किसका तड़का लगता है? जीरा का तड़का लगता है, उसमें मेथी नहीं लगती, राई नहीं लगती। गुआर फली को क्या कहते हैं कन्नड़ में? गुआर बोलते हैं, गुआर फली, तो उसको अजवाइन का ही तड़का लगता है। एक एक का एंटीडोट है। अगर गुआर ऐसे ही पका लिया आपने तो वायु करेगा, तो पहले से उसको एंटीडोट से ऐसा करो जिससे वो घर बदहजमी करेगा ही नहीं। भिंडी को इस तरह से पकाओ। तो कोई भी चीज को जो तड़का लगाना है तो उसको कहते हैं संस्कार। सम्यक करोति थी संस्कार, अच्छी चीज करना, ठीक करना, उसको संस्कार। लेकिन जब आप चौका लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, तब आवाज क्या आता है? छम होता है ना, तो छम करोति थी छमकार, सम्यक करोति थी संस्कार, और छम करोति थी छमकार। वही है, लेकिन हमको पता नहीं है, हम डेली करते हैं। एक ही गेहूं के आटे में से रोटी बनती है, पूरी बनती है, पराठा बनता है, सुखड़ी बनती है, हलवा बनता है। कॉम्बिनेशन सिर्फ बदलता है पानी का और तेल का महीन करने का। एक ही चावल में से कितना बनता है? वही चावल आपका कर्ड राइस बनाओ तो उसका अलग गुण है। तो कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज करना है अपनी इच्छा के अनुसार, उसको कहते हैं संस्कार। बड़े बड़े उसके डेफिनेशन है, ज्यादा लंबा ना हो जाए, आप लोग एकदम समझदार लोग हो। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी में चेंज लाना, ये संस्कार का काम हमारे ऋषि मुनि करते थे, वो बड़े वैज्ञानिक थे। ये संस्कार यानी चोटी का मामला नहीं है, चोटी हो तो एक्स्ट्रा हो, नॉलेजेबल है ऐसा लगता है बाहर से। लैपटॉप बैग भी खाली है तो लगता है हाँ कोई बड़ा लैपटॉप लेके जाता है, अंदर लैपटॉप है कि नहीं पता नहीं चलता, लेकिन कुछ तो इंप्रेशन पड़ता है। तो चोटी से पता तो चलता है कि वो कुछ ब्राह्मण है, कोई जानता है। अब फिर जानते हैं कि नहीं जानते पता नहीं, फिर बात करेंगे तो पता चलेगा। तो ये जो है प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक इसके ऊपर काम करते थे, वो करके दिखाया है। आगे चलेंगे, हम भी कर सकते हैं। तो बीज भाग और बीज भागाव्य, गंगाधर ने एक एक की डेफिनेशन की है, चक्रपाणी ने डेफिनेशन की है। बीज किसको कहते हैं, बीज भाग किसको कहते हैं, बीज भागाव्य किसको कहते हैं। तो क्रोमोसोम क्या यही जानते थे? जीन्स के बारे में क्या जेनेटिक साइंटिस्ट ही बोल सकता है? महर्षि चरक बोलता है। हमने कहाँ देखा है, हमने कहाँ समझने की कोशिश की है, हम उसकी टिप्पणी में कहाँ गए हैं? नहीं गए। लेकिन ये तीनों जगह पे हमको काम करना पड़ेगा, तब आप उसमें जो संस्कार की विधि है यानी कि जेनेटिक चेंज है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, तो षडभाव और पंचकोश। देखो शरीर तो ये फिजिकल बॉडी की हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आत्मज भाव, सत्वज भाव, सात्मज भाव, रसज भाव, माता पिता तो है तो अन्नमय कोश देंगे, वो तो आपको फिजिकल स्ट्रक्चर देंगे। लेकिन कैसा बनेगा? गुस्सा वाला आदमी बनेगा, प्यार करने वाला बनेगा, ब्रिलियंट बनेगा, शांत बनेगा, क्रोधी बनेगा। वो माता पिता से इतना नहीं आता, माता पिता से भी आएगा लेकिन उसको प्रोसेस करनी पड़ेगी। 11-12 साल की महिला लड़की जो अभी महिला बनने के लिए अपने गुण बॉडी में चेंज ला रही है यानी कि मैनर की स्टेज में है, तब जो वो खाती है, जो पीती है, उनके लिए जो प्रोटोकॉल है, गौरी व्रत
या हमारे यहाँ मोड़ा व्रत कहते हैं, वो जो व्रत करती है, वो जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, हाइजीन शब्द भी शॉर्ट है लेकिन मासिक स्राव के समय ऋतुमती होती है, तब वो क्या खाती है, क्या पीती है, उनकी इम्पैक्ट 7वें भाव में पड़ती है जब वो बच्चा पैदा करने लगे जाती है। तब ये 20 साल पहले की इम्पैक्ट बच्चे में आती है। हमको नहीं मालूम कि ऋतुमती होना यानी क्या है और उसका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। इतने मूर्ख थे। क्या लक्ष्मी महिला नहीं थी, सरस्वती महिला नहीं थी, रानी लक्ष्मीबाई महिला नहीं थी, हमारी इतनी देवियां महिला नहीं थी? क्या उसको मैसेज आता नहीं होगा? क्या वो कुछ नहीं जानते होंगे? उन्होंने जो दिया है क्या महानता चीज, हम गवा बैठे, हमें पता ही नहीं है। तो ये 7वें भाव इतना अफेक्ट करता है। संभोग के समय पति का मन, पत्नी का मन, उसके बाद फिर पत्नी का मन, उनके सास का मन इंपैक्ट कैसे करता है, जिसको हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स, चर्चा करेंगे आगे। तो ये सब मिलके बच्चा बनता है। एक जो प्रकृति बनती है, फिजिकल प्रकृति, वो तो आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन मानस प्रकृति की चर्चा के समय चैप्टर हमने ऐसे पन्ना उखाड़ दिया। और ये आयुर्वेद ने जो बताया कि आपके कौन सी कोष बनेगा। जो फिजिकल बॉडी तो दिखता है, लेकिन जो मनोमय कोष कहाँ दिखता है, उसका सरकमफरेंस कहां तक है। जो सोशल जोन, पर्सनल जोन आजकल ओरा साइंस के वजह से थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष, ये सब हमको करना है, उसमें काम करना है। ये पहले समझना पड़ेगा कि यह बॉडी नहीं है। फिटनेस इज द हार्डवेयर, बंच ऑफ 6 सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर में हमको काम करना है। नेक्स्ट, तो फिर बताया कि उत्तम संतति के लिए क्या करना है, क्या प्रोसीजर रहेगी। तो चरक सारे स्थान में फिर से बताया कि या तो आयाम, जनपद आयाम, आप कौन से एरिया में रहते हो, क्या खाते हो, आपकी परंपरा क्या है, कुल परंपरा क्या है। ऐसा नहीं कि कर्नाटक में अच्छा बच्चा पैदा होगा, गुजरात में नहीं होगा, बंगाल में नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा। उनके हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। उनका जलवायु बड़ा इम्पैक्ट करेगा, जो आपका जेनेटिक मेकअप में वो बड़े फैक्टर्स है। इसलिए बताया कि जो जो जनपद जहाँ जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से, और आपको क्या चाहिए, बेसिक क्वालिटी आप बदल सकते हो, फिजिकल क्वालिटी में इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा उसमें ये डिकोडिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कोई जैन है इधर? इसमें कोई जैन? हाँ, पीछे है। ये किसका चित्र है? हाँ बोलिए। माता त्रिशला देवी का। ये माता त्रिशला देवी को 14 स्वप्न आए थे जैन परंपरा में, और इवन हमारी टोटल सनातन परंपरा में इस जो आप देखते हैं ये 14 स्वप्न है, वो बड़े पवित्र है। कुंभ है, जल है, कमल है, हाथी है, इसको बहुत पवित्र माना गया है। माता त्रिशला देवी को ये चिन्ह मिले थे, लेकिन माता त्रिशला देवी ये चिन्ह मिले कि उसके पेट में एक महान तपस्वी पल रहा है, भगवान महावीर स्वामी पैदा होने वाले हैं। लेकिन कहानी तो ये है कि वो कंसीव ही नहीं हो रही थी। राजा और ये रानी त्रिशला देवी बहुत चिंतित थे, बहुत प्रयत्न कर रहे थे, नहीं हो रहे थे। लेकिन उस समय ये तक्षशिला का एरिया है, नालंदा तो इधर है, आगे हमारे पास है, तक्षशिला पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला विद्यापीठ का चीफ फिजिशियन कौन था? जीवक, हमारा आप सबका पितामह है। जीवक के पास ये केस गया, उन्होंने नाड़ी देखी, चर्चा की, कुल परंपरा को ढूंढा, बताया कि भाई कर सकते हैं, कोई चिंता मत करो। हजारों साल पहले कल्पसूत्र में लिख गया कि 24वां तीर्थंकर माता त्रिशला देवी के कुक्षी में आएगा, तो शास्त्र तो गलत नहीं हो सकता, तो वैध ऐसा चाहिए। फिर क्या किया? स्पर्म लिया गया राजा का, सुधोधन का, त्रिशला देवी का ओम लिया गया, मतलब आप समझते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए प्लान किया गया, बीज को लिया गया, दोनों का बीज। फिर टेस्ट ट्यूब बेबी में, जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी में आज करते हैं, वही काम हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फिर ओम और स्पर्म तो मिल गए, लेकिन उसमें नहीं जा पाए। फिर से जब इम्प्लांट किया गया तो नहीं रहा, तो फिर क्या करना पड़ा? ज़ैगोट प्रोसीजर तक एक ब्राह्मणी की कुक्ष में रखना पड़ा, सरोगेट मदर आज के लैंग्वेज में। उसके बाद फिर से वो एम्ब्रियो लिया गया, और एम्ब्रियो जब फीटस बनने जा रहा था तब फिर से इम्प्लांट त्रिशला देवी की कुक्षी में किया गया, और फिर वो फीटस बढ़ पाया, और भगवान महावीर स्वामी के स्वरूप में हमारे देश में एक महान तीर्थंकर, एक
पराक्रमी पुरुष पैदा हुआ। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेट मदर, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये सब हम करते थे। हमें मत सिखाओ आप ये कि आप कुछ नहीं जानते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी है, बताओ, हम लेंगे, हम उपयोग करेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो लेंगे। आप इंस्ट्रूमेंट को आप विज्ञान समझते हो, ज्ञान समझते हो, ये तो विज्ञान है। तो वो टेक्नोलॉजी एक समय थी, आज नहीं है तो फिर से लेंगे। बहुत से बुक्स नहीं है, बहुत से भवन टूट गए। अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक तो हमारी लाइब्रेरी जला दी थी, तो बहुत से मिसिंग है। नहीं तो ककेरू मकेरू, आपके ब्लड, रक्त की कृमि, मल के कृमि, कफ के कृमि, उसकी आकृति और कलर का वर्णन कर सकते हैं, साइज से बता सकते हैं। और हम उस पैथोलॉजी के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, आपका पैथोलॉजी जितना हमको चाहिए वो ले लेंगे, उसमें कोई गलत नहीं है। सुबह भी बताया था, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल द साइड्स। दुनिया के हर बाजुओं से सुंदर विचार हमको प्राप्त हो, लेकिन फिर हम क्या करेंगे उसका? कृणवंतो विश्वम आर्यम, दुनिया की सभ्यता के बचाने के लिए इसका यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि अमेरिका कुछ गलत बोल रहा है तो अच्छा भी बोलता है तो हम रिसीव करेंगे। हम ऐसे दकियानुसी नहीं थे। तो ये पूरा काम हमारे यहाँ हुआ था, ये बताने के लिए मैंने ये रखा है। नेक्स्ट, और आप कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है प्री कंसेप्शनल प्रोग्राम। शास्त्र ने इसके लिए जो बताया, जब तक आपका शुद्धि नहीं होगी, वस्त्र में, आज सुबह भी वो चर्चा हुई, वस्त्र में दाग है तो वो उसके ऊपर कलर नहीं चल सकता, तो आपको शुद्धि आवश्यकता है। आज जो हमने खाया, रसाद रक्तम ततो मांस मांसन वेदो प्रजायते, 72 डेज के बाद शुक्र बनेगा। तो आज से ऐसा फूड लेना पड़ेगा जो उस शुक्राणु में कमी होगी तो भी दूर कर देंगे, ना नई कमी ना आए। तो एक रिस्ट्रिक्टेड या कंट्रोल्ड डाइट प्लान होगा। और वो उसके बाद, उसके पहले ये दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन, ये पूरा सेलुलर क्लिंजिंग की प्रोसीजर है। और ये श्लोक कहां दिया है मालूम है? ये पंचकर्म की शुद्धि शारीरिक स्थान में दी गई। कि क्यों महर्षि अग्निवेश ने शारीरिक स्थान में पढ़ाया आत्रेय आदि को? आत्रेय ने अग्निवेश आदि को ऐसा क्यों पढ़ाया? उसमें वमन करो, विरेचन करो, ये करो, और वो शारीरिक स्थान में, क्योंकि हमको उस समय वो जेनेटिक मेकअप चाहिए, हमको उसकी चर्चा करनी है। शारीर यानी बॉडी, बॉडी यानी ये, तो कैसा आदमी, कैसा बच्चा चाहिए, वो वहां चर्चा हुई है। तो वहां का पंचकर्म पूरा अलग है। जो कल्प सिद्धि में जो पंचकर्म है वो एक अलग है, ये पूरी अलग प्रक्रिया है। इसलिए तो मुझे पंचकर्म पढ़ाने का मौका मिला, तो मैं उसमें से कुछ ढूंढ पाया हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के अलावा कहाँ पंचकर्म है? तो पता चला कि ये तो एनाटॉमी में है। तो मैं एनाटॉमी के पास गया, तो कि भाई हम तो ये नहीं जानते। फिर मैंने सोचा ये तो उत्तम संतति वाले की जगह में होगा, तो स्त्री प्रसूति विभाग में गया, तो हम तो ये जानते हैं, हम तो शारीरिक स्थान पढ़ते ही नहीं। छोड़ो, तुम बनो ऑब्स्टेट्रिशियन, तुम बनो मिडवाइफ, बच्चा पैदा करो जिसमें चरक ने ना बोला है कि कोई नहीं जाना है उधर डिलीवरी के रूम में। वैदिक का मूड गर्भ है तभी वैदिक का रोल है। बाकी 4 परिकर नख दाई जो है, मिडवाइफ है या जो भी आप बोलिए परिचारिका है, उसका ही रोल है डिलीवरी में। नेचुरल प्रोसेस है, उसमें क्या ये बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खोल के बैठे हो, बच्चे हो कोई बात नहीं, 2nd स्टैंडर्ड में हो, करो। तो दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन, दीपन पाचन स्नेह स्वेद स्थान परिष्कृतान शोधे शोधन काले यथा सन्नम यथा बलम। इससे आपको परिष्कृत करना है, कैसा चाहिए आप परिष्कृत करो। शोधन काले यथा सन्नम यथा बलम, सर्वदेह प्रसुरतान सामान दोषान न निर्हरे लीनान धातुत्सुनोत्कृष्टान आश्रय से नाशाय तेसु दुर्निहित। आम को आप मत करो, कच्चे आम को अगर आपने कैसे भी रस निकालने की कोशिश की तो वो निकलेगा तो सही रस, लेकिन खट्टा मिलेगा, वो खुद नाश हो जाएगा। लेकिन आम को पकने दो, तो दीपन पाचन। फिर आप निकालो तो गुठली अलग होगी, उसके स्किन अलग होगी, अब मीठा रस मिलेगा। और गुठली के अंदर भी जो गुठली है, जो वो आपके जो ज्यादा आम खाने से जो डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो गुठली है वो डिसेंट्री को रोक सकती है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसीजर जिसको कहते हैं प्री कंसेप्शनल प्रोग्राम। अब ये बातें पब्लिक के सामने या ऐसा कैसे, तो कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है, आप लोग वही दो तो मुझे सुन लेंगे, मुझे बुलाया गया, लेकिन ऐसे कपल कैसे आपके पास बैठेगा, कितना बैठेगा? ऐसे
आपको प्रैक्टिस भी करनी जैसे मैं करता हूँ। नेक्स्ट, तो हमने उसका SOP बनाया कि यू हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स 1 2 3 4 5। पहले तो आयुर्जीनोमिक्स को समझना पड़ेगा, उसकी प्रकृति तासीर वो समझो। फिर जिसको हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, हमारे PSN भट्ट कर्नाटक के ही थे, बड़ा वो जानते थे। तो कौन से समय आपका गर्भाधान होना चाहिए, आपकी कुंडली क्या है, आपके स्टार्स कैसे हैं, आपका GPS क्या है। जब हमारा बर्थ हुआ तब हमारा GPS सेट हो जाता है, हम कहीं भी घूमे। आज राजश्री को मालूम है, उनके पास GPS है कि मैं कहाँ हूं, मैं यहां हूं, लेकिन स्क्रीन में उसको पता चलता है कि मैं कहाँ हूं। और या तो ज्योतिषी को मालूम है कि मैं कहाँ हूं। तो ये हमारा स्टार्स हमारे साथ घूमते हैं, तो उस स्टार को कैसे सेट करना, ये पूरा आयुर्ज्योतिष है। और ये 90 डेज का पूरा प्रोग्राम बना है। ये जनरल वे में हमने इसकी, ये बाकी अगर चरक के हिसाब से चलेंगे तो 300 दिन लगेगा। अगर उसमें जेनेटिक एनोमलीज है, प्रूव है कि थैलेसेमिया दोनों को है, तो हमको सब चरक का वही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं हम। लेकिन इन जनरल नॉर्मल वे में बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम ना रहे, ऐसे 90 डेज में। और हमने सिर्फ विरेचन लिया है, और महिला के लिए उत्तर बस्ती ऐड करना पड़ता है, क्योंकि उसको स्थान शुद्धि भी करनी पड़ती है। तो ये कुल मिला के 90 डेज में हम ये करते हैं। नेक्स्ट, क्यों करना है? और फिर उसमें प्री कंसेप्शन तो आपने एक अच्छी सी कंडीशन बना ली। अब आपका एपिजेनेटिक्स शुरू होता है कि आपकी जो डिजायर है, आपको क्या करना है, आपको कैसा बच्चा चाहिए। अब ये शुरू होता है जिसको कहते हैं आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर। नेक्स्ट, बेसिक उसके कंपोनेंट कितने हैं प्लीज। और मन में होता है कि ये करना है, ये करना है, तो वो आपको। और लेकिन जनरल महिला तो क्या सोचती है, फिर बच्चा आएगा तो उसका सॉक्स कैसे करेंगे, नहीं ये करेंगे नहीं, तो ये चलता है, ठीक है, अच्छा सोचो, लेकिन वैध नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, तो हमको तो जो शास्त्रों में बताया है उसके 4 हमने डिवाइड कर दिया प्लान, कि आहार का बड़ा रोल है, फूड का, विहार का बड़ा रोल है, गुड कंडक्ट का, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, और सबका मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाला हूँ। और सदवृत्त, जो कुल मिला के हमारी प्रिवेंटिव, और बच्चे को वैक्सीनेशन करना है, पहले से प्री वैक्सीनेटेड बच्चा पैदा करना है, उसको कोई डिजीज ही ना हो, तो ये रक्षा कर्म है। ये चारों शास्त्रों में है, चारों का प्रयोग करते हैं। 300 साढ़े 300 बच्चों का मैं डाटा आपको बताने वाला हूँ, आप जरा धैर्य से रखिए, चाहे तो बन रही होगी। नेक्स्ट, तो सगर्भा के स्पेसिफिक आहार होता है। आपका ये कैलोरी, न्यूट्रिशनल वैल्यू, या बादाम खाना, या फोलिक एसिड, ये दूसरे स्टैंडर्ड वाली बात है। ये तो होता अमेरिका वही सोचेगा, उसको नहीं मालूम कि जब हार्ट बनता है तब क्या खाना है, जब मन बनता है तब क्या खाना चाहिए। पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति षष्ठे बुद्धि। गर्भाशय में बच्चा पल रहा है, उसके अलग अलग समय में ऑर्गन बन रहे हैं, गर्भावक्रांति जिसको हम कहते हैं oogenesis, spermatogenesis के बाद ये पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस है। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस के हिसाब से खाना पड़ेगा, तो स्पेसिफिक डाइट। नेक्स्ट, मैं एक आध 2 एग्जांपल आपको दूंगा। तत्र प्रथमवासी गर्भकललम जायते, तो शीत मधुर, ऐसे गुण वाले और लिक्विड द्रव, ऐसा ही फूड का प्लान करना पड़ेगा। तो ब्रेकफास्ट में क्या लेना, लंच में क्या देना, क्योंकि उस समय फर्स्ट और सेकंड मंथ में नोजिया होता है, तो आपको नोजिया सिर्फ हैंडल करना है ऐसा नहीं, आपका उस बच्चे का जो अभी जो सेलुलर ग्रोथ हो रहा है वो लिक्विड स्वरूप का है, अभी उसमें कोई ठोस घनत्व नहीं आया है, तो उसको क्या क्या खिलाना, ये सब जगह से कलेक्ट करके ये पूरा उसको पूरा 1 मंथ का रेसिपी देते हैं कि आपको ये खाना है। नेक्स्ट, पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति, 5वें महीने में सेंस ऑर्गन्स सेट होते हैं। दूसरा तीसरे चौथे महीने में खाना तो देते हैं, अभी नहीं देता हूं मैं, आप अभी कोई चिंता मत करो। और पर्सनल कोई हो तो चाय पीते पीते बता देंगे चौथे महीने में क्या देना, या हमारी वेबसाइट देख लेना। तो 5वें महीने में, ये एग्जाम्पल है, इतना बड़ा कोई लेक्चर नहीं है। तो मन जब बनता है तब क्या खाना, सेंस ऑर्गन जब बन रहे हैं तो राइस, साथी चावल, सफेद चावल, दूध, खीर, उनकी आइटम कितनी बनेगी और क्या क्या खाना है जो मधुर है। और अब ठोस भी देना है, ऐसा नहीं पहला दूसरे में कुछ अलग था। तीसरे महीने में आंवला देना पड़ता है, मधु और घृत साथ में जब इम्यूनोग्लोबिन बनते हैं 3rd मंथ में तब ये देना पड़ता है, तो 4th मंथ में ये देना पड़ता है, 5th में ये। नेक्स्ट,
तो 7वें महीने देखो 6 महीने तक तो हाइट वेट 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन डबल होता है 7th मंथ में। जितना है फीटस का वजन उससे डबल। तो उस समय आपको आज के हिसाब से, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, लेकिन शास्त्रों ने बताया कि मुद्ग उड़द, तो उसका हलवा बना के, मोहनथाल बना के, मैसूर पाक आपका है वो खिला सकते हैं 7वें महीने में। तो कैसे आपके बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से आपको फूड लेना है, देना है, प्रिस्क्राइब करना है। तो उसका पूरा स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा। एतावत् विसिदं कार्यम रोगे रोगे प्रसंगे प्रसंगे यथाविधि। नेक्स्ट। तो और कुछ बताना पड़ता है कि ये मत करो भाई। सोडियम ग्लूकोनेट की सुबह डॉक्टर साहब ने चर्चा की, क्या करेगा अंदर ब्रेन में। अगर महिला उस समय पिज्जा खाती है या उस समय बर्गर खाती है या उस समय आपके घर में भी लाके कहते नहीं हम बाहर नहीं खाते, घर में लाके खाते हैं। और बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं ना कि आप चिंता मत करो, आपका बेटे को पढ़ने दो, फूड के लिए भी आपने आप बच्चे का केयर करो, उधर बैठी रहो, फूड आपके घर में हम पहुंचाएंगे। स्विगी, जोमेटो, ये बड़ी समस्या है। तो इसको समझाना पड़ेगा कि आपको क्या, दूध भी अच्छा है, फ्रूट भी अच्छा है, दोनों साथ में, लेकिन एक साथ नहीं खा सकते, ये विरुद्ध आहार हो जाएगा। तो कब फ्रूट्स खाना, कब दूध पीना, वो समझाना पड़ता है। वो अमेरिका नहीं समझा सकता, आपको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट। तो जो सुबह बताया नेक्स्ट करके कर लीजिए। ये जेनेटिक मॉडिफाइड या बीटी बायोटेक्नोलॉजी से बने हुई फूड तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अभी जो ग्रेप्स की चर्चा हुई, डॉक्टर साहब रविशंकर जी बता रहे थे, और ग्रेप्स तो इतनी खतरनाक चीज हो गई आज कि वो सबसे ज्यादा रिसीव करती है, क्योंकि वो बीटी है, वो जीएम फूड है। अभी सीडलेस जो है ना ग्रेप, तो सीडलेस आदमी को सीडलेस कर देती है, वो ज्यादा खाएंगे। सही बात है। ये मैं तो समझाने के लिए, ये मैं बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं, तो मैं देसी भाषा यूज करता हूं, क्योंकि अमेरिका को भी समझाना है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज, उस समय नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट। अब वो बॉडी के अंदर, गर्भिणी स्त्री के अंदर जो पल रहा है बच्चा, विश्व की 40 यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर काम हो रहा है कि फूड का एपिजेनेटिक्स में क्या रोल है। आपकी कॉलेज में होता होगा कि पता नहीं मुझे, लेकिन विश्व की 40 यूनिवर्सिटी में ये काम चल रहा है। बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट, बड़े ऑब्स्टेट्रिशियन उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, जेनेटिक साइंटिस्ट उसमें अपने इनपुट डाल रहे हैं, क्योंकि भारत का कोई नॉलेज है, इसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट। तो जिस तरह से फूड का हुआ, मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके बताने वाला हूं। विहार तो डेली रूटीन के ऐसा होना चाहिए, अलग रूटीन होगा। दिनचर्या हमारी अलग अलग होती है, ऋतुचर्या होती है, लेकिन जब ऋतुमती होती है, मेंसेस के समय अलग ऋतु अलग, प्रेगनेंसी के समय अलग, मेनोपॉज के समय अलग, पुरुष का भी ऐसा होता है। तो स्पेशल केयर जो है वो क्यों है, वो अभी थोड़ी इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट। तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ बाथ, कौन सा बाथ का कौन सा महीना लेना, वो हमने एक कलेक्ट किया है, कलेक्शन है, वो उसकी रेसिपी बनाई है। वो बाथ में कौन सा स्क्रबर यूज करना, चंदन कब चाहिए, अगरू का बाथ कब लेना, हर महीने का बाथ अलग है। क्लोथ्स और ऑर्नामेंट भी, जब 5वां महीना है तो उसका स्वामी चंद्र है। गर्भावस्था में हर महीने का ज्योतिष के हिसाब से एक ही एक प्लैनेट की इंपैक्ट है। तो हम पल्स के कुंडल, पल्स के कंगन, जब हृदय का प्रादुर्भाव होता है तब हम हीरा देते हैं, हीरे का गहना पहनना कहते हैं। तो हर महीने के ऑर्नामेंट्स बदल जाता है। तो सास हमारे पास आती है, हमारे डॉक्टर करिश्मा के बाद, कि ये क्या हर महीने आप नए नए गहने लेना, कभी मोतीन, कभी ये पन्ना और ये। तो कहते भाई आपके घर में भी तो हीरा आने वाला है, तो ये करना पड़ेगा, आपको नहीं मालूम। तो कपड़े भी, मैं तो साउथ की बात बहुत कहता हूं, लेकिन आते आते जब पता चलता है कि हम सब कुछ बदल रहे हैं। भारत की सबसे एक महिला जो महिला लगती है वो साउथ की महिला होती है। 5, और इवन पुरुष भी 5 मीटर लंबा टुकड़ा, बिना कटा हुआ, बिना सिला हुआ, अगर उसको धोती कहते हैं और उसको साड़ी कहते हैं। तो प्लेनेट की इंपैक्ट अलग अलग होती है। और कटा हुआ, जैसा कलर, कैसे कोई भी टेक्सटाइल कैसे भी पहनते हैं, तो बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट होती है, एक बड़ा विषय है। कभी बुलाएंगे सिर्फ तो मैं, आपको लगता है कि ये
टेक्सटाइल का मिनिस्टर है, क्या है, बता, ये है शास्त्र में। तो आपको कौन सा क्या पहनना चाहिए, सूती का वस्त्र कब पहनना, रेशम का कब पहनना, ऊन और सूती का कॉम्बिनेशन कब, कौन से महीने में पहनना, वो बड़ी विद्या है, वो बड़ी कॉस्मेटोलॉजी, एनवायरमेंट, प्लैनेट, उनकी बड़ी इंपैक्ट होती है उस गर्भ के ऊपर। नेक्स्ट, रेस्ट, स्लीप, फ्लावर्स, अलग अलग समय पर अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग महीने में। सफेद फ्लावर्स जो है सब 5वें महीने में, 6ठे महीने में गोल्डन फ्लावर्स। नेक्स्ट, तो क्यों फिटस इज द हार्डवेयर बंच ऑफ 6 सॉफ्टवेयर, ये जो पूरी प्रोसीजर आप कर रहे हो, उस प्रोसीजर से अलग अलग सॉफ्टवेयर में आप पावर पॉइंट में कैसे वर्ड फाइल दिखती है, लेकिन वर्ड में पावर पॉइंट खुलता नहीं। जब आपको ऑटो उसमें काम करना है, ऑटोकेट में, तो फिर आपका पावर पॉइंट नहीं चलेगा। तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर में आपको बुद्धि बढ़ानी है, आपके बच्चे की हाइट बढ़ानी है, आपके बच्चे का स्वभाव ठीक रखना है, क्रोधी करना है, काम ऐसा वासना को कंट्रोल करना है, क्या क्या करना है, उस तरह से उसका प्लान बनता है। तो ये अंदर के शरीर के ऊपर हम काम करते हैं जो दिखता नहीं। नेक्स्ट, तो अलग अलग जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल, कॉजुअल और सोल, सब सोल के ऊपर ज्यादा हम इम्पैक्ट नहीं कर सकते। जो है वो आता है, उसको अच्छा एनवायरमेंट देना, उसका बाकी को उसको वो परिपूर्ण करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो वो सोल महावीर स्वामी बन सकता है, वो बुद्ध बन सकता है, वो राम बन सकता है। तो ये करने के लिए बाकी जगह पे काम करना होगा। नेक्स्ट, तो विहार में योग आता है। ऐसा नहीं होता कि भाई योग अच्छा है, बाबा रामदेव की सीढ़ी लगा दी और घर में बैठ गई, ऐसा नहीं होता। कब सेतु बंधासन कब चाहिए, बद्ध पद्मासन कब करना है, तितली आसन कौन से महीने में, जब आपको लेबर की ओर जा रहे हो तब आपको तितली आसन चाहिए, फिर क्या बोलते हैं चक्की आसन। तो क्योंकि आपका जो पेल्विक है उसको मसल्स को रिलैक्स करना है, और फर्स्ट और सेकंड मंथ में आसन ही नहीं करना है, पद्मासन करके बैठना है। शीतली प्राणायाम कब चाहिए, तो उनका एक शास्त्र है कि प्रेगनेंसी के समय कौन सा आसन। ये जो पूनम है ना, ये बीएमएस तो है, मेरी एक चीज को मैं कुछ चोटी नहीं करने देता। पूनम बीएमएस है और योग की एक्सपर्ट है, उसको योग करने के लिए बुलाते हम कि भाई किसी को सिखाना है तो वही चाहिए जो दोनों विद्या को, आयुर्वेद को जानना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चर्चा चलेगी। आयुर्वेद इज सुप्रीम साइंस, उसके बिना कुछ नहीं चलेगा। बाकी आप 21 जून को जो करना हो करो, रिकॉर्ड तोड़ो, अरे जो करना है करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम में दे दो, मजा ही मजा है, अवार्ड मिलेगा। लेकिन आपका बच्चा इस योग से ठीक होने वाला है, ऐसा चाहिए, तो उसमें आयुर्वेद चाहिए, उसमें योग को भी कैसे लगाना वो हमारा ज्ञान है। नेक्स्ट, तो ये अलग अलग हमारे ये पूरी वेदगर्भ विहार है जहां हम महिलाएं आती है, बहुत एंजॉय करती है। आप उसके वीडियोस देखिए, आप उसके बच्चे का टेस्टिमोनियल देखिए, बहुत आनंद करवाते हैं हम, पूरी विधि विधान से करते हैं, पूरे दिल से काम करते हैं। वो आपके यहाँ भी कर सकते हो। नेक्स्ट, रक्षा कर्म के बारे में हम सब भूल गए। श्रीमतोनयन संस्कार के बारे में शब्द तो मालूम है, लेकिन उच्चारण भी श्रीमंत श्रीमंत बोलते हैं। एक्चुअली श्रीमतोनयन अयोध्याचार्य तो जानता है, लेकिन उसमें आपके यहाँ क्या होता है मुझे नहीं मालूम। हमारी जो परंपरा है वो बताता हूँ गुजरात की, शायद उसमें मिलती जुलती आपके यहाँ होगी। 4 चौराहे की धूल, डस्ट, एक रास्ता दूसरा जो क्रॉसिंग रोड क्रॉस हो रहा है, वहां रोड क्रॉस यानी वो डामर रोड नहीं, फिर भी जहां से मैक्सिमम पॉल्यूटेड डस्ट आपको मिले वो लाना है। जिसमें जंग लग गया है, रस्ट लग गया है, ऐसा लोहे का टुकड़ा, कटा हुआ लोहे का टुकड़ा। फिर हनुमान जी के मंदिर में जो शनिवार को मंगलवार को हम तेल चढ़ाते हैं, उसमें जो चिपचिपा पदार्थ बनता है वो हनुमान जी की मणि, मस्टर्ड और ब्लैक सीसम, उड़द, ब्लैक ग्राम, इनको लाल या काले कपड़े में ननंद मतलब क्या भाई की बहन मतलब भाभी को वो हाथ में रक्षा बांधती है 5वें महीने में। गुलूर के लकड़ी से सिंदूर रखा जाता है, वीणा सुनाई जाती है। वो पूरी विधि आप जब देखेंगे तो इतना आनंद आता है। वो क्यों करते हैं? वो हाईली पॉल्यूटेड डस्ट, फिर कटा हुआ लोहे का टुकड़ा, उसकी एक एरोमा बनती है। और आप टीटी कब लगाते हैं प्रेगनेंसी में?
वही तो टिटेनस टॉक्साइड से बचाने के लिए बच्चे को और गर्भिणी को डिलीवरी के समय भी कुछ इंजरी हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए करना पड़ता है। तो पंचमासी में वही है, सिर्फ टिटेनस नहीं, बहुत सी ऐसी वैक्सीन। आप गर्भिणी को ऐसा ही क्रेनियल फोटोग्राफी से फोटो निकालो और फिर पंचमासी बांध के 1 घंटे के बाद फिर देखिए कितनी ओरा बदल जाती है। ये बड़ा साइंस है, उसके आसपास बहुत से बैक्टीरिया जा नहीं सकते, कुछ वायरस उसके आसपास घूम नहीं सकते। ये है रक्षा करना, और रक्षा मंत्र है, गर्भ रक्षा मंत्र वगैरह, उस मंत्र की भी इम्पैक्ट है जो आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, ये सीमंतोन्नयन संस्कार है, पति आता है, वो उसमें पति का रोल है, वीणा वादन होता है। नेक्स्ट, और फिर पूरे फैमिली के लिए महर्षि चरक ने एक सूत्र दिया है, सौमनस्य जननम। महिला को तो बहुत सी टिप्स देनी पड़ती है, लेकिन ससुर को, सास को, ननंद को, पति को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि घर में देखो ऐसा वातावरण रखना, आने वाली बच्ची संतति है वो आपकी सबकी है, तो उसको परेशान मत करना गर्भिणी को। और एग्जाम्पल तो आप जानते होंगे कि कांच का एक पात्र है, घी या तेल से भरा हुआ है और 10 स्टेप्स वाली सीढ़ी उतरनी है, पात्र में से घी छलके नहीं, पात्र गिरे नहीं, उस तरह से गर्भिणी की 9 महीने की परिचर्या आपको करनी है फैमिली के लिए। ये चरक ने बताया, कितनी बड़ी बात कर दी है कि घर में कैसे ऑब्जेक्ट होंगे, क्या बजेगा, क्या खाना बनेगा, कैसे बात करेंगे, बाकी फैमिली मेंबर कैसे बिहेव करेंगे। आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है, आपकी भी जिम्मेदारी है। वो कौन कहता है? महर्षि चरक कहता है। नेक्स्ट, तो गुड कंडक्ट में हमने थोड़े बहुत, बाकी तो शास्त्रों में आपके परंपरा में जो होंगे वो सही है, लेकिन सदैव प्रसन्न रहना, इतिहास और धर्म का अध्ययन करना, तो हम उसके अंदर बहुत सी बीज डाल रहे हैं। और जैसे रामायण हम कहते हैं, लेकिन रामायण का युद्धकांड नहीं पढ़ने देते, बाल कांड, सुंदर कांड पढ़ने को देते हैं गर्भिणी को, किष्किंधा कांड जिसमें भाई भाई बात लड़ता है, फिर उसकी पत्नी से शादी कर लेता है। कुछ होगा उस समय के ऐतिहासिक तथ्य होंगे, लेकिन उस बच्चे के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं डालनी है। तो रामायण अच्छी बात है तो रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, और शकुनी का चैप्टर दूसरी तीसरी बार फिर से छप गया तो फिर से पढ़ना, तो शकुनी आएगा। एक शकुनी ने 5000 साल तक जीने नहीं दिया है, अभी भी परेशान है। आज भी पार्लियामेंट में किसी महिला का वस्त्रहरण नहीं होता है, वो दादा के सामने, भीष्म पितामह के सामने, गुरुजी के सामने उनके जेठ ने उसकी साड़ी खींची थी। ये कितनी पतन की पराकाष्ठा थी। क्या महाभारत अच्छा, ये मेरे विचार है, आप जरा गड़बड़ा मत जाना, चाय बाय पिलाना, लेकिन ये हमको ध्यान रखना है, महाभारत हमारे लिए क्या चीज है। इस भारत की जो सनातन व्यवस्था है उसमें लाखों साल का इतिहास है, हजारों साल की बात नहीं है, युग की कल्पना है, उस युग अनुकूल बनाना है बस। संघ का स्वयंसेवक, संघ का कार्यकर्ता, उसको नित्य नूतन, चीर सनातन और युगानुकूल परिवर्तन, लैंग्वेज बदलेगी, प्रक्रिया बदलेगी, एसओपी थोड़ी आगे पीछे करेंगे, लेकिन मूल चिंतन से नहीं हट सकते हम। नेक्स्ट, तो एक अच्छा पढ़ने से क्या इम्पैक्ट होता है, ये ईजी से हमने देखा। ये रामायण सुंदरकांड पढ़ने के बाद जो महिला का इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम किया गया, तो ये डॉक्टर अर्पण का इसमें बड़ा काम है। तो मन के ऊपर पढ़ने से क्या इम्पैक्ट होती है, तो आप थीटा स्टेट में जाते हो, आप स्ट्रेस फ्री बन जाते हो। चाहे कितनी स्ट्रेस फ्री कैसे बनना, उस समय बनना पड़ता है, बाकी तो हर घर में समस्या होती है। सीता माता को समस्या नहीं थी, कैकेयी को नहीं थी, दशरथ को नहीं थी, इतना बड़ा साम्राज्य। तो आपको स्ट्रेस फ्री उस समय करना है। आप प्रेग्नेंट हो, आपकी पत्नी, आपकी बहन या आपकी बहू प्रेग्नेंट है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आने वाली संतति में इंपैक्ट नहीं होने देनी है, तो ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो ऐसा हमने एक अच्छा सा इको विलेज बनाया है, पूरा उसका नाम ही है वेद गर्भ विहार। वेदों ने जो सोचा है, वेदों ने जो बताया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, वो काम हम आज भी कर सकते हैं। तो ऐसा न स्टील है, न प्लास्टिक है, न सीमेंट है, एकदम मॉडल हाउस, गाय के गोबर से बना हुआ यज्ञशाला, ये पूरा एनवायरमेंटल अच्छा सा ऐसा कैंपस है जहां हम ये सब विधि करवाते हैं। नेक्स्ट, तो और गाय का क्या महत्व है, ओरा में क्या चेंज करती है, वो यज्ञ क्यों करते हैं। गर्भाधान संस्कार है तो भी यज्ञ करना, उसकी वेदिका अलग है, उसके संहिता अलग है, उसके मंत्र अलग है। पुंसवन संस्कार है तो उसमें नस्य तो ऑफकोर्स है, लेकिन उससे पुंसवन संस्कार का वेदिका अलग है,
संविदा अलग है, मंत्र अलग है, सीमतोलन संस्कार में अलग है, लेकिन सब में यज्ञ में घी है, गाय है। तो क्या चेंज करती है गाय का घी से, क्या चेंज होता है वो बताने के लिए, उसकी क्या इम्पैक्ट होती है वो समझाने के लिए आपके सामने मैंने ये विषय रखा है, जो हम करते हैं आपको भी करना चाहिए। नेक्स्ट, और हर महीने के क्राफ्ट या उसको दोपहर को हम बुलाते हैं कि भाई पहला ट्राइमेस्टर है, तो जितना वो प्रकृति के साथ रहेगी, जल की क्रीड़ा करेगी या मिट्टी के कुछ ऐसे खिलौने बनाएगी, तो बच्चे की जो वो इनर क्वालिटी है जो पहले 3 महीने में जो नेचर स्मार्ट बनता है बच्चा, तो वो पहले 3 महीने में करते हैं। नेक्स्ट, फिर पेपर वर्क, मतलब अलग अलग समय का अलग अलग, हमने तीनों ट्राइमेस्टर का अलग एक डिजाइन बनाया है, कोर्स बनाया है, उसके एक्सपर्ट बनाए, उसकी भी ट्रेनिंग करते हैं। नेक्स्ट, और जो नाद संस्कार की बड़ी इंपैक्ट है, ये जो है ओदन सूक्त, गर्भद्रोण सूक्त, गर्भ रक्षा मंत्र, वेदों में सब दिया है। 5वें महीने में चंद्र सूक्त पढ़ना पड़ता है, तो हमने उसकी सीडी बनाई है। सबको तो नहीं मालूम, उच्चारण तो परफेक्ट चाहिए। ये वैदिक मंत्र है, वैदिक सूक्त है, तो उसको BMS डॉक्टर कंपलसरी, आयुर्वेदाचार्य है, संगीत जानता है, उसकी टेस्ट ली जाती है। और अगर राग भैरवी सुनानी है तो 2 बजे हम उसका कंपोज करवाते हैं रात को। भाई उस देश काल स्थिति संजोग सबको देख के एतावत विसर्जन कार्यम रोगे रोगे काले काले स्थाने स्थाने यथाविधि। तो ये बड़ी पक्का से इसका म्यूजिक का सेटिंग किया है कि कौन से महीने कौन सा मंत्र पढ़ना, उसकी क्या इम्पैक्ट है, सुशील वाद्य से क्या बॉडी में चेंज आता है, मन में आता है, उसकी भी रिसर्च की, ये उसमें आप टीम में भी आ सकते हो। नेक्स्ट, तो ये नाद संस्कार। फिर ये मंत्रोच्चार जब होता है, सितार वादन होता है। 5वें महीने क्यों सितार सुनना, तो अलग अलग ताल वाद्य कब सुनना, तो उनके एक्सपर्ट आते हैं, वो उस महीने में उसको ताल वाद्य तबला सुनाते हैं। नेक्स्ट, तो नाद संस्कार की क्या इम्पैक्ट है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड डेवलप होता है, जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव होते हैं। 50,000 टाइम्स आपके न्यूरॉन्स ऐसे इम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट, तो अगर कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं है, ये सब महिला कोई बहुत ज्यादा पढ़ी, लेकिन संस्कृत स्तोत्र बोलती है, मंत्र बोलती है, तो उसकी बच्चे का फोरेटिक्स बहुत बड़ा आता है। मैं आपको ऑब्जर्वेशनल स्टडी में बताऊंगा कि उनके बच्चे मल्टी लैंग्वेज सीख लेता है। जो अगर माँ ने संस्कृत बोला है गर्भावस्था में, संस्कृत स्तोत्र बोले हैं, राम रक्षा स्तोत्र बोला है, भगवत गीता का 15वां अध्याय किया है, तो बच्चे में क्या इम्पैक्ट आती है। नेक्स्ट, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का मैंने बताया, सिर्फ ओम ध्वनि से। हमको मालूम नहीं, हमको लगता है ये ठीक है, अमेरिका को मालूम नहीं, इसलिए हमको मालूम नहीं, प्रॉब्लम ये है। नेक्स्ट, तो उस समय ब्रेन में क्या इंपैक्ट होती है जब आप म्यूजिक सुनते हैं, या अच्छा म्यूजिक सुनते हैं या बुरा म्यूजिक सुनाया जाता है, तो ब्रेन के अंदर क्या चेंज होता है, वो आपको उस न्यूरॉन्स में क्या इंपल्सन में बदल आता है, वो आप देख सकते हैं। अब उस साधन का उपयोग करो। iPhone 14 मैक्स प्रो मेरे पास है, लेटेस्ट वर्जन। ये साधन में क्या है, वापरो, इससे थोड़ा कोई ज्ञान मिलता है। ये तो साधन है, तो साधन से आप चेक करो, EEG करवाओ, सोनोग्राफी करवाओ, 4D कलर डॉपलर का भी उपयोग बताऊंगा। तो साधन से प्रभावित मत हो जाओ, साधन को यूज करो, उसके ऊपर सवार हो जाओ, घोड़े के ऊपर सवार हो जाओ। ये तो टेक्नोलॉजी है, उसका बाप बन जाओ। तो आप अपने विद्या को, जो विज्ञान, जो ब्रांच, जो स्ट्रीम साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करती या मैनेजमेंट का उपयोग नहीं करती, वो नीचे अब चली जाती है। आयुर्वेद की आज ऐसी हालत हो गई है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, मैनेजमेंट का उपयोग करो, और फिर आयुर्वेद की अपनी विद्या, वो ज्ञान है, ज्ञान का आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। नेक्स्ट, तो एक महिला है, वो HR है, रिलायंस कंपनी की, मैथिली, तमिलनाडु की, जिसको हमने नॉनवेज नहीं खाने दिया, और बहुत बड़ा उसका प्रयोग है, कभी यूट्यूब में आप देखेंगे। लेकिन उस मैथिली को 12 मिनट तक रॉक म्यूजिक सुनाया गया, और हमारी सोनोग्राफी की टीम के उसके टेबल के ऊपर ही उसको दिखाया गया। 12 मिनट के अंदर वो बच्चा रोने लगा, उसकी बेटी यशोदा हुई, और फिर उसको हेडफोन अलग करके थोड़ा फ्रेश होके गाय का दूध पिलाया, फिर उसको सुलाया फिर से, और फिर नेक्स्ट जब हमने रामायण की चौपाई सुनाई मुरारी बापू की, तो बच्ची हंसने लगी, मजा आया। तो ये भारत है, ये संस्कार है, अंदर चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट,
तो अभिमन्यु की कहानी वो आपको शायद समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट। तो थोड़े बहुत मैं ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूँ, समय तो ज़्यादा गया है। नेक्स्ट। देखो, ये हमने कहीं किसी को फॉलिक एसिड, आयरन सप्लीमेंट, ये प्रोटीन, ये बादाम ऐसा कुछ नया कुछ नहीं दिया है। जो चरक संहिता ने लिखा है इस तरह से पूरा फूड प्रोटोकॉल था। तो महिला का कितना वजन बढ़ना चाहिए? 10 किलो जनरली होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो हमारी जो ये 150 महिला है उनका कितना परसेंटेज वेट गेन हुआ है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन उस महिला का, क्योंकि हमने आयरन नहीं दिया, फॉलिक एसिड नहीं दी, हमने जो डाइट दिया है वही डाइट से उसका हीमोग्लोबिन हमने कितना स्ट्रॉन्ग किया है वो आप जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट। सीजरियन, फॉरसेप, आज का रेशियो आप जानते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन है उसमें, तो फिर आप भी फॉरसेप का कहेंगे। जो मूड गर्भ, जहाँ वैध का रोल है, या ऐसी बड़ी स्थिति होती है, या पूरा आपका सोनी फला की अलग है, तो ऐसे में तो करना पड़ता है। इन जनरल हमारा जो रेशियो है ये है। नेक्स्ट। तो वेट गेन, बच्चे का भी वेट देखना पड़ेगा, क्योंकि क्राइटेरिया लगा है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या कहता है, नॉर्मल उनका जो रेट है, उनका जो पैरामीटर्स है उसको हमने किया है कि 2.5 से 3.5 kg बच्चे का वजन होना चाहिए। ये हुआ। नेक्स्ट। तो लैक्टेशन, महिला को दूध नहीं आता, जिससे हमारी 6 महीना 12 महीना में हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी एक जन्म से होती है, तीसरे महीने में जो हमको इम्यूनोग्लोबिन बनता है, और फिर जन्म के बाद लैक्टेशन के थ्रू मिलता है दूसरी इम्यूनिटी, जो आज इम्यूनिटी हमारे में नहीं है। वो 6 महीने तक नहीं मिलता, दूध ही नहीं मिलता। लेकिन इस महिला को जैसे इस तरह से फूड प्रोटोकॉल किया गया तो पूरा लैक्टेशन अच्छा मिला। नेक्स्ट। तो ये आप बाकी देख लीजिए, सोशल स्माइल, नेक होल्डिंग, टीथिंग, पूरा बच्चे का 1 साल का डेटा आपके सामने है। नेक्स्ट। इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस, प्रश्नभंगे बीड़ालनम परिणाम च शिखोद्गमे दंतोद्भेदे च बालानाम किम रोग न अवसिद्धति। जब दांत आता है तब महर्षि कश्यप कहता है कि बहुत सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप रिकॉर्ड देखिए, इसमें टीचिंग टाइम चला गया है, हॉस्पिटल में नहीं ले जाना पड़ता बच्चों को। नहीं तो आमतौर पर महिलाएं कितनी दिक्कत होती है, कपल नए यंग लोग हर 2 महीने 2 दिन जब सीजन चेंज होती है, बच्चा सर्दी जुकाम बुखार और पेडियाट्रिशियन की बड़ी लंबी लाइन बच्चों की होती है। लेकिन ये बच्चे कभी भी हॉस्पिटल 2-4 जो गए, 6 बच्चे। नेक्स्ट। तो हमको क्या चाहिए? फिजिकल पैरामीटर, वेट गेन, फिर फिजियोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल और ओवरऑल हमको ग्लोबल सिटीजन बनाना है। एतद्देशस्य प्रसूतस्य सकाशादग्रे जन्मनाम स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन् पृथिव्या सर्वमानवा। वर्ल्ड का बेस्ट बच्चा विश्व को देने वाला है कौन है? तो भारत देने वाला है। आयुर्वेद के प्रभाव से, आयुर्वेद की मदद से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो ये हमारी है, क्योंकि बालो ही बलम राष्ट्र से, जनी शाखा में बाल से न्यावती काल से। हमारे कार्यवाजी कहते थे कि जिस शाखा में बाल आते वो शाखा बड़ी अच्छी होगी, वो देश के लिए अच्छा। तो भविष्य की जो संतति है उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए, उसमें आयुर्वेद का बड़ा रोल है। नेक्स्ट। तो माता चाहिए, जीजा माता। शिवाजी तो आज भी पैदा कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक हमने लोकायुर्वेद का एक प्रोजेक्ट बनाया है, कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से हम लोग जाते हैं लोगों के बीच में। ये बिल्कुल फ्री शेयरिंग करना चाहिए, ये हमारी विद्या है, ये हमारा ज्ञान है। लोगों को मालूम नहीं, एलोपैथी की चुंगाल में बच्चे जन्मने से पहले फंस जाते हैं। आप बचाओ, बड़ा पुण्य कार्य होगा। इसकी हम वैद्यों की ट्रेनिंग करते हैं, एक्सपर्ट की ट्रेनिंग करते हैं। ये भी पूरा हमारा इंस्टीट्यूट है, वो सेक्शन 8 कंपनी है, बड़ी कंपनी बना के काम करते हैं। कोई नो प्रॉफिट कंपनी है, लेकिन वहाँ की 2-3 यूनिवर्सिटी हमसे एडवाइस लेती है कि क्या करना। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, जिसका मैं एडवाइजर हूँ, गुजरात में एक ही, विश्व में 4 ही यूनिवर्सिटी है चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, उसमें भारत में एक है, वो गांधीनगर में है, मोदी जी का वो है। लेकिन उसके क्या करना उन बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडी को, उसका डिज़ाइन बनाने का मौका हमको आपके सबकी दुआ से मिला है। तो ये विश्व का एक बड़ा काम हमको कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से, संघ के माध्यम से हम कर रहे हैं। शायद आपको भी अच्छा लगा होगा, आप जरूर करिए। नेक्स्ट। तो ये भारत पहले भी समर्थ था, आज भी समर्थ है, वो कहीं स्विच ऑफ नहीं हो गया है। आप जरा मेहनत करेंगे तो भारत फिर से समर्थ बन सकता है, यही मेरी प्रार्थना है। ये कुछ बात हम जो कर रहे हैं आपके सामने मैंने रखा है। तो ये हमारी वेबसाइट्स है, आप विजिट कर सकते हैं।
ट्रेनिंग के लिए 3 दिन ऑनलाइन ट्रेनिंग है, 5 दिन ऑफलाइन ट्रेनिंग है, फिजिशियन की कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग है। बड़ा अच्छा सा साइंटिफिक वे में सब पढ़ाते हैं। ये तो आपके सामने पब्लिक डोमेन में मुझे क्या देना है इस तरह से मैंने दिया है। बाकी बहुत डिटेल चर्चा आपसे जब आते हैं ट्रेनिंग में तब हम करते हैं। नेक्स्ट तो ये कभी देखिए। और हमारा 2-3 सेंटर्स चलते हैं। कुटुंब प्रबोधन का विद्या भारती ने एक बड़ा अपने हिसाब से समर्थ भारत प्रोजेक्ट लिया है। नेशनल रिसर्च सेंटर कच्छ में है विद्या भारती का, इसी विषय में। तो ठीक है, चलो तो आपका बहुत बहुत आभार। और परिपूर्णा फिर से आएगी, आपको कुछ बताएगी, आपको कुछ पूछना है तो मैं तो इधर ही हूँ। धन्यवाद। ಹರಿ ಓಂ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನರು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿರಿಮೆಯ ವಿಚಾರದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕುಟುಂಬೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ. ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜನಾಂಗ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆಯೋ ಅಂತಹ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಗರ್ಭಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸುಬ್ಬರಾಯ ನಂದೋಡಿ ಸರ್ ಕಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೆಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಹಿತೇಶ್ ಜಾನಿ ಸರ್ for such an informative session, for being so inspiring both in the morning and so energetic after lunch. Thank you very much. Now I request Subbaraya Nandodi sir along with some committee members to felicitate Dr. Hitesh Nandodi. Sorry, beg your pardon, Hitesh Jani sir. I'm so sorry. I would also like to call upon Dr. Trishal Rao on the stage to felicitate Jani sir.
After a long day of productive, informative and exciting events, we are finally ready to conclude. Shortly we are going to start our valedictory program, so kindly please be seated. Now we would like to begin our valedictory program for today. I would like to invite upon the stage Dr. M.B. Puranik Sir, Chairman of Sharda Group of Institutions, Mangaluru. Shri Purushottam Devasya Ji, Shri B.M. Guru Raj Ji, Shri Gajanan Pai Ji, Dr. Satish Rao Sir, and Dr. Surya Narayan Sharma.
Now I would like to call upon Chandana and Madhura to present a GOU Gita. शरीरिणी नमोस्तु जगतां वन्दे ब्रह्म विद्या प्रकाशिनी नमो नमो भारताम्बे हिमालया किरीटिनी गंगाद्या सरिता सर्व स्तन्यं ते विश्वपावनी नमो 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 भारताम्बे नमो नमो भारताम्बे तद्रतदीं तदीं 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 तकतद्रतदीं तदीं 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 तद्रतदीं तदीं 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 तकतद्रतदीं तदीं 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 हिमालया से कन्यायां तपोवनों से नदियों तक गंगा यमुना सुंदर नदियाँ पहली माता हिंदुस्तान एक है भारत एक है जनता वंदे भारत मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गपद निदा सनिद पद गपद निदा सनिद निसा विश्व महाकवि रविंद्रनाथ जन्म हुआ है हिंदुस्तान पूज्य महागुरु व्यास महोदय गुरु जी भारत देश की देश हमारा पुण्य भरा त्याग सेवा निरतेना वंदे मातरम वंदे मातरम ससनी दनीनी निनिदा मदादा ददमा गमामा समगाम धनिसा समगाम धनिसा ससनी दनीनी निनिदा मदादा ददमा गमामा समगाम धनिसा समगाम धनिसा निज सौख्यदपि मुख्यं मेने भारत जन सौख्यं निज मोक्षादपि मुख्यं मेने भारत जननी मोक्षं निरस्त निज सौभाग्यं नीरं लोकहिते निरतं वन्दे मातरं वन्दे मातरं नमस्करोति जनता जन्म सार्वगते समये वन्दे 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 जयतु भारत माता नमो 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 भारताम्बे नमो नमो
Thank you for that beautiful song. Now over to Srishti Devi. ನಿಸ್ಪೃಹ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ವಿದ್ಯಾದಾಹಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ವಿ. ಪುರಾಣಿಕ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ವಿ. ಪುರಾಣಿಕ್ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು BSc, BA, MSc, MD ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಾಯುದಳ NCCಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ UNO ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ, 2010ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2023 ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ತಳಪಾಡಿ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ಧಾಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ SKDB ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹೊಸದಿಗಂತ ದೈನಿಕ ಒಡೆತನದ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಉಡುಪಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಚಿಲುಮೆಯ ಕಾಳಜಿಯಂತೆ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. I would take this opportunity to introduce the other esteemed guests on our dais today. Shri B.M. Gururaj ji, Kutumba Prabodhan, Mangaluru Vibhaga Sayojakaru. Shri Gajanan Pai ji, Keshava Smriti Samvardhan Secretary avaru. Sir is a retired officer from KIOCL. Dr. Satish Rao ji, Professor and HOD of Psychiatry, K.S. Hegde Medical College. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಮಾನ್ಯ ಸಂಘಚಾಲಕ. And Purushottam Devasyaji, Arogya Bharati, Mangaluru Vibhaga Sayojakaru. Dr. Suryanarayan Sharma, Jignasa State Co-Convener. ಇದೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ವಿ. ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಲೋಬೋ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡೂರು ಇವರು
ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇವಸ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಪೆರವಾಜಿ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ BM ಗುರುರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಕೇಶವಾನಂದ್ ಒಡೆಯರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾ ಇವರಿಗೆ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓವರ್ ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣ. Now I would like to request Dr. Satish Rao sir to address the gathering. Respected dignitaries on the dais, respected dignitaries in the audience, my dear young friends, my humble pranams to you all. First of all, I am very grateful to you all, especially for inviting me for this valedictory function of the seminar on Panchagavya treatment. I am grateful to GOU SEVA GATHIVIDH KARNATAKA and co-organized by Jignasa Karnataka, Arogya Bharati, Gram Vikasa Rashtra, GOU SEVA Samsthan and Kutumba Prabodhan. Actually, being part of Arogya Bharati, I thought I'll attend the whole day program, but today was our OP day, so I could not take leave. My colleagues were on leave, otherwise I was planning to come and attend the whole day. Sorry for that. Being part of Arogya Bharati, I am very much interested
in the activities of Arogya Bharati, which includes all those who are interested in the health of this great nation, whether it is modern medicine, Ayurveda, homeopathy, Siddha, Unani, Yoga, it's all inclusive. I have been the president of Arogya Bharati Mangaluru Dakshina till recently. Though I found it very difficult to manage, and I was requesting them to relieve me of the duties, because I don't believe in being at the helm of the affairs and doing nothing. So I was feeling guilty. So finally they agreed and relieved me. The activities of Arogya Bharati are very important because, as you all know, health is very important. Health is wealth. There's no doubt about it. We have come a long way in managing health affairs, and people may be generally of better health now, but there are new problems, new challenges in the field of health. So definitely there's a great role for everybody interested in the field of health to play a role to promote good health. All of you know that we have become number one in population in the world with 142.87 crores. We are number one, and China has become number two with a population about 5 million less than ours. But this population is not something I think we should be proud of, because that brings in a lot of challenges, especially in the field of health. So it's everybody's duty that we take care of these aspects. Our cities may have better health facilities, but as our population, 69% of the Indian population still lives in villages or rural areas, there is still a lot of scope for delivering health activities. Our life expectancy has increased from 34.5 when we got independence in 1947 to 69.3 years now. We are living much longer, but at what cost? There are new health challenges. According to WHO, World Health Organization, there are two things very important now, that is mental health and lifestyle diseases. These are becoming more and more common all over the world, including our own Bharat. And prevention is better than cure. All of you agree with that. So, Arogya Bharati has got a big role to play in the prevention aspects also and in promoting good health. That way it is the duty of all of us assembled here to think seriously about delivering better health for the vast population of our country. That's really required. Many people still, we see, even in cities we see, they're deprived of basic health facilities. Maybe financial also, but availability also is not uniform all over the country. Some states are better off, some cities are better off, but there are some that are still deprived of. So in that way, we have a big role to play in promoting good health, which includes yoga also. If you take preventive aspects, yoga has got a big role to play. So I think this seminar will go a long way in sensitizing you, not only in Panchagavya treatment. Just now we have heard of Garbha Samskar also. So all these things are very important, because health is always holistic.
It cannot be compartmentalized, and we can't deliver good health only in some aspects. We have to think of the whole person. So in that way, I think it was very appropriate that GOU SEVA GATHIVIDH of Karnataka has conducted this seminar. Already we are running behind schedule, so I don't want to talk for long. I once again congratulate the organizers for conducting such a good seminar, which was attended by so many people. That's a good sign that people are taking health very seriously. I see a lot of students here. It is your time now. We are already old, so there's limit for what we can do. The whole stage is in front of you young people. I think you should take it up very seriously and have a holistic approach. As Dr. Hitesh Jani mentioned, knowledge comes from different sources. Ano Bhadra Krtavo Yantu Vishwataha. Let noble thoughts come to us from every side. The same thing pertains to health field also. Let us learn from all fields without any bias. So I wish you all the best. I once again thank the organizers for giving me this opportunity. Bharat Mata Ki Jai. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to invite upon Dr. M.B. Puranik, sir, Chairman Sharda Group of Institutions, Mangaluru, to give his address to the gathering. Respected guests on the dais, and 50% of the participants already out, remaining 40% will go soon, because it's a formality that we keep the valedictory. For the organizers, I normally say, whenever doctors spoke about the heredity, environment and the delivery, next generation, wonderful talk, you should have ended. We should stop eating sweet when we relish it very well. And all the audience, I know most of them are the students. Only 1 or 2 minutes, 3 minutes I would like to spend in this. I'm a teacher, teaching the the biological sciences. I know what is genetics. Before becoming a teacher, or whatever I am now, I am a son of the soil. As doctor rightly said, the Gotra. What is the importance of Gotra? How does it decide the genetics while arranging the marriages? Marriages among the Sagotra is prohibited. We know the reason also. I taught genetics to the BSc students. I know what are the disadvantages of very close marriages, relatives. Everything said and done. Above everything, right from my childhood, for all activities of my home, my mother used to get the Panchagavya ready. Even if you go for a salon, for haircut and shave, before entering the home, taking bath, my dear mother used to give the cow dung, gomutra, and also the pavitra soil from the tulasi. We have to apply that one, then only we have to. For any good or bad occasions of the house, there used to be having a Panchagavya, Antarika and Bhashya Shuddhi. It is done through Panchagavya. I used to ask what this Panchagavya includes. Then my mother and elders used to say, curd, milk, ghee, gomutra and gomaya, which normally that smell many youngsters don't like. But our forefathers, they knew the importance of
this Panchagavya and the way they used to prepare the Kalasha and the Shuddhi. And I'm very glad in India, in ancient culture, the GOU is part and parcel of our life. I remember my old days, my village life. Very close to the kitchen, the cow shed was joined. The first thing my dear mother, who is not now with me, used to get up from her bed, used to go to the cow shed and give them fodder and water, then milk, then only she used to start her work. And not only for agriculture, not only for the food, for every part of our life, the GOU, the Pashu is part and parcel. Recently, because the innocent, whatever information is fed to them, they were giving the introduction. And my introduction is not that important because few know, the students need not. The thing is that I got a Goshala run by Vishwa Hindu Parishad. 400 and odd goats are there near university, Pajir by name. We have cow products, Gomutra, Arka, many things we do, but as much as not the our mutt is doing and other places, but Vishwa Hindu Parishad in Nagpur, we are preparing many products. I had a clinic here, a doctor, now he is not there, 10 years he used to practice. Among the Ayurvedic treatment, one GOU product he used to give. Very successful doctor. We used to do it. Now, whatever it may be, we have an Ayurvedic college, Sharda Oil College. My principal is here. He is very much interested. Many of my students, they have attended this seminar. I used to tell them it is very, very important to hear the experiences and the expert opinion and research work of senior doctors who come from all over India, especially Gujarat. I know what's the contribution Ayurveda Gujarat state has done. Even in Karnataka, we give a lot of importance nowadays to the Ayurveda. In Ayurveda also, Panchagavya treatment. So, I should have attended. More than me, my teachers, my professors and my students, they must attend it, gain information. More than the information, they have developed inquisitive mind, increase their interest in doing research. I always used to say, the drawback in Ayurveda, when you compare to the modern medicine, allopathic medicine or other type of medicine, we have wonderful drugs, medicine and treatment. Only thing is that this research work, as it is in Western countries, it's lagging behind. In Ayurveda, basically it is fifth Veda of our Indian tradition. My humble request, both my teachers and my students who are going to become the great doctors, that please develop interest. Don't follow only what is mentioned in Charaka Samhita or other epics books, but research is very, very important, and also attending, taking the guide, and wherever it is possible, don't confine to the BAMS, MD degree alone and do the practice where I should not say, the present BAMS doctors are doing 50% allopathic, 50% modern medicine, this is Ayurvedic, that shouldn't be there. Should the Ayurveda, they should practice. I once again congratulate for the organizers for arranging such kind of beautiful function seminar. Thank you very much. Thank you very much for your words, sir.
Now I would like to call upon Dr. Hrithik Kohli. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಂ ಗುರುರಾಜ್ ಜಿ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇವಸ್ಯ ಜಿ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾಜಿ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿತೇಶ್ ಜಾನಿಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಪೆರವಾಜಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಪಿ ರಮೇಶ್ ಜಿ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತದ್ವಿದ್ಯೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಬೇಕಲ್ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಡ್ಡು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪೆರವಾಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿತೇಶ್ ಜಾನಿಜಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕೋಡೂರುಜಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಪಿ ರಮೇಶ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತಿ, ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪುದು, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧನ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿದ ಕೇಶವ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಹ ಗೌಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ರಾಧಾ ಸುರಭಿ ಈ ಎರಡು ಪಂಚಗವ್ಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಂತಹ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್, ಅಡ್ವೈಸರಿ ಟೀಮ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಂತಹ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಧುರ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. Please be seated. गौ माता की जय।